हो सकती हैं. And with this, I would like to invite on stage all the participants who will be speaking with their presentations. First up in this league, I would like to invite the representative of Messrs. Zydex Industries to please join us. With continuous loud round of applause, ladies and gentlemen, let's welcome everyone. I also welcome the representative of Messrs. Avijit Agencies Private Limited. Inviting on stage representative of Messrs. Vishwa Samudra Private Limited. Representative of Messrs. Novacred India Private Limited. Representative of Messrs. VV Autotest Systems Private Limited. Representative of Messrs. Strata Geosystems India Private Limited. We also welcome on stage representative of Messrs. Roadstab Technologies Private Limited. And we also welcome the representative of Messrs. AVS to please join us on stage. Do we have one participant missing on stage? Do we have Strata Geosystems India Private Limited, a representative? Yeah. All right. So I humbly request our respected chairman for this technical session. Sir, you can please proceed now. I humbly request our respected chairman, sir, for this technical session. You may now please proceed. Okay. So, very good morning to all. And I extend my very warm welcome to my co-chair and all the presenters here on the dais. And friends, we are already halfway through this 2 days seminar on FDR and green technologies. Before I begin with, I would like to say a few things to my presenters and to the audience as well. This is going to be a very enlightening session, as I hope, because it is the session by the drivers of the technology. They are the manufacturers of the CCS or other products which are being used in the new technologies. So definitely, this session is going to be very enlightening, but at the same time, it's a very tightly packed session because there are 8 presenters and time allotted is just 1 hour. So to the each presenter, there will be only 5 minutes. So please restrict to this time schedule. And because of the less time, I would like to give few suggestions to my all presenters that they should come on to the directly onto their product without giving any introduction to their company or its legacy. And while their presentation,
they should focus mainly on three things. As we all know that some serious concerns were raised in yesterday's presentations, and they are very genuine concerns. So you should address those concerns in your presentation. Firstly, you should try to uh, give the introduction of your product, its specifications, how it works, where it works, and why we should use it. And then you should give a clear-cut cost-benefit analysis. If we use your product, then what is the cost implication? Because as yesterday, it was said that the CCS makes the FDR technology some 25 to 35% costlier. And it is a very genuine concern. It happens so. So if any product is used, then what will be its cost implications? And secondly, what are the implications on the strength, durability, and performance of the FDR technology if the product is used? We are unanimous on one thing, that FDR technology is definitely a good technology and it should be adopted across the board. There is no opposition to the technology, but the opposition is to whether the CCS should be used or not. This is the point of contention. So we should address this particular issue, that if we use CCS, then we must be benefited in terms of strength, in terms of durability, in terms of cost, and in terms of environmental protection. So with these three things keeping in mind, I think you will manage your presentation. So with this, I begin with the presentations. Firstly, I would like to invite the representative of Messrs. Novacrete India Private Limited. You may please proceed. Okay, you are there. So you may please proceed for your presentation and try to restrict to the time allotted to you, that is 5 minutes. Good morning, Chairman, sir. Good morning, Vice Chairman, sir. And good morning, all technocrats and the delegates of different companies and corporates here. I am CB Raman, representing Novacrete India Private Limited. Novacrete is also an additive, which is powder-based additive, which is manufactured in Germany, and it is reprocessed in India and packed in India, and we are distributing here. This company has almost 3-decade history of additive application globally, and it is working in 50 countries over the world. In India, it has come in 2020, I can say, and now it is also IRC accredited. While I brought this product in India, definitely had very good experience of the international application. But again, in the Indian context, how it is behaving for different kind of soil, different kind of FDR, work in the different region of the FDR work. So for that, I engaged the IITs, CRRI for making the evaluation of this particular product. So as sir told that the time is also a constraint, so I will directly come to the philosophy of the this product, how it behaves in the different kind of soils and in the FDR, as well as what is the findings of the different IT and CRRI, and why additive is essential. I would like to focus on those points only. As it is mentioned, it is a white and gray powder, and it do not work standalone. It always works with the cement, maybe OPC or maybe PPC cement. That is the prime product, and this is the additive, not a standalone
it doesn't work standalone. The merits of this Novocrit is that it neutralizes the pH values and provides the very high level of the water permeability. This is the first merit of this. And this was also the concern in the previous day discussion, that the permeability was also a point. So it reduces the permeability from 10 to the power minus 3 to 10 to the power minus 9. So this is the one merit of this. Second is how it acts. It enhances the reactions of the cement. The CSH gel which is formed is the primary reactions of the cement with water and whatever the granular or the soil materials is there. So it enhances the reaction process and creates a crystalline structures. If you can see in the last bullet point, it is elaborated. So it creates a crystalline kind of a structures, the microstructure, which further result into the higher UCS value, higher flexural value, and higher tensile value. If we are coming to the morphology of this Novocrit, this again, as I mentioned, because of the ionic exchange in the micro level, it creates the reactions and enhances the process. Due to this, all kind of the additional value addition we are finding. This enhances the UCS flexural, I already told, and we have used it in various kind of soil and various kind of climatic conditions as well. If we refer the IIT Palakkad report, I am going to the directly IIT Palakkad report. IIT Palakkad report is showing that this has a very particular property, that it prevents the premature cracking. This picture is very much clear. The above picture is with the Novocrit and cement, and the below picture is a standalone cement. The cement has the property to, while it come in the contact of water, and due to the temperature differences, it shrinks and expands. So till the limit, this prevents the premature cracking, and this is the finding of the IIT Palakkad. Secondly, this is the finding of IIT Mumbai. IIT Mumbai, Dr. D.V. Singh has done the evaluation of this product in his laboratory, and he found that even we can reduce the cement content up to 20%, and it is giving the same result, even the better result. You can see the mix are there. The two kind of mixes has been provided to him, and he has done the testing. The 28 days result and 7 days result, substantially you can see that with the cement and cement with Novocrit, how much it is increasing. And another is where we have reduced the cement content and the Novocrit with the cement, and you can see that the result is even higher, even on the lower cement content, where the cement content has reduced from 5% to 4%, and the durability is also favorable, because the lower value of durability is always a better result, and the higher value of UCS is also there. So this is the finding of IIT Mumbai. Similarly, this product was also evaluated by the CRRI, and CRRI also claims the same kind of thing. This is the comparison of the CRRI. So CRRI has done the two kind of sampling with a 5% cement and 4% cement with a 2% Novocrit. And another they have done with the microsilica, addition of the microsilica with the Novocrit. So they have, once they have added the microsilica with the Novocrit, the result was 35% above than the normal UCS value. So this Novocrit also can be used in the combination of the microsilica. So that is their finding. So this is the merit. Now the question is, why such additives should be used? Sir, very simple question. In concrete, we are using so many kind of admixture. We are using so many kind of additives to enhance the value of the concrete. Here also, I request that this kind of parameters, which is the proven parameters of the UPRRDA, we should take all the data and we should think it seriously, that a standalone cement cannot work, especially in the soil. And this test of the IIT Palakkad here,
we found that this is good for all kind of soil, like black cotton, laterite, and the alluvial soil. So these different kind of soil conditions, we can use this product, as well as we can give the value addition by the UCS, by the flagellum, and whatever kind of things are needed as per the IRC codes. So I would like to conclude by requesting sitting here chairpersons, IRC chairman sir, and the H9 highway committee, that they should think that only the cost is not the parameter. And if we are going to the cost parameter, I have already submitted the report that overall 5% cost saving, if we are comparing the cement cost and cement plus additive cost and the durability cost. So if you combine all the things, the 5 to 10% cost saving will also be there. Thank you very much. Thank you. So it was a very good presentation by Novacrete. And now I invite Mr. Nitin Manawat, the Director, Mrs. VB Autotest Systems Private Limited, and he will be presenting on building nation with green highways. Thank you. So which one? Road step? No, VB order. If you have made any cost comparison with respect to the cement and cement plus additive, then you can show that slide here. That will give the confidence to I have the viewers. focused on the performance. Yeah, performance. I can also mention about the cost in numbers, but the table is not there in the. And that you should give actually, if the Right. because it should be supported by data. Correct, sir. Anyway, go ahead. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम नितिन मनावत है और मैं मुंबई से हूं और एक प्रोडक्ट बेस सील यूज करता हूं, लिक्विड पॉलीमर है। और मैं आज उसके संदर्भ में जो परफॉर्मेंस ऑफ रिक्लेम, दो विषय हैं, दो केस स्टडीज हैं, आई विल रैप इट अप इन 5 minutes। परफॉर्मेंस ऑफ रिक्लेम्ड बेसिस स्टेबलाइज्ड विद एडिटिव्स ड्यूरिंग मॉनसून्स ऑफ नेशनल हाईवेज, सो दैट इज वन। And second is construction of stabilized base with soils and additives without aggregates. So aggregates also bring in a component into the cost. So for low volume roads, can we do that? To start with, I would like to refresh the memory. This all started right here in Lucknow in 2017, when so many circulars were issued by Ministry of Road Transport and Highways to adopt green technology, but nothing was moving. So in December 2017, a conference was called, saying new technology for road construction. And 17 states, PWD ministers and the IAS secretaries were here. And then the policy was formed that go back to your states and start adopting it. We were very happy that with my credentials of US and then saying that since 1987, this product has been used, or the Florida state saying that in high rainfall area, in 300 miles, there is no defect. I thought when I will be presenting this literature, and the performances that, if a hurricane is coming in 1998, the roads were there. The Federal Emergency Management Agency of USA issued a letter saying that this is the right technology for mitigation of such disasters. In Florida floods or in Sahara, Africa, if we can widen the road without any aggregates by stabilizing sand. Another issue was about the crack relief layer if cement is there. So we got this tested, that the product is having the advantage of hygroscopic moisture retention and the cement hydration is complete. So you don't need to have a crack relief layer. But in spite of all this, we were told that no, prove yourself with Indian conditions. So the first thing which we did, went to IIT Mumbai, and I would like to highlight the first tests which were done were the laboratory investigation of soil without any additive and soil treated with only cement, then cement and additive. And these results were for everyone to see. And then
it was very evident that only cement doesn't perform. The MPA which was required, the UCS was not achieved. So having done this, our entire business is on what additives brings to the table. We are in booth number 22 for detailed discussion subsequent to this. The three case studies which I wish to present is August 2019. So it was 5-6 years ago when we did NH160A, Gote Shirdi. Then we did NH160, and the last is August 23, NH66. Very recently, we had a performance evaluation visit by IIT Mumbai to all these three national highways. The another set of construction is where we have not used the aggregates at all and have done. And one of them is in Jaunpur Zilla Parishad roads in 2022. And so these are certain other projects wherein we have to do it and release the traffic overnight. As far as the load bearing capacity is concerned, we have gone up to 200 MSA, 250 MSA design traffic. So this was the condition of the road, which is usually given during monsoons, that can you fix this? And otherwise they have to wait for 3 months for the monsoons to go. So we have reclaimed such highways. And as you see, this is the latest picture of 1st May 2025 of the cement concrete done on NH160A. NH160, that is old NH3, Mumbai-Agra National Highway, was broken at several places and which was revived. And you see the traffic is moving on the stabilized base. So another interesting topic is for the luminaries to decide on, IRC and the technical experts, that can we run the vehicle on stabilized base? This was the question raised when we reclaimed NHAI, which is my third presentation of the case study today. So this was the condition of Mumbai-Agra National Highway. So you see in October 6 and October 17, that's the difference what additives and stabilization makes. This was 10 kilometers, 4 lanes completely damaged. And the conventional wisdom said that you will have to dismantle the entire section and restart, rebuild and reconstruct it. We said, no, we will stabilize only top 300 mm, and you can do PQC over it without DLC. So that's what additive brings into the picture. These are some other roads. This is an NHI DCL section of NH208A, or the submergence of MDRs, wherein after reduction of the water, there is no change in the stabilized base. A conventional. So this is coming to the NH66 Mumbai-Goa highway. So what you're seeing here is the morning, and this is in the evening. We have very recently done the evaluation. Yes, sir. Just concluding it. So the core cutting was done. I would like to mention here that if I'm going 300 to 600 mm deep, there is a possibility that the core will break. That doesn't mean that stabilization has not been done. There is a possibility of being a stone larger or any friction. And not necessarily that the cracks on PQC is because of the stabilization. The propagation can be only into the top layer and for the reasons attributable to PQC. These are certain, this is purely black cotton soil, MDR 27, Nanded. I will just show this and go. We constructed 40% black cotton soil and 50% earthen rocks from the nearby well area. The heavy monsoons washed away the shoulders, but the stabilized base is there, the black cotton soil. Again, 23, it was not done the wearing course and the area was submerged, but on water retention, it was there. So the last 2 points which I would like to make before I conclude, majority of binders are from the developed countries where they are in use for more than 30 years. Literature must be there. And then we already had IRC 120, IRC 37, IRC SPT and part 2. Do we really need IRC 142? And it exclusively eliminates all this wonderful work which we have done. That is really a difficult situation. And the last request is to the decision makers that please try certain sections in your areas without aggregates for PMGSY low volume codes. Thank you very much. Okay, thank you very much for making the One more point. Okay. You asked that are we dependent on cement? No. We can work with cement, we can work with lime, we can work with LKD, CKD, type C fly ash. So cement is not used for cementatious purpose.
So if you exclude such products from IRC 142, and if the tender comes which says that you build road as per IRC 142, I'm out. So that requires a revision. Thank you very much. Okay, thank you very much for giving a very nice presentation. Now moving ahead, I invite Messrs. Strata Geosystems Private Limited, and the presentation will be made by Sri Suraj Ved Pathak, General Manager Technical, and he will be presenting on asphalt reinforcement for sustainable pavement construction. They have given it. This is some से copy paste होना बहुत मुश्किल है. सही बात नहीं. उसका पावर नहीं वो उससे चल रहा है ना. I just copy it. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Mr. Chairman, thank you for giving us an opportunity to present our case studies. And I'll be speaking on sustainable rehabilitation of distressed pavement surface using asphalt reinforcement. Slightly a different topic on the current forum, but yes, it's going to be a complementary to the discussions that we had yesterday, and some of them we'll be having today as well. As like for the FDR, another not an alternative, but an complementary would be using the asphalt reinforcement in the top wearing course layers. So this kind of technology is used where the pavement rehabilitation works are taken place. And I'll go a slightly bit on the technical part of it, which kind of pavement rehabilitation works we can take up, what kind of distresses that are occurred, and how the asphalt reinforcement can benefit with it. Coming to the pavement rehabilitation, the major cause of this kind of rehabilitation works is because of the excessive vehicular stress that is observed on the surface, then loading, overloading, and yes, the main culprit would be the water or poor drainage. So what does the asphalt reinforced pavement do? And this is like for the design point of view, for the asphalt reinforcement, you would require few of the conditions like existing pavement condition, traffic predictions, reinforcement properties, and the thickness of the overlay parameters. It definitely retards the reflective cracks, but the way it retards is because of the reinforcement properties of the grid, wherein which we place it in the layers between DBM and BC or at the interface of BC and WMM. Of course, for the rehabilitation works, the initial cracks appear to within first 1 to 2 or maybe up to 4 years, and the rate at which this crack grows is tremendous, and that's what cause a lot of expenditure on the rehabilitation works. So some of the benefits of the geosynthetics in case of pavement rehabilitation would be it gives you an advantage where you can lead the entire roll in a width of 3.8 meters, which is like 3.7 meter a lane width, and you can go and construct with 100 meters on this.
The advantages, yes, it gives us. While ago, Chairman sir had asked us like what would be the cost implications or the advantages in terms of the technicalities. Yes, it retards cracking propagation. It's 4 times better, delaying the cracking reflective cracks. It enhances your rehabilitation intervals, increase service life, and few of them, and of course, yes, one of the major point is it is sustainable. One of the key aspect of the asphalt reinforcement would be having a proper bond with the top and bottom layers of the bitumen surface. So there, in this particular case, the reinforcement that we are using is having a bituminous coating. So it has a very good bond properties with it, both the bituminous courses layers. And then some of the installation methods. See, this product, although it comes with manufactured in a manufactured product, but for the laying and installation, a due cognizance is given, because if it is not laid properly, it won't work. So some of the things you need to take care of prior to installation and also during installation. Like prior to installation, like surface has to be clean, dry, and it has to be uniformly leveled. So the crack propagation, it has to be like filled up, the crack repairs, and then track coat application has to be in conformance with the MOD specifications. After laying the tack coat, the grid installation can be done by unrolling the roll with specialized equipment, where you can lay the roll and then fix it up to the grader, and then you can unroll it. And there is a way to manually install it as well. But some of the things need to be taken care is like wrinkling. So this is something which you need to take care during installation. Further to it is like what happens when the roll is laid for 100 meters for the next step of it. So there are longitudinal and transfer joints, and this joint has to be again in compliance with the MOD specifications that you need to take care. At the curvature also, you need to be very cautious in laying this reinforcement. And yes, so few checks which I had told earlier, that it has to be having a very good bond strength. So there is a ASTM standard 3359 which gives you an hint to what extent the adhesion is there along with the reinforcement when it is laid on the surface. So I'll just run through few of the tests which are there. I'll give a bit on the performance test. It is the beam fatigue test, and which is done in jointly in collaboration with BITRA, and some of it has been done with the IIT Hyderabad. So we have plotted some of the curves where you can see that the conventional CM is stand for the conventional mix, and then the other type of geosynthetics performs much better in case of 4-point bending test. Same is case for the rutting test as well. You can see that the rut deformation, surface rut has tremendously decreased in case of the geosynthetic reinforcement, whereas in the conventional it is still higher. And these are some of the examples of the lab test which we have conducted at BITRA. I'll go directly to some of the case studies. I think the time is up. So some of the case studies which we have done is at Paonta Sahib, and where you can see that this has been laid and it is stacking properly with the bottom DBM layer. This is the finished surface. This one we have done it in Karnataka with Dilip Bulkon. And one we have done it very next to this state is in SS78 in Bihar. So where the performance was also checked. This was done in 2021, and then we even received a performance certificate from the applicators for this kind of technology. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much. So it was a very different kind of presentation, but it's very useful and enlightening, especially for the rehabilitation of the asphalt pavements. Now, the next presentation is from the representative of Messrs. Road Step Technologies Private Limited.
वहां रखिए सबके सामने, आगे आगे टेबल पर बेटा। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल शर्मा। मैं हूं कंपनी रोडस्टर टेक्नोलॉजी से। ये प्रेजेंटेशन नहीं है, ये डिस्कशन है। मैं अपने प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ पर अपना एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं आया हूं। तो इट इज अ डिस्कशन अबाउट our situation, about Indian government situation, about our road conditions, and what are the reasons behind them. So let's start with the difficult patch of these presentations now. FDR, हम लोग इतने देर से काफी FDR के बारे में बात कर रहे हैं। FDR का मतलब क्या है? FDR का मतलब है, FDR पहली बात प्रोसेस, ये टेक्नोलॉजी नहीं है। प्रोसेस, मिक्सिंग प्रोसेस, स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी है। FDR फुल डेप्थ, मतलब जितनी गहराई में हमको चीजें बनानी है उस गहराई तक मिक्सिंग करना, और रिक्लेमेशन, हम जो उसको मिक्स करना चाहते हैं। और ये अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। यदि कोई लूज मटेरियल है तो हम WM प्लांट से मिक्स कर सकते हैं, और यदि हमको उखाड़ना है 250-300 mm तक, तब हम FDR मशीन यूज कर सकते हैं। तो दोनों ही तरह के मटेरियल को यूज करने का मतलब FDR ही है। पर FDR जिसके अंदर हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी प्रेजेंट की जा रही है जिसमें सिर्फ मशीनें यूज होती हैं, ऐसा नहीं है। FDR इट मींस द यूज ऑफ द ओल्ड मटेरियल इन अ स्पेसिफिक डेप्थ। जनरल प्रैक्टिस इंडिया के अंदर क्या होती है, अभी इसके अंदर एक बहुत अच्छा मैं समझाऊंगा, वाइडनिंग। वाइडनिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो चौड़ी सड़कें होती हैं, हम लोग कहते हैं कि सीमेंट के अंदर पत्थर में सीमेंट मिला दीजिए और काम हो जाएगा, तो उसको भी FDR बोल रहे हैं। नहीं, आप लोगों ने शोल्डर के अंदर पत्थर डाला सीमेंट मिलाकर, उसको आपने कॉम्पैक्ट कर दिया, वहां पर आपने कोई मशीन यूज नहीं करी, आपने पुराना मटेरियल यूज नहीं किया, उसको FDR में कैसे ले आए आप लोग? इट इज नॉट FDR। अब मुझे स्ट्रेंथनिंग करनी है, स्ट्रेंथनिंग के अंदर मैंने ऊपर से असफॉल्ट उखाड़ा, ऊपर से सीमेंट में पत्थर मिलाकर डाल दिया और उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, स्ट्रेंथनिंग हो गई। इज इट FDR? नो, इट इज नॉट FDR। FDR इट इज अ रीयूज ऑफ ओल्ड मटेरियल। अब रीयूज कर रहा हूं मैं ओल्ड मटेरियल को, तो नीचे मुझे उसके अंदर खड़ंजा मिल रहा है, ईंट मिल रही है, पत्थर मिल रहा है, मट्टी मिल रही है, ब्लैक कॉटन सॉइल मिल रही है, वो सब चीजें मिल रही हैं। उसके बारे में किसी ने कोई बात करी? किसी ने कोई सरफेस एरिया ऑफ मिट्टी की बात करी? हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं सीमेंट के अंदर, पत्थरों में सीमेंट मिला दो। साहब मैं क्षमा चाहूंगा, मैं थोड़ा सा ज्यादा समय लूंगा, थोड़ा सा छोटा सा वीडियो भी है जो दिखाना जरूरी है कि सीमेंट को समझने के लिए। तो क्या हम लोगों ने बात करी सरफेस एरिया की सीमेंट को लेकर? मिट्टी के अंदर सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसलिए आपको सीमेंट ज्यादा लगेगा, और ज्यादा सीमेंट यूज करोगे तो आपको उसके अंदर रिजिडिटी आएगी और उसके अंदर क्रैक आ जाएंगे। क्या हम लोगों ने बात करी? हम लोग बात करें सीमेंट में, पत्थरों में सीमेंट मिला दो। अरे वो FDR है ही नहीं। इकोनॉमिकल किस में पड़ रहा है? इकोनॉमिकल आपको जब पड़ रहा है जब आप जब मिट्टी में सीमेंट मिला रहे हो, और मिट्टी में सीमेंट मिला रहे हो तो आपको केमिकल की जरूरत है, क्योंकि उससे आप यदि ज्यादा सीमेंट मिलाओगे तो क्रैक आ जाएगा। पोर्सिलिनिटी लेने के लिए आपको केमिकल की जरूरत है, आपको हाइड्रेशन का खत्म करने के लिए आपको केमिकल की जरूरत है, आपको वाटरप्रूफ देने के लिए आपको केमिकल की जरूरत है। हम लोगों ने किसी सब्जेक्ट को लेकर बात ही नहीं करी। हम लोग बात कर रहे हैं CCS की जरूरत है या नहीं है, बस ये CCS की जरूरत नहीं क्योंकि वो महंगा है। अरे वो महंगा है तो कर क्या रहा है? एनवायरमेंट बचा रहा है दोस्तों, पहाड़ों को कटने से बचा रहा है। हम लोग 2013 से, मैंने खुद सड़कें बना रहा हूँ 2013 से। मेरा एक सीनियर है मोहित वर्मा, वो मेरे से पहले 3 साल से सड़कें बना रहा है। उन सड़कों का आज तक किसी ने डेटा लिया नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। अपने तरफ से 2018 के कोड की हम लोगों ने स्लाइड की कॉपी डाल दी अपने प्रेजेंटेशन में। नॉट इनफ डेटा इज अवेलेबल, हेंस नो अवेलेबिलिटी ऑफ कोड। व्हाट इज इट? 2025 में बैठ रहे हैं, 2018 के कोड की फोटो उठाकर डाल रहे हैं। आज 7 साल यहाँ पर UPRRD ने 6000 किलोमीटर बना दिया, हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने इतनी सड़कें बना दी। आज तो एक
बेसिक सा कॉन्ट्रैक्टर भी सड़कों को जानता है एफडीआर सड़कें क्या होती हैं। हमारी सारी की हुई मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया गया। मेरी सेकंड जनरेशन जो कि मेरे यहाँ बच्चे मेरे पढ़ाए हुए हैं, वो आजकल अपनी कंपनी खोलकर बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं कि आपके पास में डेटा ही अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग सीमेंट को प्रपोज कर रहे हैं। ये फर्क है साहब, देख लीजिए एफडीआर वाइडनिंग में, एफडीआर स्ट्रेंथनिंग में और रिसाइकलिंग ऑफ ग्रीनफील्ड। एफडीआर में और ग्रीनफील्ड में क्या फर्क होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप किसी को प्रेजेंटेशन चाहिए होगी तो मैं आपको डिटेल में दे दूंगा, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक डिस्कशन कर रहा हूं। अब ये सबसे बड़ी एक मेन स्लाइड है हमारी, जिसको कि हमारे को समझना चाहिए कि एफडीआर का मतलब एफडीआर सीटी और सीटीएसबी में फर्क क्या होता है। देखिए, हम लोग कोड बना रहे हैं एफडीआर का, बात कर रहे हैं पत्थरों की, जो कि संभव ही नहीं है। यदि हम एफडीआर की बात करें, इसका मतलब वहां पर मिट्टी का होना अवश्यम भावी है। नीचे सीमेंट, नीचे पत्थर है, खड़ंजा है, मिट्टी है, सैंड है, सॉइल है, कंक्रीट है, जिसके बारे में आपको नहीं पता, और उस चीज को डिजाइन करने के बाद में उस सड़क को बनाना एफडीआर बोलते हैं, ना कि पत्थरों को घेर कर उसके अंदर एफडीआर को बोलते हैं। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड टू अंडरस्टैंड अ बिग डिफरेंस बिटवीन सीटीबी, सीटीएसबी एंड एफडीआर। एफडीआर एक स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी है, जिसको समझना जरूरी है। Try to wrap it fast. ये हमारी रियल कंडीशन है सर, ये पानी में सड़कें हैं। हम लोग इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम लोग इतनी इकोनॉमी कर लेते हैं कि हम सब ग्रेड से भी नीचे सड़कें बनाते हैं, मतलब एचएफएल से भी नीचे। ये हम असम की सड़क है 2018 की, ये हमारी यूपी की सड़क है। ये मिट्टी के ऊपर 100% मिट्टी के साथ में सीमेंट ये काम करता है। ये देखिए आप, 4 महीने पानी के नीचे रहने के बाद में सड़क का ये हाल है, काई जम गई है, पर ऊपर आपको सड़क नजर आ रही है। ये मिट्टी के साथ केमिकल काम करता है। ये आप देख सकते हैं, साइड का शोल्डर निकल गया है, वो आपकी साइड के अंदर सड़क बनी हुई है एफडीआर की। एफडीआर नहीं, रोटावेटर से बनाई है मैंने वो सड़क। मिट्टी है 100%, आसाम 2018 की। ये आपके यूपी की सड़क है, जिसके ऊपर से पानी निकल गया, और साइड के अंदर आप देख रहे हैं लहरों के निशान भी देख सकते हैं। बेस्ट फोटो ऑफ अवर 2025, मेरी सड़क और उस पर नाव चल रही है। नाव और ट्रैक्टर दोनों एक टाइम में मेरी सड़क पे चल रहे हैं। सॉइल के ऊपर काम करने के लिए केमिकल की इसलिए जरूरत है। एक और सड़क 2025 की है सारी। एक और सड़क, एक और सड़क, सब 2 मिनट और। मिट्टी स्टेबलाइजेशन, मिट्टी एयरवॉइड्स को कम करती है, उसके अंदर आपके डेंसिटी बढ़ाती है, पत्थर को अपने पास में पकड़ के रखती है। आप देख सकते हैं किसी भी तरह का पत्थर हम प्रयोग कर रहे हैं, उसके अंदर आरबीएम पड़ा हुआ है, मिट्टी ने उसको पकड़ रखा है। मिट्टी का ये काम है, और मिट्टी के लिए केमिकल की इसलिए जरूरत है। एक ये स्मॉल वीडियो जिसके अंदर छोटा सा समझने की पॉइंट है कि ये 4% सीमेंट मिट्टी के साथ में क्या काम कर रहा है, वो देख लीजिए। ये आसाम की मिट्टी है, ये केमिकल मिलाकर आसाम की मिट्टी, दोनों का रंग बदल गया, देख सकते हैं। एक पानी परफोरेशन हो रहा है। इस चीज को देखने के लिए आप लोगों के सामने टेबल के ऊपर बोर्ड्स पड़े हुए हैं। यही चीज आप अपने हाथ में भी टच कर सकते हैं, हाथों से फील कर सकते हैं। ये आपके यूपी की मिट्टी है, ये केमिकल से मिला हुआ है, और ये 4% सीमेंट से मिला हुआ है। दोनों में 4% सीमेंट है, पर एक में केमिकल है और एक में नहीं है। ये इनका बिहेवियर है, वाटर परफोर्शन देख सकते हैं, इसलिए केमिकल की जरूरत है। 5 मिनट बाद इनकी हालत दिखा दूंगा। ये अभी थोड़ा सा फास्ट स्पीड में चल रहा है, ये फास्ट फॉरवर्ड, यही बोर्ड पड़े हुए हैं, कुछ कटिंग नहीं है। ये निकालने के बाद में, अब इनको निकाला 5 मिनट बाद, क्या 5 मिनट बाद नहीं, 30 मिनट बाद। ये यूपी की मिट्टी, सीमेंट अंदर है, 100% मिट्टी है। पानी अंदर जाने से सीमेंट का एक्शन खत्म हो गया। ये आपके असम की मिट्टी है, जिसमें भी सीमेंट है, ये देख सकते हैं, इसमें सीमेंट है 4%। अब केमिकल वाली देखिए, वही 4% सीमेंट, वही 80 की एन के ऊपर कॉम्पैक्ट किया हुआ है। यह असम की मिट्टी,
ये जो चीज मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं, ये आपके सामने टेबल के ऊपर पड़े हुए हैं। ये दोनों चीजें आप यहाँ पर अपने हाथ से ट्राई कर सकते हैं। ये यूपी की मिट्टी सिल्ट, पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे की मिट्टी है, पीएनसी का प्रोजेक्ट है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि हम सिर्फ इकोनॉमी को नहीं देखेंगे, हम सड़कों की कंडीशंस को भी देखेंगे, और केमिकली क्या जरूरत है वो अब आप समझ ही गए होंगे। किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत हो, आप कृपया इस चीज के अंदर मेरे से डिटेल की रिपोर्ट ले सकते हैं। ये सारा आपका डिफरेंस है, रशिया की इंस्टीट्यूट्स वगैरह का सारा डेटा है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपके साथ मेरे स्टॉल नंबर 9 के ऊपर आप ये सारी चीजें डिटेल रिपोर्ट ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निखिल शर्मा। Thank you. Thank you very much for giving a very good presentation and showcasing your technology by way of good video. Now it's up to the audience and the other stakeholders how they take it up. Now we move to the next presentation. That is from the representative of Messrs. Avijit Agencies Private Limited. There will be question answer session at the last. After we finish all the presentations, then we will take up the questions. गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को नमस्कार और प्रणाम। मैं आशीष मिश्रा, टेरेजाइम केमिकल की तरफ से आपको कल के कुछ क्वेश्चंस थे कि एडिटिव की जरूरत क्यों है या उसका क्या इफेक्ट है, तो उसी से रिलेटेड स्लाइड्स में ज्यादातर अपने प्रेजेंटेशन में रखा हूं, और टाइम लिमिटेशन है 5 मिनट्स। तो जो भी आपकी क्वेरीज रहेगी रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन, रिगार्डिंग रिपोर्ट्स, you can visit to our stall number 15. I will be there to answer the questions. So I'll start my presentation. It is a bioenzymatic soil stabilizer. So what do you mean by bioenzyme? It is made from the food extract like sugar cane molasses. जो आपका गन्ना का रस निकालने के बाद जो बचता है, उससे हम केमिकल को बनाते हैं। So this is the brief content. Product highlights में आपको बताऊंगा, mechanism, how it works. Then I have tested our product with soil cement and with additive, that how the improvement is there into the soil properties. Then what are the conclusions, what are the key merits we have gained, then significant applications where we can use it, then work done, previous works, what are the reports, performance report we have and what we have submitted, then field performance studies, then appeal. So product highlights mein first is, it is a natural organic product. It doesn't need any substances to make. It is a natural product. It is a biodegradable product. So we are sitting in the program which is having a title Green Technology. So it is towards the sustainability or green technology. It is non-hazardous, non-toxic, sustainable, eco-friendly, and it reduces carbon footprint up to 40 to 50% by treating with the soil cement mixes. I will discuss this in further slides with the results, that how it reduces to 40 to 50%. So this is our product. So it is made from the Nature Plus company, US, and we are distributor here. It is an excellent replacement. It is a soil modifier which replaces the conventional unbound granular layer, that is WMM, WBM and GSB layers. It is a soil enzyme which is made from the food grain waste. It enhances the soil properties like density, CBR, reduces the plasticity index, and improves the strength, that is unconfined compressive strength. So how does it works? So it works in 4 different stages. First is clay water effect. So bioenzyme, when we insert it to the liquid, the ions which bioenzyme releases, it is works as a clay water effect. Clay
is a sheet which is having negative charges. So it attracts the water molecules, which is a polar. So due to which swelling and shrinkage characteristics occurs in the soil. So with the help of the enzymes, that cationic action works, and the hygroscopic adsorbed water which is there on the soil particles, it reduces the plasticity index by releasing the adsorbed water. Another is bioclogging. Bioclogging in the sense the bioenzymes microbial action releases the gel formation which fills up the voids and coat the clay particles. That changes the clay structure and reduces the permeability and improves the dense microstructure. It will be proved with the scanning electron microscope images I have kept here. So this is the mechanism of bioenzyme. First figure you have seen, it is a clay particle which is carrying a negative charge. When we are not inserting any chemical, the clay water is attracted towards the higher surface area and coats over the clay particles. So when we insert the enzymes, it releases the adsorbed water, and that's why it works favorably. Another picture is with soil with aggregates. So these are the tests we have performed. First one is resilient modulus test. Why I am going to resilient modulus test? Because we perform here non-destructive test to check the performance. So resilient modulus test gives us the modulus value in the lab, and in field we can test it with the lightweight deflectometer or falling weight deflectometer. We are not adhered here to take out the core and check the strength properties. So these are the two soil properties of virgin soil which we have taken for the research purpose. First one is CI type and another with is CL type. So these are the additives type we have taken. First is we have tested with CI soil with virgin 0%, then 2, 4, 6 and 8% of cement. Another one is SC type of soil. Then we have tested with the addition of bioenzyme. Here we have tested with the cement dosages 1, 2, 3, 4, 5% with CI type 23 cubic meter material is treated with a 1 liter bioenzyme. Another is SC type soil. Here the bioenzyme dosages is reduced. Here we are treating 25 cubic meter with 1 liter. So these are the results. So here we can see that the plasticity index of the cement of the soil, with the help of the cement, we are reducing at 8%. The same results when we are taking out with a bioenzyme, the results we are getting at 4% cement. So just 2 minutes, I'll conclude. So this is the UCS results. These are resilient modulus results. These are durability characteristics. Here, this is the image. First one is of soil cement treated soil. So in soil cement treated soil, the SEM images gives us the microstructural characteristics of the soil, that how much percentage of the soil is coated with the CSH gel formation, how the soil hydration process is completed or not. So in the first image, we are getting the crystalline structure with the rod-shaped structure, that is yttrian that is the unreacted particles. Another one is second image is of soil cement and bioenzyme. Here, the voids are reduced due to the clay mineralogical flocculation dense structure due to the bioclogging effect. So these are the conclusion. We are getting the same results or better results with a 50% reduction in cement. That is what we are getting 8% cement. Here we are getting 23 cubic meter per liter enzymes with 4% cement. That's why we are reducing 40 to 47% of the carbon footprint. So these are the merits: reducing the carbon structure, carbon footprint. Quality control procedure is easy. We do not have to wait for to taking out the cores. Here we can test the modulus value directly. Here the major advantage of our product is we work with cement and we do not work with cement. Feasible with low cost recycler,
In many states, there are problems with the big machines. So asphalt zipper is there. We can work with that. Another advantage is we can open the traffic after the 24 hours. It maintains the arboriculture. It promotes the plantation process also. Another significant applications, we improve the embankment, we work in subgrade, shoulder treatment, we work as a replacement of the unbound granular material. We can make all weather roads without the black tops. That is favorable for the low volume roads. So these are the work, past experience. We have worked by 15 years in more than 16 states, more than 2000 kilometers of road. These are the field performance data, 100 plus kilometer we are having, more than 5-year roads. And these are the testing agencies. These are the road photos. I'll skip. You can come to our stall. I will show you. So these are the summary. I'm concluding. So my request is that suitable codal provisions in existing codes or dedicated codes for application of bioenzyme as soil modifier or enhancer are to be framed as a replacement of subbase and lower subbase layers, as there are no provision yet for these bioenzyme soil enhancers or modifiers. So here we can work without cement, and we have 2000 plus kilometers of the working experience in the new roads, in the strengthening and upgradation work, and in the FDRs. Thank you so much. Thank you very much for your nice presentation. Now we move on to the next one, that's the sixth presentation of this session. And this presentation will be made by representative of Messrs. Vish Mudra Private Limited. So please come forward and make a presentation. That portion. Very good morning, everyone. Myself, Nagendra from Stable Road. Role of additive comes from these definitions as in extension to Nikhil's discussion, and yesterday Dubey sir was also mentioning about this. There is a need to differentiate clearly with CTB and stabilization technology. The conventional CTB has a well-graded aggregate and predefined properties, which makes it, maybe with cement alone. Already specifications exist for that in IRC 37 2018. So as per the literature available and as per my knowledge, full depth reclamation uses the existing pavement material and certain portion of subgrade material as well. And secondly, purely a soil stabilization wherein natural occurring locally available soils can be utilized. So Dubey sir was mentioning, and as per our experience as well, in some cases in UPRDA, we encountered more than 50% of subgrade soil in the FDR mix. So what category it falls under? So that is in between the soil stabilization and full depth reclamation. This has a lot of pores. So here comes the role of additive to refine those pores and micro densify the matrix. So we are using our product Stable Road, which is made of natural minerals in powder form, and this has been in use in European countries more than 20 years. Of course, I will be jumping directly into the role of additive. So I would like to mention the 4 parameters which was improved within the laboratory and also in the field. First is UCS. I'll go into this slide and come back. This is not a statement. We have enough proofs in the laboratory with SEM analysis and XRD as well. When additive is added to the soil cement or a soils aggregate cement matrix, there will be formation of secondary CSH gels, as in one of the presentations yesterday it was mentioned. So due to that pozzolanic reaction and the formation of additional CSH gels, there will be a refinement of pores
and micro densification will happen. This not only contributes to the strength and sustainment of the strength with respect to time. This is again XRD analysis, which confirm the formation of additional CSH gels. There was reduction in Ca by Si ratio. And here are some of the results with respect to UCS at varied cement and additive dosages, which clearly indicated an increase of 32% in 7 days and 45% in 28 days due to the usage of additive. Here are the results at 7 days, and this is at 28 days. Coming to the durability, this is a very important parameter in cementitious bases or stabilized bases. Of course, the cement alone makes satisfy the criteria, because whatever the code specifies is at the higher side, almost it's 14%. But there will be an improvement in the durability parameter due to the usage of additive, which was clearly observed. There is a reduction in weight loss by 75% due to usage of our additive. And of course, the residual UCS will increase, as Professor Ankit Gupta was mentioning in yesterday's presentation. That was much more pronounced in the usage of additive. And the third parameter, softivity, which is sort of pores connected and permeability of water in that pores. And this is again one of the research done by Debarma et al. So which clearly indicated the reduction in absorption of water. And this was due to the pore refinement, which I was mentioning. And fourth is chemical resistance. And this is resistance to chlorides, which is again proved by RCPT results, which was done at IIT Roorkee. And these are all not statements. We have enough publications in journals, and we have enough performance evaluation reports whatsoever we have executed the works. This is a brief. We have done almost 952 lane kilometers, which includes seaports, airport runways, national highways, rural roads. We have enough performance evaluation studies for more than 8 years, which was done by, again, CRRI and IITs. And it was not that we don't have, yesterday's presentation, it was mentioned in some slide, like there is no supporting data on CCS. It was not true. And this list of projects, what we have done. And this is a segment-wise contribution with respect to saving of aggregates. And again, this is whatsoever we have saved and contributed to the environment. Almost 42,000 tons of carbon emissions has been saved, in line with the Honorable Prime Minister's vision of net zero carbon emissions by 2070. With this, I will thank, and a sincere request is that if any documentation or reports required, we are ready to provide, and we have already submitted to IRC committee and H9, whoever are involved in the code. So if required, we'll submit the journal publications as well, which was done at various IITs. And this is from our side. Thank you for the opportunity. Thank you very much for finishing it within the time limit. Now, we want to move on to the seventh presentation of this session. That is by Messrs. AVS. Thanks a lot to the Managing Committee for giving us an opportunity to speak on this important topic today. So there comes a time in every sector where the sector has to look back, thank all the legacy which has been granted to it by the previous stalwarts, previous leadership, and then move on to the new technology, to the new world. And as the nation grapples with numerous landslides, cloudbursts, diversity, destruction of diversity, like in the Aravalli Hills, so many places, it's now very important for us to adopt new technology, and being significant contributors in the process of full depth reclamation and the green construction of roads in UPRRDA, in this excellent contribution which has been done by the team of UPRRDA and MERIDA, all the think tanks like IRC and the IITs.
in doing this more than 5,000 kilometers of FDR work in UP. So we are of this firm belief that this is the future of road construction. And in that process, and taking ahead this excellent presentations about involvement of soil in full depth reclamation, we have done some studies in our lab, and we are going to present the results that we have achieved. They are striking results. They'll tell about the saving in the carbon emissions and so many other contributions which these technologies can do to the national well-being. Please, Dr. Neeraj will now take over and give this presentation. Thank you very much, sir. So we are mainly focusing on the performance studies. So we have done laboratory study on the commercial stabilizer of using ANT, and we have determined the engineering properties of the material with and without the chemical additives. So we have done the UCS test, flexural strength, drying shrinkage, and durability against wetting and drying. And these are the materials we have used. We have used the soil from Ghaziabad and 43 grade cement we used, and commercial stabilizer ANT has been used. These are the index properties of the soil, and these are the mixed proportion we have adopted to test with additive and without additive. And these are the strength results, UCS strength results from 7 days UCS and 28 days UCS. We have observed that with increase in the cement, it is a general criteria that the strength will always increases. But after addition of the additive, we have observed the better strength performance. And the similar trend has observed for both 7 days and 28 days. And further, for flexure also, we have observed the similar trend. So everyone will say, why can't we go for a chemical additives? Why can't we just go for 1 more percentage cement? So it will satisfy the strength criteria, but what about the shrinkage? So with increase in the cement content, the shrinkage will always goes up because it is the inherent property of the cement. So, but adding these chemical additives, we can reduce the drying shrinkage and we can achieve the better strength also. And this is the durability study. We have observed that with the addition of our chemical additive, we can reduce the mass loss and we can also increase the residual strength. And these are the conclusions. The strength values will increases, the shrinkage values are being reducing, and the durability study reports are also increasing. And these are the advantages of the product. We have a better strength and durability. So we are having a reduction in the shrinkage. We will have a better usage of locally available materials, and we will also get environmental and economical benefits. So if you consider the environmental benefits, I just want to discuss about the how much environmental effect has been made by the cement industry. Cement is involved in the mining of a natural material. It involved in the consumption of huge energy, that is 3 to 3.5 gigajoules per 1 ton production of cement. So it also involves in the huge emission of greenhouse gases. So if we are able to reduce 1% of cement content with the addition of additives, we can get a very good carbon credits. So UPRIDA has made around 5,000 kilometers. So if proper calculation has been done, they will get a better carbon credits for the particular structure of the road. And this is the laboratory study we have done. These are the photographs. And we have also performed a field study. We have constructed a 7 kilometer stretch of road in Andhra Pradesh from Gajaram to Gopavaram. So it is situated in a industrial corridor where a huge traffic of high tonnage vehicles will always pass through. So we have collected the samples from the particular road, and these are the details of the test pit. And we have done the laboratory mix design, and this is the gradation, which is falling within the guidelines of MOR. And we have determined the 7 days UCS, 28 day flexural strength, durability, and optimum mix design we have obtained is with 5% cement content and 100 ml per cubic meter ANT. And the project we executed in year 2022. And after that, we made the field evaluation, we cut the cores, and we determined the strength properties. And this is the report given from Tribolite in USVDO. And we have observed that the strength is far higher than the required strength of 4.5 to 7 MPa. And then after we done the FWD analysis, and here also we have observed that this is done after 2 years of execution of the road. And here also we have observed that there is a significant life has been there for the particular structure of the road, and
finally they have concluded that no overlay is required for the structure of the road. But this is only, we have done analysis after 2 years, but a significant evaluation for the regular time intervals is required to get a better data on the use of this chemical additives, sir. I will conclude. So this is the report we obtained from NIT Agartala. They have done the laboratory studies with the different combinations of with additive, without additive, and for different combinations of soil and aggregate. And they have concluded, they have obtained that it is also giving the better results with 100 ml per cubic meter of ANT. And this is the test reports we have obtained from IIT Bhubaneswar. And they have also done a laboratory study with different different percentages of cement and 100 ml ANT. They have also determined the UCS 728 days, flexural strength, durability. And then after, they also concluded that the 4.5 OPC and 100 ml ANT is getting a good results, which are falls within the specifications of IRC SP89. So, and this is the CRRA report on core specimens. So they have also given the concluding remarks that all the core specimens is getting a better results, which falls within the code specifications. So, and the report from IIT BHU Varanasi, they have also given in a similar way. So I just want to wind up this one with the why we have mainly inspired to use chemical additives, sir, last one. So this is mainly due to the specifications given by IRC. It is mentioned in IRC 37, IRC SP 89, and FDR booklet given by UPRRD, NRIDA. And this is the latest code also mentioned that the chemical additives can be used if the concerned executive agency is agreed with it. And these are the international codes also specifying the use of chemical additives. This is the South African code and this is the Astro code. So I would like to conclude that one. So with the use of chemical additives, we can achieve better strength and better carbon credits. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Shi. And now with this, we come to the last presentation of the session. That is by Messrs. Zydex Industries. Okay. Of how I'll try and motivate this. How do cemented layers fail? Let's first understand how cemented layers fail so that we can motivate the use of additives correctly, right? How do cemented layers fail? If you look at any cemented layer, typically this is going to be its progression over a period of time. You are going to see basically, okay. You are going to see basically that initially you have high strength, high stiffness, and then over a period of time, you are going to see deterioration happen. Sorry? Yeah. So if you look at this sort of curve, right? Reversion to a granular state is the natural endpoint of any cement stabilized layer, including a FDR layer. You will have an initial phase where you have high stiffness. You will initially then have a deterioration of that stiffness, and then you will eventually revert to a granular state. So the question is, if you have to add value with an additive, you have to do one of two things. Can you either slow down the reversion of the cemented layer to a granular state, or when it does eventually revert to granular state,
can you fundamentally decrease its rutting propensity, which is the distress mechanism once it is fundamentally granular in nature. So, I'm sorry, I skipped a slide here. The main distress mechanisms by which this fatigue deterioration does happen is either shrinkage cracking, which was talked about, fatigue cracking, or you can have eventual CSH carbonation of that cementitious material. So these are the mechanisms by which you can actually push this fatigue curve further out. You can slow the reversion down. This is Zydex data on 30 UPRRDA roads that we have now taken over 3 seasons or 2 seasons and 3 data points, right? We have taken pre-monsoon data, post-monsoon data. And what we're trying to show over here is basically, like expected, there is an increase in deflection, which should happen and is the natural way in which a cementitious base evolves. So we are doing this in an effort to develop our own fatigue criteria over a long period of time. But the key headline there is that things are working as they are anticipated in terms of the deterioration. What are we doing specifically in this space? We are fundamentally hydrophobicizing the mineral surface. If you hydrophobicize the mineral surface, you fundamentally reduce the wetting propensity of the soil. When you reduce the wetting propensity of the soil, you can anticipate something like this. The sample on the left is subgrade soil. This is not FDR. This is a subgrade soil with 3% cement. The sample on the right is 3% cement plus our additive, which is Terrasil. So regardless of how this is thought about from a scientific point of view, the design implications of this kind of behavior are very, very significant. This is very intuitive to motivate that this has to show up in pavement design in some manner, right? So the question is, in AASHTO MEPDG, in IRC tends to follow AASHTO MEPDG quite closely. How can you motivate this properly, right? So let's look at FDR specifically. Let's look at basically the fatigue deterioration that tends to happen there. What happens when a cement treated base is loaded under high saturation? You have 2 pictures in front of you. The top picture is at saturation of 70% or less, where there is less pore pressure and the voids are not interconnected. Below, you have the same picture at higher saturation where the voids are interconnected, where you can exert significantly higher pore pressure. There is significantly higher fatigue cracking that is going to develop in the situation where you have higher saturation. So the entire idea is, can you always stay in that first state rather than go into the second state, right? How is this captured in IRC? How is this captured today? How is this captured today in IRC? This is the cumulative fatigue damage equation that is there in IRC 37. It was also incorporated into IRC 142. What this is basically, this takes a stress ratio based approach where you fundamentally have a stress ratio and you have these 2 coefficients. What we are trying to show here on the SN curve over here is that fundamentally when you have a wet base and then you load it, the accumulated fatigue damage is higher. जब सड़क गीली है, तब जब ट्रक जाती है तो डैमेज ज्यादा होता है. That is what we are fundamentally trying to say here. With respect to this equation, I think this is the biggest issue that we have with the new codal specification, that the IRC 142 fatigue criteria does not apply to FDR works where soil is present or gradation variability is high. This is a color map that we have developed on 30 Zydex roads that have been done here. And what you will see here is that there is a reasonably wide distribution in the coarseness or fineness of the material. So this type of variation, this type of variation is therefore not allowing the IRC 142 code to basically be applicable
to the kind of variability that is fundamental to FDR. I think a range of speakers talked about that you cannot just wish away the fact that soil will be present, gradation variability will be there. So I think this needs to be looked into in a lot of detail. I won't go into how hydrophobicization can affect granular layers, but there is a very consistent AASHTO framework for that. I'll just very briefly give you an overview of what we are doing in this space. With respect to our technology, we have been doing this for a long period of time. We are active in many countries. Codal specifications in every country look different. The question is, how do you adopt them to articulate the value of your additive? With respect to work that we have done here in India, this is some work that we recently completed at IIT Dhanbad. Please visit our stall to have any detailed discussion. The key things are reduced water infiltration compared to only cement, where you can clearly articulate the value. You can see reduced deformation also in cyclic triaxial work compared to, again, only cement. You can again see improved resilient modulus compared to only cement, and you can see improved flexure strength also with respect to only cement. We have also done heavy vehicle simulator work. This is a serious endeavor for us with respect to a lot of time and resources having gone into this, where we were able to demonstrate that a pavement designed for basically 4 million e-cells lasted 7 million e-cells. So there is some pretty hard science backing up what we are trying to accomplish here. I'll leave you with this summary that our technology can help accomplish slower infiltration of water, reduced water holding capacity, and faster drainage. Agar mitti ko pani kam chipkega, it will go in more slowly, it will come out faster, and the fundamental water holding capacity is less. Less pavement saturation over the course of the year fundamentally means higher fatigue performance. Thank you. Thank you very much. So with this, we come to the end of the presentation. Now floor is open to the questions. We are already running out of time, so please be very brief in questions. And very little time is left for the question answer session. Yes, please. Mic. दीजिए माइक दीजिए उधर. हाँ यहीं पर सामने. बस. हेलो. प्लीज. हेलो सर, मेरा नाम राम सकल सिंह है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, रोड सर्किल, दरभंगा इन बिहार. सर अभी जितनी बात समझ में आई उसमें 3 चीजें मुख्य हुई कि मैजिक कंपाउंड जो इतने लोग बना रहे हैं और बेच रहे हैं उसका सॉइल पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसा रिएक्शन होता है, ये क्लियर नहीं हुआ. सीमेंट को यूज करते हैं हम लोग तो सीमेंट पानी के साथ रिएक्शन करता है और हार्ड कंपाउंड बनाता है, ये क्लियर है, फॉर्मूला के साथ मार्केट में अवेलेबल है. तो जितने भी लोग ये कंपाउंड बना रहे हैं उन लोगों को चाहिए कि वो सॉइल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा इसका फॉर्मूला वो दें और जो आउटपुट कंपाउंड बनेगा उसका भी कंपोजिशन बना कर दें ताकि उसकी जांच की जा सके. अब सीमेंट को मिट्टी में मिलाना तो पैसे को मिट्टी में मिलाने के बराबर है, क्योंकि बालू में जब हम मिट्टी मिला देते हैं और उससे प्लास्टर करते हैं तो उसका लाइफ कितना होता है ये हम लोग देख सकते हैं कि साल 2 साल बीतते बीतते वो सारे झड़ के गिर जाते हैं नीचे. तो मिट्टी सीमेंट को बर्बाद कर देती है. और यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे स्टेबलाइजेशन में लोग कह रहे हैं मिट्टी मिक्स कर दीजिए, मिट्टी में सीमेंट मिक्स कर दीजिए. तो मेरी समझ से मिट्टी में सीमेंट मिक्स करना, पैसे को मिट्टी में मिलाना, ये केमिकल जो ये लोग बनाए हैं. ठीक है, मैं समझता हूँ आपका पॉइंट क्लियर हो गया सर. कि आपका ये कहना है कि जो है सॉइल में मिट्टी का हम यूज क्यों करें, क्योंकि वो उसका कोई रिजल्ट नहीं रहता है. सो वैसे तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है काफी कुछ प्रेजेंटेशंस में आया है और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो स्टेबलाइजर्स जितने भी हैं
वो सब सॉइल पर ही वर्क करते हैं। ये सारी प्रेजेंटेशन से एक बात पता चलती है। फिर एनीवे, इवन देन इफ एनीबॉडी वांट्स टू आंसर क्वेश्चन स्पेसिफिकली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत भी हूं, पर आपने कुछ एक पॉइंट को छोड़ दिया। मिट्टी में केमिकल मिलाकर आप ऐसा बोल रहे हैं जैसे पैसा आपने मिट्टी में डाल दिया। अब मैं उसका जवाब ये देता हूं। हाँ हाँ, अच्छा सीमेंट, सॉरी, सीमेंट को मिट्टी में मिलाकर आपने बोला कि जैसे आपने पैसा मिट्टी में मिला दिया। पर आपने, आपकी बात सही है कि हम प्लास्टर के अंदर अपन सीमेंट नहीं डालते हैं और हम मिट्टी को लगाते नहीं हैं अपने दीवारों पर रियलिटी ये है, रियलिटी ये है हमारा जो केमिकल जो काम कर रहा है। आपने अभी मेरे वीडियो के अंदर देखा होगा कि यदि आप प्योर मिट्टी के अंदर से सीमेंट मिलाते हैं तो आपकी बात 100% सही है। पर यदि उसी को आप यदि केमिकल के साथ में मिलाते हैं तो उसका रिएक्शन, जो सीमेंट की पोजोलेंसिटी है, जो रिएक्शन है, जो एज अ कैटलाइजर काम कर रहा है, वो उसकी वजह से और उसको वाटर प्रूफिंग देने की वजह से पानी अंदर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाता। आप अलग अलग उसका फॉर्मूला दीजिए कि आपका केमिकल सॉइल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। मैं आपके पॉइंट से सहमत हूं। देखिए, आउटपुट बताइए। या Siri's query. Hi, next. Yeah, please. Good morning, all. My Dr. Ravi Shankar from CRRI. Okay, for last 2 days discussion or yesterday's and today's discussion, still we are making more variability, I believe. See, it is not a complaint, it's not a question, it's just a general discussion. On the dais and off the dais, people can take to the heart and they can think of it. See, we have 3 materials. Let it be soil stabilization, let it be FDR, let it be CTB or CTSB. Take CTB. I've been working with both laboratory and field. More than 5,000 lane kilometers I've tested. Tested means not visual inspection, from test pit to borehole. Okay, and bore log, even soil SPT, right? My general opinion, what I'm conveying is, for example, if you take type of soil, additives or even cement is not a paracetamol. It's not a paracetamol, it will cure all the problems. For example, so far we've discussed mitti will work for, you add soil, you add cement, you will get the result. But the point is, soil itself is not like a suji rava. It has a high plastic clay, low plastic clay, black cotton soil is there, soft clay is there, sand is there, silt is there. Leave sand, leave silt. When you come to plasticity, right, all these things comes into picture. So my request, humble request for let it be industry or be IRC committee or all the people over here, make a comparison chart for high plastic clay with a plasticity of 30%. I'm using 4% cement. Take the 4% cement as a standard, compare with the different percentage of additive, show the optimal additive, show the optimal cement. For next, for 30% or 20% plasticity index, what going to come? This is required for soil stabilization, number 1. Coming to FDR. See, so far, all the results, even the 5,000 kilometer, I appreciate RRDA to implement almost 5,000 lane kilometers and spending 11,000 crore rupees on the new technology. I appreciate. But the point is, now in FDR, so far, what the designs have been done in laboratory is completely based on table 40.4 of Morth. Right? Now you're introducing a code, right, where you are saying 4.75 lesser can be 20 to 55% allowed. But in Morth 400.4, which IRC happily accepts, IRC 37 accepts, has clearly written CTB or CTSB or any stabilized soil should have a well-graded mix. With this much variability in the field. Yeah, please conclude. Yeah, can we be able to create an FDR rather than blaming the field engineers, rather than blaming the technology? With this, we reduce the variability in the IRC or any accredited codes. Let us all come up for that, reduce the variability, give it to field engineer a single solution. Okay, thank you. you. This is the point. And last, only one point I want to conclude.
even now, after a couple of years of construction, after 2 years of construction, I've seen roads where even you're not able to take a core from well-designed, well-graded mix of CTB. Now we are talking about FDR. So with reduce the variability and give it to field engineers and I request IRC to create a repository where all the informations from industry and every partners can come into, because India is a platform. We are in the platform. All the results should be based on scientific results, not based on one who shouts loudest. Thank you. Yeah, thank you very much. Of course, the synergy between the industry and the academia is required, and we must converge somewhere. That is the need of the hour. So, any more questions? Yeah, I think time is now up. So, we conclude with this session with my brief remarks. We have seen very wide range of presentations in this session, and out of 8 presentations, 7 presentations were on the CCS or additives, and 1 presentation was on the asphalt reinforcement composites. And I think all the presentations, they have given some light into the technology. Some questions have been definitely answered, but still many more questions remain to be answered. And for this, what I feel is that, as he has raised some of the concerns, that people are working in silos. We should try to converge and reach to some agreement points. So for that, what I suggest is that the industry has the onus of proving their worth themselves. This onus lies on them. This onus cannot be taken by the IRC. So industry should come out with some transparent data, with the transparent specifications of the material, because until you give the specifications of the material, then the IRC cannot take a call, because to put anything in writing needs something very concrete in shape, and some strong backing of the data should be there. So specifications needed to be framed by the industry, and they should be provided to the IRC so that they can work on it. And some of the answers regarding the cost implication have been answered, but in a very vague manner. Still some more analysis needs to be done, that how much cost cutting will be there if we use CCS plus cement compared to the cement alone. Similarly, what will be the gain of strength and durability by using the CCS in comparison to the cement only? Because yesterday it was clearly mentioned, I think in code that IRC 142/2025 code, that there is no significant improvement in strength and durability with the use of CCS. So this particular concern has to be answered properly by the industry. So with this, I think we wrap up this session. And if any more queries are there, then you can contact these people one-to-one on their stalls. Thank you very much. So with these important takeaways from the first technical session. Yeah, so my co-chair is there. And now, no, anything you want. Yes. Good morning, myself and the presenters and the delegates and other guests on the other side. Yes. We have actually come across 8 presentations, and all the presenters has given different views about their products. And yeah, now it is up to the implementing agencies to accept how they can, because as it is new technology, and we are definitely, there are pros and cons in everything. So we have to take it carefully and then carry forward in the future endeavor. Thank you. Thank you, sir. And with this, we'll take a moment to express our gratitude first up to the speakers of the technical session. To do the honor, I firstly request the respected chairman of this technical session, Shri A.K. Jain, to please do the honor and present a humble gesture of gratitude first up to VV Autotest Systems Private Limited. Let's give it up for VV Autotest Systems Private Limited.
All right, so we'll first give it up for Messrs AVS, लगातार तालियों के साथ. And thanking Roadstaff Technologies Private Limited. We thank Strategy Systems India Private Limited. And we thank VV Autotest Systems Private Limited. Thank you, sir. Thank you for doing the honor. And Vishwa Samudra Private Limited. I also request the co-chairman to please do the honor and please join us. All right. Let's hear it for Novacred India Private Limited. I also request now the co-chairman to please do the honor and give it up for Vishwa Samudra Private Limited. We also thank Avijit Agencies Private Limited. And we thank Zydex Industries Private Limited. Let's give it up for Zydex Industries. And we'll take a moment to express our gratitude to the respected chairman and the co-chairman of this technical session. To do the honor, I would now like to invite on stage Sri Sudeep Chaudhary, Additional Director General, Ministry of Road Transport and Highways, to please join us. उन लगातार तालियों के साथ, we'll thank the chairman first of this technical session, Shri A.K. Jain, for gracing the program. And we also extend our gratitude to the co-chairman of the technical session, लगातार तालियों के साथ, Shri Muneshwar Kalita. Thank you, sir, for giving us your valuable time. We'll take a group photograph with everyone on stage. Sir, I request you to please stay back. We'll stay for a group photograph to capture this moment. I request all our dignitaries to please join us, all the speakers as well. And with this, ladies and gentlemen, we thank all the participants who shared their thoughts and inputs with the first technical session of the day. We will now disperse for a short tea break, 20 minutes on the clock, and after 20 minutes, we'll reassemble for the next technical session.
आ जाओ नीचे, नीचे आ जाओ। ये इसको लीव कर देना, फिर से ज्वाइन कर लूंगी 20 मिनट बाद। लीव मीटिंग आएगा ना, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। Early, 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 early check, one, one.
Ladies and gentlemen, we are soon about to start with the next technical session of the day. I request all the speakers, if there are any changes in your presentation, you may come on the stage and you may make changes on the stage. We have all the presentations here. I request all the speakers, if you think there are any changes in your presentation, you may come on the stage and you may do the needful. Another couple of moments and we will quickly begin with the next technical session of the day. I request everyone to please be seated. And with this, ladies and gentlemen, we are now starting with the 5th technical session overall with the seminar and the 2nd technical session of the day on the topic experience of FDR and green technology. I humbly request everyone to please be seated. We're now ready for the next technical session of the day. And with this, ladies and gentlemen, for the topic experience of FDR and green technology, I humbly welcome the chairman of this technical session to please join us on the stage so that we may proceed now with the next technical session. Ladies and gentlemen, we are ready with the next technical session. I humbly request you to please be seated. Now we're proceeding and I humbly invite on stage the chairman for the next technical session, Shri R.P. Indoria, with a big hand of applause, former Director General, Road Development and Special Secretary to the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways. A very warm welcome, sir. We humbly welcome you for the next technical session. And in this league, ladies and gentlemen, it is a privilege for me to welcome on stage the co-chairman for the next technical session, Shri B.P. Baghel, Chief Engineer, Chhattisgarh, PWD. With a big hand, let's welcome him. And to welcome our dignitaries on stage, I humbly invite Shri Brijesh Kumar Dubey, Chief Engineer, UPRRDA. I request you, sir, to please do the honor. And on behalf of all of us, हमारे अतिथियों का अभिनंदन स्वागत करेंगे हम मंच पर उन लगातार तालियों के साथ. A very warm welcome, sir. And in this league, now I would like to invite on stage the speakers for this technical session. In this league, I firstly invite Mrs. Jyoti C. Kulkarni, Chief Engineer and SQC, PMGSY, Maharashtra. A very warm welcome, ma'am. I also invite on stage Shri S.K. Verma, Officiating Deputy Director General, Border Roads Organization. उन लगातार तालियों के साथ. We also welcome Ms. Anita Kathoria, Chief Engineer, PMGSY, Himachal Pradesh. A very warm welcome, ma'am. And in this league, I also invite on stage Dr. Sunita V., Associate Professor, NIT Trichy, to please join us.
With continuous loud round of applause, ladies and gentlemen, let's welcome all our speakers on stage and our respected chairman and co-chairman for this technical session. And with this, I humbly request our respected chairman for this technical session. Sir, all yours. Please proceed. I request the respected chairman for the technical session, Shri R.P. Indoria ji. Sir, please proceed. A very good afternoon to all present, ladies and gentlemen. This session on experience of FDR and green technologies is very timely, very relevant, because of late, from the days we started road construction, Soling Stones, when I joined as a young assistant executive engineer, there has not been much technological developments in road construction. And it is time that we do it to optimize cost and material, both. As civil engineers, we do have to put scars on the Mother Earth, but let us try to compensate in whatever way and in whatever scale we can do it. And for that, research is paramount. So this session on experience of FDR and green technology, I hope will start a serious brainstorming, and we will come out with concrete outputs, how to minimize the material and optimize the cost in road construction, and also making it efficient and long-serving. With that, I will invite the first speaker, Mrs. Kulkarni, Chief Engineer, SQC and PMGSY Maharashtra. Ma'am, and please stick to the schedule, 20 minutes. 20 minutes. You have 20 minutes for your presentation. Welcome, Ms. Kulkarni. Thank you. Right, we'll go ahead. Excuse me. Yes, start slides. Okay. Yeah. It's not. Thank you. Good morning, everybody. Good afternoon, rather. Actually, I'm thankful to the IRC for providing me this opportunity to present the experience of Maharashtra. Actually, a lot has been spoken yesterday and in the morning session today about the FDR and the stabilizers. So I'll limit myself to presenting only the Maharashtra study, and I'll start with with the glimpses of green technology that Maharashtra is using. These many technologies we are using. I'll just show you over 5,000 kilometers of green technology roads we are constructing. And these are the some glimpses. As in the session yesterday, Honorable Shukla sir had told Maharashtra is constructing over 10,000 kilometers of TWT works. Then we are going for coir technology, geotextiles, then waste plastic, nanotechnology, and fly ash embankments, JGRS, lime stabilization, iron slag. These are the some glimpses basically which technologies we are undertaking. Then we will come to the FDR. As compared to the UPRRDA, where they are speaking about 10,000 kilometers, we have just only 150 kilometers, and we have completed till date 94 kilometers of road.
but our journey started with mistakes or a type of failure. So we had a road in Jalna district where we started with FDR initially, but there were some issues. In there, it was a 10-kilometer long road, and there was 200 thick FDR. So the local villagers, they prepared a video while the laying was ongoing, and Sami layer was laid and BC was being laid freshly. And at that point of time, the villagers came in and they just picked the Sami layer, and the road and this video went viral nationwide, and the discussion started. So this was the condition of that road at that time. The FDR was almost completed, and the BC layer was also completed for almost 6-7 kilometers, and the some part of FDR of around 2.5 kilometer was open. So the NRIDA team and NQM visited the site. They come up with, as they had limited time of a day, so they prescribed that you go ahead with some detailed investigation. So we deputed a team of 2 SQMs. Then we carried out the FWD test to find out whether what is the strength of the FDR. Then we yesterday one of our guest speaker was Professor Dharamveer Singh from IIT. He also visited our site. We invited him. Then our MRRDA team also constantly keep visiting. So I would just bring your attention to some interesting thing. This is the first stretch road that was at the time of complaint, and again we are coming, and this is the road without any rehabilitation after 2 years. So in the due time, we went through many tests and other things, and IIT Powai provided us some guidelines how to rehabilitate and recover. So basically what went wrong while we were doing our FDR was that we initially, definitely, as everybody discussed, there was lack of knowledge and we just undertook the work. Then our site was basically, in earlier days in Maharashtra, we had constructed the roads using under the EGS scheme, where we were using the G1 size material or even larger. Then so technology was not obviously selected properly. Then the insufficient sample collection was there, hardly 1 or 2 samples were collected. The mixed design was very poor. So mixed design was even having the sizes beyond the upper limit and lower limit. So the delay in construction schedule after completion of FDR, actually we had to undertake the further layer, but the Sami layer was not available. There was a provision of membrane Sami layer and it was not available in the market. So we had to wait for 3-4 months, and the traffic passed on. So it further deteriorated the FDR which was constructed. Again, there was another mistake, that the width of Sami layer, when we had to construct a road for 3.75 meter of pavement, the Sami layer was almost kept for 4.05, which was protruding beyond the pavement. So it was very easy to lift it up, and it was a new technology for the villages also. So non-provision of prime code and tag code below and above the Sami layer was another issue, and SOPs even were not observed, which are supposed to be. So in such circumstances, then definitely after this incident, there was a great panic among all of our PIUs, and there was a rush to avoid FDR, and everybody was requesting to change the technology. So NRIDA team and even UP RRDA came to our rescue. We had a training session, and they basically elaborated how to undertake the FDR thing. जब ये हुआ हमारे यहाँ, तो कभी सोचा नहीं था कि कभी 2 साल बाद यहाँ आके बताना पड़ेगा कि हमने आपके सिखाने के बाद क्या किया है. तो इट इज अ स्मॉल ब्योरा ऑल्सो कि जो हमने उसके बाद इम्प्लीमेंट किया है. एंड
definitely with the after the training, the approach was like this panic earlier was replaced by the awareness. So PIUs revisited the site with the awareness. Then the feasibility of FDR was again verified with greater extensive sampling. Again, we had to cancel some sites also. Then technology change was approved by our higher authorities or technical sanction authorities wherever it was necessary in understanding with NRID also. SOPs were imbibed and training were followed in letter and spirit. And finally, we came up with many successful FDRs. So I'll just rush through one FDR work in Latur district, having 250 mm thick FDR. This was the earlier condition of the road before undertaking the FDR work. And then the samplings were taken extensively, the lab tests were taken, and this is before preparation and trade test and cement spreading. Then water, and again we had the commercial stabilizer in all our Maharashtra works also. Then these are the photographs, just as we have gone through these photographs many times, so I am just rushing through. All the necessary test scores were taken out and phenolphthalein test, FDR, and all laboratory tests were undertaken. So after completion of the work, almost for all our works which we are completed generally, the 7 days UCS was 5.55 MPa, 28 days was 6.5 MPa, and durability was or percent weight loss was around 6.45%, residual strength 4.35, and flexural. So all the matching parameters. And then the post FDR work was MSD, so laying of tack coat, then MSV, and again prime coat, and the BC work was, BC layer was laid on it, and this is the final work after completion. On similar lines, we have completed in the district Latur's 2 other works. Then in the district of Kolhapur, we have constructed some works. In district Sangli, these are the completed works. Then in the district of Ahmednagar, we have completed 6 works. And this some letter of appreciation given by NQM for the Ahmednagar works which he visited. In the district of Pune, we also constructed 6 FDR works. In district Solapur, Satara. So almost most of the part of Maharashtra we have covered till date through FDR, and almost in all regions we are undertaking FDR. So now we have, as I said, the panic is replaced by awareness, and now we have some successful case studies at our disposal. So we will, we are looking forward for more FDR work, and with the entertaining, very much brainstorming session yesterday and the morning today, I have some suggestions that, as I said, in Maharashtra also we are using commercial stabilization. So commercial stabilizer. So we will definitely try to undertake the studies on our own also, as Honorable Dr. Sarangi suggested yesterday. And we will also try to construct some length of stretch, trial stretch, which is without commercial stabilizer, and we also want to undertake these studies on our own. Then as Gupta sir said yesterday, that nowadays we are very much focusing on FDR, and we are speaking more on FDR and FDR quality. So at some point of time we are losing the basically our attention to BC. BC is also equally or rather more important as is a wearing course, and in case BC fails, it's the failure may be attributed to the FDR works. So I think that was a very valid point, which is well taken, sir, and we will do it in our works. Then another thing I must point out that
regarding FWD test. Yesterday we were discussing, it was brought out that why we are using foreign literature when we have so much study undertaken in our organizations in India. Why are we planning for the foreign literature? So when we undertook the FWD test in Jalna, I remember the studies were corroborated with the foreign literature. So I would appreciate, rather request the UPRRDA and IRC also that we must, when we have done this much 6,000 kilometers of the FDR work, I would request you, sir, that we undertake FWD test every year for some selected roads so that we will get a database of our own to corroborate the FWD results, so we can arrive at the results at the earliest. And the other thing is, it was discussed again yesterday that we are laying a weak layer on the FDR. Like when we are going to for WBMM or so after FDR. So I think even the results of this laying of weak layer after FDR may also be verified with the use of FWD test, as there might be some roads in UP where you have used cementitious layer. There may be some where you are using WMM. So as per the site condition, so I think IRC and UPRRDA may jointly undertake this venture. Even we can contribute as in Maharashtra, that we can study this data together and we may come up with the larger database where FWD test can be easily corroborated. And then again is in Maharashtra, we were actually earlier, what was the understanding that FDR is the recycling of whatever is existing on the site. So we in our tender documents were not providing for any additional material. That point is definitely made clear now. Because most of our contractor was not willing to come forward for undertaking FDR work, as we were putting the onus of bringing additional material on them within the rate given in the tender bid document. So definitely I think now we will definitely make the necessary changes in our bid document, and our more contractors will definitely come forward, and it is definitely a very good technology. Again, good study can be done, as many contractors have shown that the roads remain safe while inundated. So that documentation also may be done. And I would say on the behalf of Maharashtra that after attending, this was a really brainstorming session and very enlightening session. This all complete 2 days work. And as Honorable Sarangi sir said yesterday, that yesterday's session might be longest in the history, but I think not only longest, very much brainstorming and showing the participation of the audience in this thing, and that also encouraged us, and we are very much now mobilized that all, not only FDR but whatever green technologies I have shown in Maharashtra, we will definitely try to document it. And because we are very much lagging in data collection and documentation of the works, we are definitely doing good works, but we are definitely lagging in documentation and data collection. So my colleagues are also there from Maharashtra, and all other audience, I definitely request, whether they are manufacturers or anybody, we will definitely go ahead with data collection and documentation, and we will definitely finish up our reliance on foreign literature, and we will come up with our own literature for our own works. Thank you. Thank you very much, madam, for being so efficient and respect to time. That was very heartening to note the efforts of Maharashtra PWD. I will now invite Mr. Verma
Deputy Director General BRO to make his presentation. He's going to talk about use of green technology in BRO. ये लेफ्ट के लिए राइट अच्छा नहीं एक स्लाइड नहीं दिखेगी क्या हाँ नहीं एक सिंगल स्लाइड वाला अच्छा वो क्या दिख रहा है वो नेक्स्ट स्लाइड दिख रहा है नहीं यहाँ से नहीं होगा क्या हाँ यहाँ से भी हो जाएगी गुड आफ्टरनून नमस्कार मैं अभी बॉर्डर रोड्स में जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल के बारे में कुछ बात करूंगा लास्ट 1.5 डे में काफी सारे डिस्कशंस एफडीआर के ऊपर में एंड सम पार्ट ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी हमने किया है सो सीक्वेंस ऑफ माय डिस्कशन विल बी फर्स्ट BRO इंट्रोडक्शन। आप में बहुत सारे लोग बॉर्डर रोड्स के बारे में जानते होंगे सुना होगा लेकिन थोड़ा सा मैं बॉर्डर रोड्स के बारे में इसलिए 2 मिनट चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि जो भी हम बात करेंगे आगे या जो मेरा डिस्कशन के पॉइंट्स होंगे वो हम किस इन्वायरमेंट में काम करते हैं उससे बहुत ज्यादा ओरिएंटेड होगा उसकी तरफ। जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो बॉर्डर रोड्स में हमारे दिमाग में सिर्फ ये आता है जो राजस्थान के सैंड ड्यून्स हैं 50 डिग्री का टेम्परेचर है या फिर अचानक से आने वाली कई मीटर ऊंची बाढ़ राजस्थान में जो कभी एक्सपेक्टेड नहीं होती है। 120 साल का रिकॉर्ड तोड़ने वाली बारिश पिछले 2 दिन में जो जम्मू कश्मीर हिमाचल और उत्तराखंड में हुई है और 10 से 12 मीटर की बर्फबारी, उन सारी परिस्थितियों में हम वैसे घिर जाते हैं जैसे हम सभी की सिचुएशन कोविड में हुई थी कि दवा तो बहुत सारी है लेकिन आपदाएं इतनी सारी हैं कि सल्यूशन कौन सा खोजे उस तरफ दिमाग काम नहीं करता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए 2-3 स्लाइड बॉर्डर रोड्स के बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद फिर उन परिस्थितियों में हमने जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में इनिशिएटिव्स लिए हैं विद द गाइडेंस फ्रॉम द एक्सपीरियंस गेन्ड इन वेरियस स्टेट्स फॉरेन कंट्रीज और जो हमारी एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी बहुत सारा ऑपरेशन गाइडेंस और सहयोग मिलता है जिससे हम अपनी जो कार्य करने की प्रणाली है उसको कैसे बेहतर बनाएं उस तरफ प्रयास किया है हमने। और लास्ट में हमने एक नॉर्थ ईस्ट का बहुत ही एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस की एरिया है अरुणाचल की ऑलमोस्ट क्लोज टू इंटरनेशनल बॉर्डर्स, वहां पर हमने CSIR CRRI और टाटा स्टील की मदद से वहां पर हमने ग्रीन टेक्नोलॉजी और वेस्ट यूज में उस स्टील स्लैग का इस्तेमाल किया है, उसके कुछ यहाँ पर जानकारी हम डिस्कस करेंगे। ये आप देख सकते हैं जनरली BRO एक टाइम में अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो राजस्थान या भुज जो कच्छ है वहां से लेकर के ट्रेवलिंग अलोंग दी कंप्लीट गुजरात राजस्थान बॉर्डर, देन JNK, Punjab, Uttarakhand and the all 7 states of northeast region facing all the adverse climatic conditions. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो चेयरमैन होते थे उस समय वो प्रधानमंत्री खुद होते थे। उस समय हमारे कंट्री में जो है वो इंटरनेशनल एग्रेशन, बॉर्डर्स, सेफ्टी के बहुत सारे सीवियर इश्यूज थे। तो भारत सरकार को ऐसा प्रस्ताव उन्होंने रखा कि एक गवर्नमेंट की अपनी एक कंस्ट्रक्शन एजेंसी होनी चाहिए जो पूरी तरह से डिसिप्लिन और यूनिफॉर्म फोर्स हो। उसी के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी और साथ के साथ जो दूर दराज के इलाके हैं, अनकनेक्टेड एरियाज हैं, वहां पर कैसे हम सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ को ले जाएं उसकी तरफ भी इसका उद्देश्य था।
प्राइमरली जो 60s में रेज की गई थी वो डिपार्टमेंटल कंस्ट्रक्शन एजेंसी, सारी मशीनें खुद की होगी, सारी मैन पावर खुद की होगी और अपना काम अपने आप से करेंगे, क्योंकि उस समय वहां पर किसी भी टाइप का जो सिविल सपोर्ट है वह अवेलेबल नहीं था। ना तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स और सप्लायर्स वहां अवेलेबल थे और ना ही किसी तरह की कोई लोकल सपोर्ट या जानकारी उपलब्ध थी। शुरू में क्योंकि ये रोड कंस्ट्रक्शन की एजेंसी थी, इसलिए इसका जो सारा टेक्निकल कंट्रोल है और गाइडलाइंस वो भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय की तरफ से होती थी। और क्योंकि ये रक्षा क्षेत्रों के लिए काम करता था, तो जो इसका प्रशासनिक देखरेख थी वो सारी रक्षा मंत्रालय के पास होती थी और इसके जो कार्यकारी प्रभारी होते थे वो माननीय रक्षा मंत्री होते थे। शुरू में हमने 1960 में 2 परियोजनाएं हमारी स्थापित हुई थी। एक नेफा को देखने के लिए नॉर्थ ईस्ट में जो हेडक्वार्टर तेजपुर में था, जो अभी भी एक अलग नाम से वहां पर स्थापित है, और दूसरा श्रीनगर के अंदर में जो वेस्टर्न बॉर्डर्स को देखने के लिए हुआ था। धीरे धीरे विकास करके प्रगति हुई, संख्या में बढ़ोतरी हुई संगठन के, और इस समय पूरे बॉर्डर में लगभग 18 परियोजनाएं काम कर रही हैं। जनरली कंसेप्ट क्या है? मिक्स मैन पावर है, मिलिट्री, कोर ऑफ इंजीनियर्स, एयरफोर्स, नेवी और भी जो आर्मी के डिफरेंट विंग्स हैं, और अपनी एक इंजीनियरिंग सर्विसेज है, बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू है, और जो हमारा अदर देन ऑफिसर्स कैडर है वो मिशन के थ्रू या कुछ हमारी अपनी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर्स है वहां से आते हैं। चैलेंजिंग कंडीशंस में, अनफेवरेबल क्लाइमेट में और डिफिकल्ट सिचुएशन में, इंक्लूडिंग इंसर्जेंसी ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नक्सल अफेक्टेड एरियाज ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्रा, और जो भी ऐसे डिफिकल्ट और सिचुएशंस वाले क्षेत्र हैं वहां सभी जगह आसानी से काम करती है। सेल्फ कंटेंट डिपार्टमेंट है, जैसा मैंने पहले बताया, अपनी खुद की मैन पावर है, अपने रिसोर्सेज हैं, अपनी खुद की सारा कुछ सप्लाई चेन है, जिसके लिए किसी भी परिस्थिति में कहीं भी रिसोर्सेज सब ज्यादा पंप करने के लिए तैयार रहते हैं और किसी भी तरह का काम करने के लिए सरकार और सेनाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इनबिल्ट कैपेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में किसी भी ऑपरेशनल या आपदाजनक परिस्थितियों के लिए हमारे रिसोर्सेज कभी भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए सेल्फ सफिशिएंट है। अपने खुद के कम्युनिकेशन मशीनरी कहीं भी किसी भी समय, सिर्फ जो मिनिमम ट्रेवल टाइम चाहिए, इवन वी आर कैपेबल ऑफ इंजेक्टिंग द रिसोर्सेज थ्रू एयर सपोर्ट, हेलीकॉप्टर्स और हवाई जहाज से भी जो हमारी मशीनरी है और मैन पावर है वो किसी भी क्षेत्र में देश के या दुनिया के पहुंचाई जा सकती है। ये कुछ जनरल लोकेशंस हैं जहां पर बॉर्डर रोड्स काम करती है। जनरली शुरू में जैसे मैंने बताया सारा काम हम डिपार्टमेंटल करते थे, अभी हमने ईपीसी मोड भी काम शुरू कर दिया है और बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं एक डिपार्टमेंट की फ्लेवर देना चाहता था जिससे हमारे डिस्कशन को थोड़ा सा बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर सकेंगे आप। ये हमारे कुछ वर्किंग एरियाज हैं, रोड्स के ऊपर हम काम करते हैं। जनरली आर्मी रोड्स होती हैं, मोर्टीएज की रोड्स होती हैं, और जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जहां पर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं वहां पर काम करते हैं। ब्रिज बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं, एयरफील्ड बनाते हैं, और मैरीन स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग अंडमान निकोबार में भी हम बना रहे हैं। और मोस्टली ये सारे काम करने के लिए हम संपूर्ण रूप से स्वतः सक्षम हैं, लेकिन जहां भी हमारा जो कैपेसिटी है उससे लोड बढ़ता है वहां पर हम कैपेबल कॉन्ट्रैक्टर्स जो वहां काम करने के इच्छुक होते हैं वो लोग आते हैं हमारे साथ काम करने के लिए। ये कुछ टनल्स हैं जो अक्रॉस दी बॉर्डर अभी पिछले लगभग 16-17 साल में बॉर्डर रोड्स ने कंप्लीट की हैं, जिनमें दुनिया की सबसे ऊंची जो अटल टनल है वो भी एक है। अभी जो हम रिसेंटली काम कर रहे हैं सिनकुन्ना टनल है, लगभग 4.25 किलोमीटर की, और न्यूमा में एयरफील्ड है। आर्मी के लिए बहुत सारे जो कैवरन्स वगैरह हैं, और एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट रोड है जो लेह को मनाली से जोड़ने का अल्टरनेट रूट है, वो भी लगभग कनेक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे जो चैलेंजेस है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमारा जो नॉर्दर्न बॉर्डर है वो मोस्टली बर्फ से ढका रहता है, और मई से जून के महीने में वहां पर खुलता है और नवंबर में दोबारा से बर्फ गिर जाती है, तो लगभग 5 से 6 महीने उन परिस्थितियों में काम करते हैं।
ईस्टर्न सेक्टर में मोस्टली मार्च अप्रैल से लेकर के जुलाई अगस्त तक बारिश रहती है, वहाँ भी 4-5 महीने डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट चैलेंजेस हैं। अभी हम अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो हमारे पर्सपेक्टिव से, जो बॉर्डर रोड के पर्सपेक्टिव से हम ग्रीन टेक्नोलॉजी को देखते हैं, उसकी जो परिभाषा है उसको जिन मापदंडों में हम देखते हैं, टू रिड्यूस फ्रेश नेचुरल एग्रीगेट्स डिमांड, क्योंकि वहां पर जो एग्रीगेट्स की अवेलेबिलिटी है बहुत स्केर्स होती है, कहीं भी हम बड़ी क्वेरी ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं। एक जगह में जैसे हमको घाट्स में या प्लेन एरियाज में जो हमारे हैं वेस्टर्न घाट्स, वहां पर हमको एबंडेंस एग्रीगेट अवेलेबल होते हैं। हिमालयाज में जनरली ना तो क्वेरीज होती हैं और ना ही एक जगह बहुत एक तरह के आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिल पाते हैं। तो जो भी हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है उसमें जो गैप होता है, जो हमको इजिली अवेलेबल है और जो नहीं मिल पाते हैं, उस गैप को भरने के लिए फिर हम ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद लेते हैं। इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना होता है, क्योंकि जहां भी हम काम कर रहे हैं वो सारे के सारे मोस्ट इको सेंसिटिव एरियाज हैं। रेयर स्पीसीज पेड़ों की होती हैं और जो एनिमल्स है उनके रेयर स्पीसीज होती हैं। जो वेस्ट है और मक है उसके डिस्पोजल की वहां पर कोई जगह नहीं होती है। बहुत ही सिलेक्टेड वेस्ट और मक हम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि या तो पहाड़ है या नदियां है। अगर पहाड़ काटेंगे तो नदी में जाएगा, तो दोनों चीजें जो है इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है। तो कम से कम वेस्ट और मक जनरेट हो, उसके लिए भी हमको बहुत ही एडवांस टाइप की जो टेक्नोलॉजी है जिसमें कम से कम वेस्ट जनरेट हो, उस तरह के जो प्रोसेस है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। फास्टर पेस, क्योंकि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट होती है, टाइम बहुत लिमिटेड होता है और जो वर्किंग पीरियड है वो साल में बहुत ही कम 3-4 महीने का मिलता है। उतने समय में ही हमको जो निर्धारित लक्ष्य हैं वो पूरे करने होते हैं। यूज ऑफ लोकल एंड मार्जिनल मटेरियल, डिस्टेंसेज लॉजिस्टिक चैलेंज इतने ज्यादा है कि दूर से मटेरियल ले जाना संभव नहीं होता है। तो जो भी लोकली अवेलेबल मटेरियल है उनको इस्तेमाल करने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी बहुत ही मददगार साबित होती है। इकोनॉमी ऑफ कोर्स सभी ने उसके बारे में डिस्कस किया है। जो लोकल वेस्ट होते हैं, जैसे कुछ वक्ता और जो हमारे अतिथि लोग थे उन्होंने इस बारे में बात किया था कि पहाड़ों में आजकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। लोकल वेस्ट जनरेट होता है, उसका डिस्पोजल का बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं हो पाता है। तो जो हमारे वहाँ पर वर्कफोर्स होती है वो लोग उन वेस्ट मटेरियल्स को एकत्र करके लोकल लोगों के साथ और उसका किस तरह से बेहतर इस्तेमाल हो सके, वो हमारे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, CRRI, IITs है, उनकी मदद से हमने काफी उसको इस्तेमाल किया है, जिससे कि वहाँ के इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने में सुविधा होती है और लोगों का जो रखरखाव है और रहने की स्थितियां हैं वो भी बेहतर होती हैं। रिड्यूस फ्यूल एंड एनर्जी डिमांड, एवरीबडी नोज, सबने आपने इसके बारे में बात करी है, तो सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू अस आल्सो। अल्टरनेट मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी फॉर डिफरेंट क्लाइमेट्स, जैसे मैंने बात किया एक ही समय में हम रेगिस्तान, बाढ़ और पहाड़ों में बर्फ में काम करते हैं, तो हर एरिया के लिए एक एरिया में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो दूसरे एरिया में लागू नहीं होती है। और हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो स्टाफ है, उनको 2 साल 3 साल में एक जगह से दूसरी जगह जाने पड़ता रहता है। इसके लिए हमको हर एक तरह की टेक्नोलॉजी समझनी होती है, हर तरह के इंस्टीट्यूशन से लिंक रखना पड़ता है और उससे समझ करके हम उस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। एडवांस मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस, इसीलिए मैंने BRO की जो स्लाइड्स दिखाई थी कि हमारे जो इन्वायरमेंटल और जियोलॉजिकल चैलेंजेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरह के हैं। उसके लिए हर एक जगह हमको एक कुछ ना कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती रहती है, तो जिसके लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैसिलिटेट कंस्ट्रक्शन इन रिवर्स वेदर कंडीशन, इट इज पार्ट ऑफ दैट ओनली। ग्रीन टेक्नोलॉजी में क्या क्या हमने यूज किया, स्टेबलाइज्ड बेसिस, सब बेसिस यूज किए हैं। कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल करी है हाई एल्टीट्यूड एरियाज में। रिसाइकल्ड रबर यूज करी है बहुत सारे बर्फ वाले इलाकों में, लो स्ट्रेंथ वाले इलाकों में। वार्म मिक्स टेक्नोलॉजी हमने CRRI की मदद से काफी बर्फ वाले इलाकों में इस्तेमाल करी है। रीइंफोर्स अर्थ वाल्स, क्योंकि वहां पर हमारे को काम करने के लिए बहुत चौड़ाई नहीं मिल पाती है, तो RE वाल्स हमारे लिए एक अच्छा ग्रीन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस रही हैं, जिनमें जो रिटेनिंग वॉल्स के बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते थे वो बहुत थिन स्ट्रक्चर्स हो गए हैं, और जो हमको चौड़ी जगह प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पहाड़ काटने पड़ते थे, तो वो नहीं काटने पड़ते हैं। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ द ग्रीन टेक्नोलॉजी। हिल स्लोप इंस्टॉलेशन टू रिड्यूस रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स, जब भी हमारी पहाड़ियां खिसकती हैं तो पहले के जमाने में हम लोग ज्यादातर क्या करते थे, उसमें दीवारें बनाते थे, या तो फ्लेक्सिबल वॉल्स क्रेक वॉल की बनाते थे, या फिर मशीनरी या RCC की वॉल्स बनाते थे। आजकल उसकी जगह हमने जो है बड़े स्लोप्स हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा है और
उनमें जो मग है बहुत ज्यादा जनरेट होता है, उनको जो लियोन एंकर है छोड़ उनकी दो, सहायता से डिफरेंट टाइप के इन्हें कुछ एंकर्स भी यूज मत करते करो, हैं, हाई स्ट्रेंथ नेटेड यूज करते हैं, तीनों मत जियोमैट्स यूज घिसना, करते हैं। ज्यादा हो जाएगी। इनको यूज करके हम 2 धीरे घिस धीरे उन दो, पहाड़ों 1 को छोड़ दो। स्टेबलाइज कर रहे हैं, जिससे कि वो जो पहाड़ों को स्लाइड की वजह से डिवास्टेशन होता है, इन्वायरमेंट को डैमेज होता है, वो ना हो। और और साथ में उसमें हमको एक जो गाजर रिटेनिंग घिसोगी, स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए गाजर रखी पहाड़ हुई है काट 2। के उसकी फाउंडेशन की जगह तैयार करनी है, उसके लिए मटेरियल्स लेने हैं, उस सब की भी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो ये भी टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी साबित हो रही है। जूट जियो टेक्सटाइल भी इसी का एक पार्ट है। अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट अभी हम IIT दिल्ली की मदद से इसके ऊपर ट्रायल कर रहे हैं और इस्तेमाल में ला रहे हैं, खासकर जो पुलों के गर्डर्स हैं उनके निर्माण में। इससे क्या होता है, जो पुलों की कंक्रीट रिक्वायरमेंट है वो काफी कम हो जाती है, और क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा जो है लैब मतलब फैक्ट्री कास्टेड होंगे, तो इससे थोड़ी स्पीड भी बढ़ेगी। वेस्ट प्लास्टिक इन बिटुमिनस लेयर्स ऑलरेडी मैंने इसको कवर किया है, लोकल वेस्ट मटेरियल को यूज करके थिन व्हाइट टॉपिंग भी कहीं कहीं हम कर रहे हैं। स्कावर डेप्थ के ऊपर में बॉर्डर रोड ने लगभग पिछले 20 से 25 साल में IRC, IIT रुड़की और CRRI की IIT रुड़की और IRC की मदद से बहुत पिछले 20 साल में इसके ऊपर रिसर्च करी, क्योंकि हमारी जो स्कावर डेप्थ फूलों के फाउंडेशन के फार्मूले थे वो सब लेसी कैनेडी ब्रिटिशर्स पीरियड के थे, जो कि सिल्टी और सैंडी सॉइल्स के लिए थे। बॉर्डर रोड जिस एरिया में काम करता है वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़ी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजी होती है। हमारा जो भी एक्सपीरियंस था वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ हमने शेयर किया, और IRC की मदद से जो स्कावर डेप्थ थी उसमें काफी सारा रिडक्शन हुआ है। उससे क्या है कि हमको जो गहरी फाउंडेशन खोदते थे उसकी वजह से जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज होते थे वो कम हुए हैं, इंटर्न डेप्थ रिड्यूस हुई है, तो कॉस्ट भी काफी कम हुई है। बम्बू क्रैश बैरियर्स जैसे कल सर ने बात किया था, ट्रायल करने चाहिए। हमने नॉर्थ ईस्ट में काफी ट्रायल किए हैं, जहाँ पर लो ट्रैफिक है, हैवी ट्रैफिक नहीं जाता, वहाँ ये काफी सक्सेसफुल होते हैं। बम्बू लोकली नॉर्थ ईस्ट में काफी अच्छा मिल जाता है। प्रीकास्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर्स सबने इसके बारे में बात करी है। बॉर्डर रोड्स में भी जो कलवर्ट्स, वॉल, ड्रेन्स है, वहां पर जो लॉजिस्टिक के हिसाब से पॉसिबल है वो सारे हम कर रहे हैं। FDR भी हम सब बेस और बेस में यूज कर रहे हैं। सिम्फर जो हमारी इंस्टीट्यूशन माइंस एंड फ्यूल रिसर्च सेंटर है, उनका हमारे साथ साइंटिस्ट के रेगुलर कोलैबोरेशन रहता है, और हम समय समय पर उनकी सहायता से हाउ टू यूज कंट्रोल ब्लास्टिंग, उसको कम से कम डिवास्टेटिंग कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद में जैसे शुरू में मैंने बात किया कि या पिछले 2 दिन से वी आर टॉकिंग अबाउट द मेडिसिन, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि जब आप बीमार होते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्टर्स। एक ये बोलेगा आपको एंटीबायोटिक खा लो और घूमो, शिमला में आइसक्रीम खाओ। दूसरा ये बोलेगा नहीं, दवा खा लो, घर में आराम करना, गर्म पानी पीना। तो हम जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं इतना इको सेंसिटिव है, तो हमको वहां पर दवा के साथ साथ प्रिकॉशंस भी बहुत ज्यादा लेनी पड़ती हैं। तो इसके बारे में मैंने कुछ जिक्र किया है जो शायद आप लोगों को कहीं रिलेवेंस लगे तो काम में आ सकते हैं। सिलेक्टेड एंड रिस्ट्रिक्टेड रिवर बेड क्वेरिंग इन ड्रेजिंग एरियाज। पहाड़ों में क्या होता है कि रिवर जो होती है पहाड़ों में बहुत स्लोप होता है, जब फुटहिल्स में जाती है तो वहां पर सिल्टिंग होने लगती है, तो बहुत जगह फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को ड्रेजिंग करनी पड़ती है। तो हमको वो एरिया सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि ताकि उनकी रिवर की ड्रेजिंग भी हो जाए और वहां से हमको क्वेरिंग मटेरियल मिल जाए। तो इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ द ग्रीन टेक्नोलॉजी, कि हम नेचर को हार्म करने की बजाय उसको नेचर को फायदा पहुंचा करके और हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अवॉइड हिल क्वेरीज, जब हम पहाड़ को नहीं काटेंगे नेचुरली इट विल सपोर्ट टू दी avoid the damage of the environment. Coordination with local flood control department, irrigation, fishery, local village councils for use of formation cut and fill material. जैसे जब हमारे पास मटेरियल एक्सेस होता है तो हम फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को दे देते हैं उनको बंद और बैराज बनाने के लिए, या कहीं पर जो फिशरी है, जो पॉन्ड के लोकल डिपार्टमेंट है उनको तालाब बनाने की जरूरत होती है, तो उन सब जगहों को हम आइडेंटिफाई करके DPR स्टेज में ही गांव वालों की मदद से, जो फिशरी डिपार्टमेंट है उनकी मदद से हम उन्हीं सिलेक्टेड एरियाज से वहां पर मिट्टी उठाते हैं। जिससे क्या होता है कि दोनों चीजें होती है, डेवलपमेंट हो रहा है लोकल एरिया का, और दूसरा हम उस कंस्ट्रक्शन के लिए दूसरी जगह कहीं डाइवर्स नहीं कर रहे हैं। इज आल्सो सपोर्टिंग इन दोज एरियाज बिग फॉर द ग्रीन टेक्नोलॉजी। लोकेशन एंड प्लांट्स जो हम क्वेरीज के और अपने मिक्सिंग प्लांट्स यूज करते हैं उनको इस तरह से करते हैं कि कम से कम लॉजिस्टिक चैलेंजेज आए, जिससे फ्यूल कंजम्पशन कम हो। 2 और minutes, हमारी Mr. Verma. 2 minutes. एंड हमारे जो भी लॉजिस्टिक है या हमारे जो मशीनरी यूज हो रहे डंपर्स है, अगर हम ये हमेशा इंश्योर करें कि हमारी जो ट्रक है जो मटेरियल को कैरी करते हैं किसी भी डायरेक्शन में जाते हुए खाली ना जाएं, एंड इट कैन बी
coordinated very well with a little bit improved planning. कि जब आपकी गाड़ी इधर से कुछ लेके जा रही तो आप वापस आए तो कुछ भर के आए. That way you will reduce the fuel consumption and save the environment and reduce the carbon by 50%. Long and span bridges. जब हम छोटे ब्रिज बनाते हैं तो रिवर के अंदर में काफी सारा हम रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर देते हैं, उसके बैंक्स को खोद डालते हैं. अगर हम उसको बड़े ब्रिज बनाएंगे तो हमारी फाउंडेशन डेप्थ कम होगी और रिवर में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करेंगे, जिससे सेकंड नेचर को डैमेजेस नहीं होंगे. While foundations and micro foundations are also using to avoid the huge excavation in the open foundations. Testing and research center, we have got our own R&D centers at Ceylon, Eastern and Western Laboratory, regular training, and the MOU with various agencies. Certain photograph of use of green technology, plastic, stabilized base, sub-base, controlled blasting with the SIMFAR, the stabilized layers, use of precast elements, and the stabilized layers. White topping, slag, already हमने बात किया है कि हमने इसको अरुणाचल के एरिया में यूज किया है. I just run through 60 metric ton steel was transported with the help of Tata Steel from Jamshedpur to the northern borders all around almost 1300 kilometers. The work has been completed successfully in 2023 and the stage is under observation. Complete details are given in the presentation, can be referred by the interested people. And I just last show the present state of the site. This is the present state of the road. Till now it is behaving very well and we are hopeful that this technology will prove of very good use to border roads in the heavy rainfall and remote areas. Thank you and Jai Hind. And thanks for patient sharing. Thank you very much, Mr. Verma. We all know the difficult circumstances and conditions the BRO works in, but this exposure was really eye-opening. Thank you, Mr. Verma. Now, I will request Ms. Anita Kathuria from Himachal Pradesh. She is going to share her experiences of full depth reclamation technology for roads in Himachal Pradesh. Ms. Kathuria. ठीक है, फॉरवर्ड ही करेंगे ना. और नहीं, वो वीडियोस के लिए लेके आ जाएंगे, आप देख लेना. दाल कभी एंट्रीज में निकल ही नहीं है, उससे नहीं निकल. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आप सब सॉरी, गुड आफ्टरनून. आप सबको मेरा नमस्कार. Today I am going to share the experience of full depth reclamation FDR technology for road construction in Himachal Pradesh. पिछले कल से हम FDR टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी कुछ सुनते आ रहे हैं. मैं आपसे हिमाचल प्रदेश का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी. PMJSY is being successfully implemented in the state of Himachal Pradesh under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Sukhvinder Singh Sukhu and young dynamic Public Works Minister Shri Vikramaditya Singh. Secretary PWD is head of our team with the officers and officials, and Public Works team is headed by CEO Engineer-in-Chief Shri Narendra Pal Singh. This is the experience of HP State with FDR technology. On 24th May 2022, some international conference on new technology was organized by the NAREDA MORD New Delhi. After the conference, when this new technology was discussed with the local and field engineers, no one was convinced to opt. There were several arguments, and it's fact that the change को opt करना इतना easy नहीं होता. Stakeholders have given arguments that we are familiar with other green technology like cold mix, bioengineering, तो इस तरफ को क्यों जाना? No doubts, there were so many points raised, how to prepare the DPR, who will prepare the DPR, and after that, department has empaneled DPR consultants.
because MORD has not released the vision document 2020 of new technology, but also emphasized to follow same in the next proposal. So in order to switch over to this technology, details were deliberated and discussed among the stakeholders. After that, a workshop was organized at Shimla to sensitize our engineers regarding this technology by MORD during May 2023. All this technology, and our engineers from junior engineer to senior level attended the workshop, and our consultant, DPR consultant, and contractors also. After that process, preparation of DPR starts, and we have prepared 110 DPRs out of 294 and placed before Government of India for its approval. Now, next issue was the contractors. As our local contractors, they don't know, they don't have the machinery and experience to execute these works. VCs were conducted and outside contractors were invited for the were invited to participate in our bidding process. We are very grateful to UPRRDA. The state has helped us, guide us at every step for preparation of DPR to bid document. Outside contractors were not ready to execute the work because HP is a hilly state and the works amounting to 5 crore. No one is interested. The area is scattered and it is not viable to use such costly machines from and to move such costly machines from one place to another. So the idea of clubbing 2 to 3 packages among and finally was done. And it was done and it has been put to the knowledge of Honorable Chief Minister by our Secretary PW and Honorable PWD Minister. And they has allowed us to allow clubbing of these packages in October 2023. Again, queries were raised. If all contractors from other states will come out, how the local contractors will get the work, how they will learn. Then Honorable CM suggested to change the bid document and allow the joint venture so that local contractors can also participate in the tendering process. Accordingly, provision was incorporated with the permission of MORD and bidding process start. After that, exposure visits was done to our junior engineer up to senior level and handhold trainings were done. Project Management Unit, PMU, was appointed in December 2023 with 4 team members for all the zones for overseeing the project's bidding process, tendering, execution, monitoring progress, and ensuring quality. In this way, the whole process took a lot of time to take everyone on the board, right from the planner to executor and stakeholders of road infrastructure. Himachal Pradesh Public Works Department is responsible for the implementation of the PMJSY work in the state. In PMJSY 3, there is a proposal of 3123 kilometer road sanctioned. Out of 3123 kilometer road, 1150 kilometer is under construction with this new technology by using FDR and CTB. And our state is divided into 4 zones, Shimla, Mandi, Kangra, and Hamirpur. And this is the detail of FDR and CTB length in kilometer. We are constructing total 1150 kilometer in these technologies. Now, execution process. The local representatives, they were informed and sensitized about this new technology through widespread publicity in the newspaper. Because, you know, everyone said that कि PWD क्या कर रहा है, सड़कों को खोद रहा है, फिर सड़क बना रहा है, तो everyone was confused. So it is very essential to sensitize them कि what is this technology. The benefit of the technology
was shared with the political institutions and local stakeholders. And this is the execution process. I think Chief Engineer UPRRDA has explained yesterday all this. घर में रहते हैं। When the JFM scrutiny was done, our CEO, Chief Engineer ENC, has suggested that it is a quality matter. So we should perform a team for scrutiny of JMF. The team headed by ENC and with a member of Zonal Chief Engineer, myself as Chief Engineer Chief Engineer PNJSY, our XCN, our SQC, and PMU as a member secretary was taken to scrutinize all the JMF. This is in inclusion of SAMI layer. We have detailed discussed all these things. I think I mean to say that Chief Engineer UPRRDA has discussed all things yesterday in detail. This is zone-wise progress of FDR and CT work. We have completed 413 kilometers of FDR bed completed and 212 kilometers BC laid on these beds till date. This is execution process of FDR. Everyone is well aware how to do the FDR execution process. I don't think it is need to explain. Recycling, grading, compaction with semi-layer laying, BC layer laying. Sharing experience with the team of Chhattisgarh and Punjab. Both state teams, they visited our place at Kangra zone and Mandi zone, and we have shared our experience with these teams. क्या ये क्या है? Oil. Work at site before and after. Now, outcome of the technology is it is a reduction in the construction cost by 20 to 30% as compared to traditional technology. It is eco-friendly because it is green technology with use of existing pavement material, minimize the waste and reduces the carbon footprint. Improve the riding quality. No doubt, riding quality of our FDR beds are very good. We have got a strong stabilized base leading to better riding quality and longevity. Reduce the construction time because everything is mechanized, construction time reduced. And minimum use of additional material. It minimizes the outside granular material. These are some gleams of road construction. ये हिमाचल में जो हमारे कुछ काम हो रहे हैं उनकी कुछ झलकियां हैं सर. At the end, I just want to conclude. It is the best economic effect of technology because it is cheaper. This is reuse, rehabilitation method, involves recycling of the existing distressed bituminous layer of an existing asphalt. The pulverized material is uniformly mixed with the additional stabilizer. Less time of execution, less depending on mineral material, eco-friendly as compared to traditional. In conclusion, this technology has given game-changing effect for HPPWD, very fast in execution with the good riding quality. Thank you, sir. Thank you very much, Ms. Kateria. That was a very good insight in the efforts of Himachal Pradesh PWD for development of rural roads. Thank you very much, Ms. Kateria. Now, can I invite Professor Dr. Sunita of IIT Trichy. She is going to talk about the use of Quaz geotextile as green technology for the construction of rural roads. Dr. Sunita, please. Good afternoon to all. So I'm Dr. Sunita. I'm from NIT Trichy. Adding to that, NIT Trichy or Tiruchirappalli is also the state technical agency for Tamil Nadu and Puducherry. And
And I am the current coordinator of STA. And here, so from at last day onwards, we were into like FDR and some waste materials. To treat you in at another level, I'll be talking on coir geotextiles as one of the green technologies for rural roads. It can be implemented to other roads too well. See, there were a lot of discussions and all in the last day and today. Even we are talking about the technology, there are so many like challenges either in adopting, and I do hear like whether if you have a technology, whether we are ready to implement that, at whether the roads will be sanctioned, and a lot of challenges and questions will be raised from the other end also. This can be like lack of knowledge or on adopting the new technology. It might be that product might be new, and because of the fear of failures and experienced labor or machineries availability, lot of other like challenges are there. Even though a lot of challenges are there, there's a need to popularize this innovative techniques, especially there's one of the technologies coir and jute, because the coir is abundantly available in southern part of India. It is compared to jute in north or northeast. So there are so many technology options available. So I'll be concentrating on coir fiber. See, 70% of the world coir production is in India. So we should think of using this natural product do well. So coir in many forms it can be used. So my talk or our research is constrained to use in this mat, coir mat. ये कर लेते हैं अपने There are like grade 1, 2 and 3. And grade 1 is what we have taken for our research is 400 GSM, grade 2 700 and grade 3 with 900 GSM. As the grade increases, you can see the niche size also will change accordingly. The cost also will vary. And this roughly on the specification of the coir geotextiles. So there are so many functions of coir geotextiles or geotextiles as too. But here I'll be stressing on the function of reinforcement. And I should actually, this is a journey. What I'm telling is a journey. What our research of coir geotextiles, along with some of the institutions and coir board. And it is obviously like many institutions and NRRDA and IRC, we developed a code for coir geotextiles. And to begin our project, it has been implemented earlier in 4 roads in Tamil Nadu. And I should thank the Tamil Nadu Rural Development Department and like the Chief Engineer Kuthalinga sir is here. They all were very much enthusiastic and readily accepted to lay it on the PMJSI roads, even though it was very new at that time. So when we begin most of our like the subbase, it was a sand gravel mix. So at that time, we have tried using this coir geotextile at various depth of subbase also. But now we have mostly we are using granular subbase. So it when it was sand gravel mix, we tried using at the various depth of this coir subbase do, and obviously above the subgrade and subbase interface also. And H2, M5, M6 and M8 were tried. M8 were restrained into limited because of the cost of H2 M8 M8 is high.
And all these sections were 0.25 kilometer test sections were there along with the control sections. Yesterday also somebody was mentioning it should be compared with the control section. Yes, definitely it should be compared with the it is control section. These all are trial sections at various depth and with various type of wire geotextiles. These some of the photographs where we have taken just while executing this. This is a finished subgrade and field density testing. Okay, the testing of the existing subgrade or existing material is important. Then fixing of the geotextiles, because this geotextiles it will be available in mat and the width is 2 meters. So it has to be tied or laid, and we have this geotextiles. It should be tied either with wooden pegs. Later we have it is used other methods of tying also. And early one, this is a fixing of third geotextiles, and this is H2M8, and this is a finished road. And this we have implemented in many of the roads. It's not only implementing the engineers should be given training, and we have conducted many workshops and seminars. Along with that, the best part is we have also had the field visit, where we have given the hands-on training to all the artist engineers you can see. So they were also part of this project while executing. And these are some photographs. And in this figure, you can see it's more the soil is very weak, and apart from that, the height of the road is also very less. Even in this problematic challenges also we have used. And here in this road, you can see on the sides, you can see it's a water body or one channel it was there. And these are some of the photographs. I'm just keeping this. See, this it's not only like laid in the field. We have done the laboratory test and field test too well. And these are some of the promising results from the laboratory and field test. I'll just go back to this. This is the pavement condition rating. This one, this photograph you can see. The first section is control section, and we have compared with rest of the section with H2, M5, M6 and H2. So whatever you could see in green is how it's been improved from the control section. Orange, otherwise in control section also it's not there, and not there in the square geotextiles also. So from this, the observations are we could get that H2M8 is giving when the grade of the coir geotextile is small, it's giving more the percentage improvement is more. And with this experience, we didn't restrain with that. We have again implemented in 18 other roads. Now, as I mentioned, we have granular subbase. These all are trial sections. We doesn't have a code or anything at that time. And whatever you could see on the first, this is the control section, control section. And we have tried this coir section 1 and 2 based on either like reducing, adding the coir geotextile, and we have tried reducing the granular subbase layer, or like WBM one layer or its thickness, and reducing the sand soiling. We have tried for various traffic and the CBR value. And these are the list of steady roads. So these are some of the pictures showing the test track. In the first one, you can see the control section is there. Control section where it is as per the guidelines it's given. And coir section 1 and 2, and you could see in the figure like in coir section 1, we have reduced the granular subbase. Instead of 125 in control section, in coir section 1, only 100 is there for granular subbase. And in coir section 2,
Sand soiling is required in control section. The availability of sand is also a question, and it is a lot of challenges are there. With that, we try to avoid the sand soiling and provided if the all the square section 1 and 2, the square mat is provided above either the sand soiling or above the subgrade. And this is provided for all the sections, and the 6 meter and 8 meter also it has been laid, it is extended to the shoulder also. With two types of coir geotextile, and these are some other sections where you can see either it is reducing the granular subbase, or in coir section 2 even the granular subbase itself is not there. These are trial section. Some you could see here, the first figure is without square geotextiles, and the square geotextile or the square reinforced sections are performing well. And adding to that, these are some couple of results from the field studies what we have taken. That S1 indicates the control section, and S2, S3, all the sections are various trials what we are conducted with for geotextiles. In all these, we can see the performance either it is in par or it is increasing. In some sections, we have seen the performance is not as in the control section. What we had observed is when we are completely removing that like granular subbase layer, it's not performing. So in rest of the sections, we have either it should be reduced, not to remove the entire sections. And this is roughness measurement. And in this, you can see the enhanced, the square geotextile contributed or improved the performance. That's with the enhanced drainage properties and increased increased load distribution factor 2. And structural performance also have been studied with deflection studies. And you can see the sections, the coir sections outperform, but you can see some in S8 and all, there is a slight increase in the deflection. This increase, as I mentioned, where if you are just removing the granular subbase layer fully, then it's not performing. So it is advised not to remove it fully, can reduce the thickness. These are the experiments set up. So how to bring it to the designs? For design, the two important parameter, what is important is the elastic modulus and the Poisson's ratio. So when you are including the square geotextile, how the elastic modulus varies. So there are many tests which we have conducted in the laboratory. So we thought it's not enough to do it in the laboratory itself, because field test is very much important, because the field conditions, there are a lot of challenges they are facing. So with that, we had many field tests also have been conducted to find the improved modulus for the coir geotextile, so that it can be included in the design too. Because all this we have done a trial. So how to make it into a model provisions? So that there are various tests where we can do the elastic modulus test, like GeoGauge, then dynamic cone penetration field CBR test. And this is from static plate load test results. As we can see here, the modulus improvement factor obtained from the field test is given. This has been separately done for CG-T1, CG-T2, where like 700 and 400 GSM coir geotextiles. And various field tests after this has been conducted after 3 years of construction. And it's a coir, it's not, it's a degradable material. So its long-term performance is also important. And this is a comparison of laboratory. How will you compare our like laboratory test with the field test? And we have it is done for 400 and 700 GSM. With that, it's found that so at whatever given in the table is the field modified improvement factor. How? So when you have the control section and how the elastic modulus will improve.
So this is a typical section of the pavement composition. So rest of the design code, even though we have tried in many artist depth of layers, what the code artist codal provision is only when the geotextile is provided above the subgrade. That's between the subgrade and subbase. This design, somebody who is interested, academic persons who is interested in design can do well. I've given an example also how we had incorporated. I'm just skipping this in. So what we have actually done is, this is the IRC SP72 template, no? All based on the traffic and CBR, we'll take in the section, a typical section is given. So when you have this section, if you are implementing the square at a square geotextile, how much we can reduce the granular subbase, and we have restrained the this reduction only in granular subbase, not on the base, but anybody can try like reducing the base thickness too, and how whether our stresses and strain values are within the limit by incorporating the at a square geotextiles and reducing the granular subbase. And there is a limit for reduction of the per geotextile, which we have done by doing the analysis in IIT Pave software. Some example I have given. After all this analysis, field test, everything, our final contribution, I could tell that is these two templates. What? Because we have done the trial. We can't ask anybody to, okay, whatever that is per geotextile to all this set of experiments. Instead, based on our observations, we have developed a template based on the traffic and the CBR value. Now it is, you are able to adopt a section that is based on this. If you know the CBR value and which is the type of that is square geotextile and the traffic, the template can be adopted, the sections can be adopted based on this template. And this has been incorporated in IRC SP's 129, which is the guidelines for the design and construction of roads using square geotextiles. And whatever the template, this current template is for 700 GSM. And because when you're using 700 and 400 GSM, the thickness reduction is different. So you have to be very much particular which type of square geotextile you're using for which type of road and what's the traffic in that. And this is the template we have developed for this 400 GSM. These two templates is there in the IRC SP 129. And yesterday and today we were talking on like a reduction in cost and all. I do feel like some reduction will be there if you're using square geotextile, but may not be for all the types of squares and for all the types of roads. It will definitely depending on the type of this road as well. Because what is a CBR value 2 and a soil with CBR 6 also, it's not same. Some roads we are having cost to reduce the cost, but I do feel in like adding to the cost like reduction, that's obviously it's important. Apart from that, how the road is performing. If a road is able to perform ahead of 2 or 3 years more, that also is a benefit to us. So we should also think in that aspect that not only considering the initial cost reduction, how well it can perform as compared to the control section. This typically shows how the thickness is reduced. As I mentioned, the cost is there for the square geotextile. So in some sections only it is there. And these are some of the sections. 2 minutes, madam. Yeah, thank you. Yes, sir. I'll wind it. So it's a picture showing the construction of square geotextile reinforced road. Testing is very important before laying. And this square geotextile overlapping is very important. And this IRC SP 129 also here the method of laying the square and what are the do's and don'ts with the square geotextile is also been is given here. And this is the final outcome. This IRC SP 129, it's been published in 2022 with the guidelines for the design and construction of roads roads using square geotextiles. I do feel that
even though this lecture we are at is concentrating much on FDR, we should think of implementing this natural artist materials which is available, like our artist government is also supporting that it's a natural artist material, but there are some flaws in it. It's a degrading material, and I do feel like artists, lot of technology providers are here. They can also come up with some technology or some method where we can use their technology with the square at a geotextiles do and can improve its life also. And with this, thank you all for giving me this opportunity. Thank you, Dr. Sunita. This was very encouraging because coir is a naturally available material. Unfortunately, some of the uses of coir have already been replaced by plastic. So it's time we find new uses of coir and into roads with support from technological developments to increase the uses of coir, increase its life, decrease the degradability, will be very interesting. With this, we come to the end of presentations. And for me, it was very educating and enlightening. I think it was so for all those who are present here, various speakers who have been spoken here. I remember one thing, when we introduced the Central Road Fund to protect the development of roads from the vagaries of budget allocations, we wanted a dedicated fund. So we brought in Central Road Fund, which was cess on fuel, means petrol and diesel. And out of the CRF, by way of an act, a lion's portion was earmarked for rural roads. It is very heartening to note that the commendable efforts that are being made in the development of rural roads under PMGSY. National highways, expressways have been made, are being made, and will be made. But the story of economic development will be incomplete without the last mile connectivity. So the efforts which are going on these days, the friends who are making so much efforts to improve the quantity and quality of last mile connectivity is very encouraging. And with this, I think I open the floor for discussion. And my request to the speakers would be, your opinions and commentary, please save it for individual speakers and stick to questions only. Questions, please, if there are any. Can you give me my mic, please? Good afternoon to you all. Well, the question is for Dr. Sunita. Please introduce yourself before you. Please introduce yourself before you. Right. I'm Neeraj Chadha from Complete Instrumentation. I found that you have done some studies using falling weight deflectometer and Benkelman beam. Have you done some comparative studies with and without coir as well? Even though having explained all the artist test results have been compared with the control section. At this control section, what I meant is without at a square geotextile, that is to be laid as per IRC SP 72. All the tests, even FWD we have taken, but while we are at is coding this, it was not there, but recently only, if any modifications to be done in the code, it will be done based on that test. At that time, we have taken only the deflection studies based on BBD. Benkelman beam deflection studies. All the test is compared with the control sections. Thanks. Any other question?
Seems everybody is hungry. With that, we come to the conclusion of this session. And I'll ask Mr. Co-Chair, Mr. Baghel, to give his remarks. Mr. Baghel. नमस्कार। फिफ्थ टेक्निकल सेशन एक ज्ञानवर्धक सेशन रहा है एफडीआर और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विषय में। इसमें मैं सभी जितने हमारे स्पीकर्स और जो पार्टिसिपेंट हैं सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। स्पेशली जो फील्ड में महाराष्ट्र चीफ इंजीनियर और हिमाचल चीफ इंजीनियर ने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया है बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। उन लोगों ने फील्ड में एजुकेशन के समय जो भी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आई या क्या क्या उनके साथ होना है वो केवल एडॉप्ट करने योग्य है। इसको दूसरे राज्य भी एडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा उन लोगों का सुंदर प्रेजेंटेशन रहा। साथ ही बीआरओ से श्री वर्मा जी ने बहुत डिफरेंट चैलेंजिंग क्लाइमेट और डिफरेंट एरियन पे सिक्योरिटी इशू जहाँ पे हैं वैसे जगहों पे जो ग्रीन टेक्नोलॉजी के यूज के बारे में उनने जो बताया एक शॉर्ट पीरियड में उनको जो चैलेंज उसमें जो काम करते हैं और उसमें जो टेक्नोलॉजी इन लोग न्यू टेक्नोलॉजी और जो सब यूज करते हैं बहुत ही अच्छा उन लोगों ने सुंदर प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही त्रिची से मैडम ने क्वायर ग्रुप के बारे में जो प्रेजेंटेशन दिया है भी बहुत सुंदर वो है। न्यू टेक्नोलॉजी है आज के उसमें यह उपयोग योग्य है। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ में चेयरमैन सर का भी धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। And with this, I humbly request our respected chairman for this technical session, Shri R.P. Indoria ji, to please do the honor and present a humble gesture of gratitude to the speakers of this session. First up, I request Mrs. Jyoti C. Kulkarni with a big hand of applause. I also request the respected chairman of this technical session to please do the honor, Shri S.K. Verma. आभार व्यक्त करते हैं उनका लगातार तालियों के साथ। I request the co-chairman of this technical session to do the honor and present a humble gesture of gratitude to Miss Anita with a big hand of applause for her invaluable insights through this session. Thank you, ma'am. And Dr. Sunita V with continuous loud round of applause. And in order to thank our chairman and co-chairman for this technical session, I invite Shri A.R. Singh, Chief Engineer, MP, PWD, to please join us. उन लगातार तालियों के साथ आभार व्यक्त करेंगे हमारे इस टेक्निकल सत्र के चेयरमैन। लगातार तालियों के हकदार हैं श्री R.P. इंदौरिया जी। और आभार व्यक्त करते हैं हमारे सत्र के को चेयरमैन श्री B.P. बघेल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। एक ग्रुप फोटोग्राफ लेंगे आज के इस विशेष सत्र को कंक्लूड करते हुए। I request all the dignitaries to please join us, all the speakers for a group photograph. We'll capture this moment.
उन लगातार तालियों के साथ we thank all the participants for this technical session. Thank you so much for giving us your time. And now, ladies and gentlemen, we'll disperse for a lunch break. In another 30 minutes, we'll reassemble and we will proceed with the next technical session. लंच के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम 30 मिनट के अंदर इस कार्यक्रम स्थल में वापस एकत्रित होंगे हमारे अगले टेक्निकल सत्र के लिए। ग्रामीण भारत की सड़कें केवल दूरी नहीं घटाती बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का आधार बनती हैं। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पर्यावरणीय दूरदृष्टि, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सक्षम नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में क्रियान्वित हो और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सशक्त मार्गदर्शन में इस दिशा में पर्यावरण संवेदनशील और तकनीकी रूप से उन्नत विधियों को अपनाते हुए सड़क निर्माण की दिशा में अभिनव कदम उठा रहा है। 30 mm मोटी सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मिक्स CGBM एक ऐसी नवीनतम पद्धति है जिसमें बिटुमिन को सीमित मात्रा में लगभग 2.5% उपयोग कर उसकी कुटाई के पश्चात एक विशेष प्रकार के सीमेंटेशियस ग्राउट के साथ समाहित किया जाता है। ये संयोजन न केवल सतह को मजबूत बनाता है बल्कि इसे और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है जिससे सड़कों की दीर्घकालिक टिकाऊपन और उत्कृष्ट प्रदर्शन की गारंटी Etched in the heart of India. ग्रामीण भारत की सड़कें केवल दूरी नहीं घटाती बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का आधार बनती हैं। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पर्यावरणीय दूरदृष्टि, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सक्षम नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में क्रियान्वित हो और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सशक्त मार्गदर्शन में इस दिशा में पर्यावरण संवेदनशील और तकनीकी रूप से उन्नत विधियों को अपनाते हुए सड़क निर्माण की दिशा में अभिनव कदम उठा रहा है। 30 mm मोटी सीमेंट ग्राउटेड बिटुमिनस मिक्स CGBM एक ऐसी नवीनतम पद्धति है जिसमें बिटुमिन को सीमित मात्रा में लगभग 2.5% उपयोग कर उसकी कुटाई के पश्चात एक विशेष प्रकार के सीमेंटेशियस ग्राउट के साथ समाहित किया जाता है। ये संयोजन न केवल सतह को मजबूत बनाता है बल्कि इसे
जल भराव, ईंधन रिसाव और तापमान अस्थिरताओं के विरुद्ध भी अत्यंत सहनशील एवं मजबूत बनाता है। वर्तमान में ये उन्नत तकनीक प्रदेश के 12 जनपदों में लगभग 282 किलोमीटर लंबाई की सड़कों पर सफलतापूर्वक लागू की जा रही है। जल भराव जैसी समस्याओं से बचाते हुए इस तकनीक से निर्मित सड़कें वर्षों तक अपनी मूल संरचना और प्रदर्शन बनाए रखती हैं। बार बार की मरम्मत की आवश्यकता न होने से गिट्टी, बिटुमेन व अन्य संसाधनों की बचत होती है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सार्थक प्रयास है। ये सतह भारी यातायात से उत्पन्न गड्ढों, जल भराव और तेल रिसाव के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। साथ ही तापमान परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। हमारे दक्ष अभियंताओं द्वारा सावधानी पूर्वक डिजाइन, मिश्रण, अनुपात और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है, जिससे सड़कों की दीर्घकालिक टिकाऊपन और उत्कृष्ट प्रदर्शन की गारंटी मिलती है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा अपनाई गई ये तकनीक पर्यावरण संवेदनशील विकास, नवाचार और सुदृढ़ अधोसंरचना निर्माण का जीवंत उदाहरण है। ये केवल एक सड़क नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को तकनीकी सशक्तता, स्थायित्व और सतत प्रगति की ओर ले जाने वाला रास्ता है। आधुनिक भारत की विकास गाथा अब केवल भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसमें हरित नवाचार, पर्यावरणीय दायित्व और समावेशी अधोसंरचना का भी समावेश अनिवार्य रूप से देखा जा रहा है। इसी बोध के साथ उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हरित दृष्टि, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणादायक नेतृत्व तथा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सशक्त मार्गदर्शन में प्रदेश की ग्रामीण सड़कों को नवीन ऊर्जा, तकनीकी सक्षमता और पर्यावरणीय संतुलन से समृद्ध कर रहा है। इसी क्रम में कोल्ड बिट्यूमेन के साथ 30 mm मोटी MSS प्लस तकनीक का प्रयोग प्रदेश के 6 जनपदों में 202 किलोमीटर लंबाई के मार्गों पर सफलतापूर्वक संपन्न किया जा रहा है। इस नवोन्मेषी विधि में कोल्ड बिट्यूमेन इमल्शन का प्रयोग कर बिना किसी ऊष्मा स्रोत के सड़कीय सतह का निर्माण किया जाता है, जिससे ईंधन की खपत शून्य और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी सुनिश्चित होती है। ये तकनीक लागत प्रभावशील, वातावरणीय अनुकूल और जल प्रतिरोधी होने के साथ साथ हॉट मिक्स एवं पारंपरिक MSS प्लस तकनीकों की तुलना में अधिक यांत्रिक दृढ़ता व दीर्घजीवता प्रदान करती है। निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया में संरचनात्मक डिजाइन, मिश्रण संतुलन एवं गुणवत्ता नियंत्रण पर हमारे प्रशिक्षित अभियंताओं द्वारा विशेष सतर्कता बरती जाती है, जिससे कार्य न केवल शीघ्र पूर्ण होता है, बल्कि श्रमिकों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर वायुमंडलीय शुद्धता भी सुनिश्चित होती है। ये तकनीक न केवल सड़क निर्माण की नवीन परिभाषा प्रस्तुत करती है, बल्कि ग्रामीण अंचलों में आवागमन, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाकर स्थानीय जीवन गुणवत्ता और आर्थिक उन्नयन में भी योगदान दे रही है। ये पहल मात्र अधोसंरचना विस्तार नहीं, बल्कि पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, सतत विकास और हरित भविष्य की संकल्पना को मूर्त रूप देने का सशक्त प्रयास है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश हरित, टिकाऊ और समृद्ध भारत की ओर दृढ़ कदमों से अग्रसर हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण सशक्तिकरण के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए
उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नवाचार की नई मिसाल कायम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी दृष्टि और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सशक्त नेतृत्व ने इस योजना को ग्रामीण भारत के उत्थान का आधार बनाया है, जिसे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के कुशल नेतृत्व में साकार किया जा रहा है। 30 mm मोटाई का बिट्यूमिनस कंक्रीट BC गोल्ड मिक्स तकनीक के माध्यम से प्रदेश के 9 जनपदों में 306 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। इस अभिनव तकनीक में कोल्ड मिक्स इमल्शन का उपयोग कर बिना ईंधन जलाए बिट्यूमिनस सतह तैयार की जाती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आती है। हमारे कुशल अभियंताओं और तकनीकी विशेषज्ञों की निपुणता से निर्मित ये सड़कें सामान्य हॉट मिक्स की तुलना में अधिक दीर्घजीवी और टिकाऊ हैं। ये तकनीक लागत प्रभावी होने के साथ साथ निर्माण कार्य को तीव्र गति प्रदान करती है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है। ये पहल 9 जनपदों और आसपास के ग्रामीण निवासियों के लिए सुगम यातायात, बेहतर व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित कर रही है, जिससे उनकी आर्थिक समृद्धि को बल मिल रहा है। ये केवल सड़क निर्माण नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो उत्तर प्रदेश को प्रगति और समृद्धि के नए शिखर पर ले जा रहा है। ये केवल एक निर्माण तकनीक नहीं, बल्कि एक पर्यावरण संवेदनशील विकास दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भारत सरकार ने एक अभिनव प्रयोग जो है 2000 में शुरू किया कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई। तो उस सेक्टर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में बड़े अभिनव प्रयोग को किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण में एक नई टेक्निक जिसको FDR बोलते हैं, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन के माध्यम से कार्य शुरू किया। इस तकनीक में जो पुरानी रोड होती है, जब उनको अपग्रेड करते हैं, उसी रोड की सामग्री को रिसाइकल करते हुए नई रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जिसके माध्यम से जो पर्यावरणीय क्षति जो होती है कि जैसे डीजल ट्रांसपोर्टेशन या नए पहाड़ों को तोड़ के मिट्टी बनाई जाती है, उन सबकी बचत होती है। तो वर्तमान में FDR टेक्निक के माध्यम से उत्तर प्रदेश में लगभग 6000 किलोमीटर रोड्स बनाई गई हैं, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार जो है और UPRDA के माध्यम से हम लोग जो सरफेस लेइंग है उसमें भी कई नई सारी टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी है, आपकी MSS प्लस टेक्नोलॉजी है, इसके बाद CGBM टेक्नोलॉजी है, और एक वेस्ट प्लास्टिक का यूज भी है। इनके माध्यम से मतलब हर एक सेक्टर में लमसम 500 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर की रोडें हम लोग के द्वारा बनाई गई है। और जहां तक मुझे ये बताने में अत्यंत हर्ष हो रहा है कि वेस्ट प्लास्टिक के यूजेस की बात अगर है, तो अभी तक लगभग 610 किलोमीटर की रोड हम लोगों ने वेस्ट प्लास्टिक को यूज करके बनाई है, जिसमें लगभग 710 टन वेस्ट प्लास्टिक हम लोगों ने यूज किया है। आगामी फ्यूचर में भी जो हम लोग एम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण सेक्टर में जो भी रोड UPRDA के माध्यम से बनाई जाएगी, वो सारी रोडें अब नई टेक्निक FDR तकनीक का प्रयोग करके ही बनाई जाएंगी। इस तकनीक के माध्यम से हम लोग फ्यूचर में एक काम और कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो कार्बन क्रेडिट अर्न हम लोग कर रहे हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के पश्चात हम लोग उत्तर प्रदेश के रूरल सेक्टर में और रोडें उसी माध्यम से ग्रामीण भारत की सड़कें केवल दूरी नहीं घटाती, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का आधार बनती हैं। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पर्यावरणीय दूरदृष्टि, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सक्षम नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में क्रियान्वित हो, और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सशक्त मार्गदर्शन में इस दिशा में पर्यावरण संवेदनशील और तकनीकी रूप से उन्नत विधियों को अपनाते हुए सड़क निर्माण की दिशा में अभिनव कदम उठा रहा है।
30 mm मोटी सीमेंट ग्राउटेड बिट्यूमिनस मिक्स CGBM एक ऐसी नवीनतम पद्धति है जिसमें बिट्यूमिन को सीमित मात्रा में लगभग 2.5% उपयोग कर उसकी कुटाई के पश्चात एक विशेष प्रकार के सीमेंटेशियस ग्राउट के साथ समाहित किया जाता है। ये संयोजन न केवल सतह को मजबूत बनाता है बल्कि इसे जलभराव, ईंधन रिसाव और तापमान अस्थिरताओं के विरुद्ध भी अत्यंत सहनशील एवं मजबूत बनाता है। वर्तमान में ये उन्नत तकनीक प्रदेश के 12 जनपदों में लगभग 282 किलोमीटर लंबाई की सड़कों पर सफलतापूर्वक लागू की जा रही है। जलभराव जैसी समस्याओं से बचाते हुए इस तकनीक से निर्मित सड़कें वर्षों तक अपनी मूल संरचना और प्रदर्शन बनाए रखती हैं। बार बार की मरम्मत की आवश्यकता न होने से गिट्टी, बिटुमिन व अन्य संसाधनों की बचत होती है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सार्थक प्रयास है। ये सतह भारी यातायात से उत्पन्न गड्ढों, जलभराव और तेल रिसाव के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है, साथ ही तापमान परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। हमारे दक्ष अभियंताओं द्वारा सावधानी पूर्वक डिजाइन, मिश्रण, अनुपात और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है, जिससे सड़कों की दीर्घकालिक टिकाऊपन और उत्कृष्ट प्रदर्शन की गारंटी मिलती है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा अपनाई गई ये तकनीक पर्यावरण संवेदनशील विकास, नवाचार और सुदृढ़ अधोसंरचना निर्माण का जीवंत उदाहरण है। ये केवल एक सड़क नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को तकनीकी सशक्तता, स्थायित्व और सतत प्रगति की ओर ले जाने वाला रास्ता है। आधुनिक भारत की विकास गाथा अब केवल भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसमें हरित नवाचार, पर्यावरणीय दायित्व और समावेशी अधोसंरचना का भी समावेश अनिवार्य रूप से देखा जा रहा है। इसी बोध के साथ उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हरित दृष्टि, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणादायक नेतृत्व तथा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सशक्त मार्गदर्शन में प्रदेश की ग्रामीण सड़कों को नवीन ऊर्जा, तकनीकी सक्षमता और पर्यावरणीय संतुलन से समृद्ध कर रहा है। इसी क्रम में कोल्ड बिट्यूमिन के साथ 30 mm मोटी MSS प्लस तकनीक का प्रयोग प्रदेश के 6 जनपदों में 202 किलोमीटर लंबाई के मार्गों पर सफलतापूर्वक संपन्न किया जा रहा है। इस नवोन्मेषी विधि में कोल्ड बिट्यूमिन इमल्शन का प्रयोग कर बिना किसी ऊष्मा स्रोत के सड़कीय सतह का निर्माण किया जाता है, जिससे ईंधन की खपत शून्य और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी सुनिश्चित होती है। ये तकनीक लागत प्रभावशील, वातावरणीय अनुकूल और जल प्रतिरोधी होने के साथ साथ हॉट मिक्स एवं पारंपरिक MSS प्लस तकनीकों की तुलना में अधिक यांत्रिक दृढ़ता व दीर्घजीवता प्रदान करती है। निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया में संरचनात्मक डिजाइन, मिश्रण संतुलन एवं गुणवत्ता नियंत्रण पर हमारे प्रशिक्षित अभियंताओं द्वारा विशेष सतर्कता बरती जाती है, जिससे कार्य न केवल शीघ्र पूर्ण होता है बल्कि श्रमिकों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर वायुमंडलीय शुद्धता भी सुनिश्चित होती है। ये तकनीक न केवल सड़क निर्माण की नवीन परिभाषा प्रस्तुत करती है बल्कि ग्रामीण अंचलों में आवागमन, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाकर स्थानीय जीवन गुणवत्ता और आर्थिक उन्नयन में भी योगदान दे रही है। ये पहल मात्र अधोसंरचना विस्तार नहीं बल्कि पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, सतत विकास और हरित भविष्य की संकल्पना को मूर्त रूप देने का सशक्त प्रयास है,
जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश हरित, टिकाऊ और समृद्ध भारत की ओर दृढ़ कदमों से अग्रसर हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण सशक्तिकरण के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नवाचार की नई मिसाल कायम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी दृष्टि और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सशक्त नेतृत्व ने इस योजना को ग्रामीण भारत के उत्थान का आधार बनाया है, जिसे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के कुशल नेतृत्व में साकार किया जा रहा है। 30 mm मोटाई का बिट्यूमिनस कंक्रीट बीसी गोल्ड मिक्स तकनीक के माध्यम से प्रदेश के 9 जनपदों में 306 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण का कार्य प्रगति पर है। इस अभिनव तकनीक में कोल्ड मिक्स इमल्शन का उपयोग कर बिना ईंधन जलाए बिट्यूमिनस सतह तैयार की जाती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आती है। हमारे कुशल अभियंताओं और तकनीकी विशेषज्ञों की निपुणता से निर्मित ये सड़कें सामान्य हॉट मिक्स की तुलना में अधिक दीर्घजीवी और टिकाऊ हैं। ये तकनीक लागत प्रभावी होने के साथ साथ निर्माण कार्य को तीव्र गति प्रदान करती है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों की बचत होती है। ये पहल 9 जनपदों और आसपास के ग्रामीण निवासियों के लिए सुगम यातायात, बेहतर व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित कर रही है, जिससे उनकी आर्थिक समृद्धि को बल मिल रहा है। ये केवल सड़क निर्माण नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो उत्तर प्रदेश को प्रगति और समृद्धि के नए शिखर पर ले जा रहा है। ये केवल एक निर्माण तकनीक नहीं, बल्कि एक पर्यावरण संवेदनशील विकास दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भारत सरकार ने एक अभिनव प्रयोग जो है 2000 में शुरू किया कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई। तो इस सेक्टर में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में बड़े अभिनव प्रयोग को किया गया है, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माण में एक नई टेक्निक जिसको FDR बोलते हैं, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन के माध्यम से कार्य शुरू किया। इस तकनीक में जो पुरानी रोड होती है, जब उनको अपग्रेड करते हैं, उसी रोड की सामग्री को रिसाइकल करते हुए नई रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जिसके माध्यम से जो पर्यावरणीय क्षति जो होती है कि जिससे डीजल ट्रांसपोर्टेशन या नए पहाड़ों को तोड़ के मिट्टी बनाई जाती है, उन सबकी बचत होती है। तो वर्तमान में FDR टेक्निक के माध्यम से उत्तर प्रदेश में लगभग 6000 किलोमीटर रोड्स बनाई गई हैं, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार जो है और UPRDA के माध्यम से हम लोग जो सरफेस लेइंग है उसमें भी कई नई सारी टेक्निक का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी है, आपकी MSS प्लस टेक्नोलॉजी है, इसके CGBM टेक्नोलॉजी है, और एक वेस्ट प्लास्टिक का यूज भी है। इनके माध्यम से मतलब हर एक सेक्टर में लमसम 500 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर की रोडें हम लोग के द्वारा बनाई गई हैं। और जहां तक मुझे ये बताने में अत्यंत हर्ष हो रहा है कि वेस्ट प्लास्टिक के यूजेस की बात अगर है तो अभी तक लगभग 610 किलोमीटर की रोड हम लोगों ने वेस्ट प्लास्टिक को यूज करके बनाई है, जिसमें लगभग 710 टन वेस्ट प्लास्टिक हम लोगों ने यूज किया है। आगामी फ्यूचर में भी जो हम लोग एम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण सेक्टर में जो भी रोड UPRDA के माध्यम से बनाई जाएगी, वो सारी रोडें अब नई टेक्निक FDR तकनीक का प्रयोग करके ही बनाई जाएंगी। इस तकनीक के माध्यम से हम लोग फ्यूचर में एक काम और कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो कार्बन क्रेडिट अर्न हम लोग कर रहे हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचने के पश्चात हम लोग उत्तर प्रदेश के रूरल सेक्टर में और रोडें उसी माध्यम से ग्रामीण भारत की सड़कें केवल दूरी नहीं घटाती, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का आधार बनती हैं। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पर्यावरणीय दूरदृष्टि
माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सक्षम नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में क्रियान्वित हो और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सशक्त मार्गदर्शन में इस दिशा में पर्यावरण संवेदनशील और तकनीकी रूप से उन्नत विधियों को अपनाते हुए सड़क निर्माण की दिशा में अभिनव कदम उठा रहा है। 30 mm मोटी सीमेंट ग्राउटेड बिट्यूमिनस मिक्स CGBM एक ऐसी नवीनतम पद्धति है जिसमें बिट्यूमिन को सीमित मात्रा में लगभग 2.5% उपयोग कर उसकी कुटाई के पश्चात एक विशेष प्रकार के सीमेंटेशियस ग्राउट के साथ समाहित किया जाता है। ये संयोजन न केवल सतह को मजबूत बनाता है बल्कि इसे जलभराव, ईंधन रिसाव और तापमान अस्थिरताओं के विरुद्ध भी अत्यंत सहनशील एवं मजबूत बनाता है। वर्तमान में ये उन्नत तकनीक प्रदेश के 12 जनपदों में लगभग 282 किलोमीटर लंबाई की सड़कों पर सफलतापूर्वक लागू की जा रही है। जलभराव जैसी समस्याओं से बचाते हुए इस तकनीक से निर्मित सड़कें वर्षों तक अपनी मूल संरचना और प्रदर्शन बनाए रखती हैं। बार बार की मरम्मत की आवश्यकता न होने से गिट्टी, बिटुमिन व अन्य संसाधनों की बचत होती है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सार्थक प्रयास है। ये सतह भारी यातायात से उत्पन्न गड्ढों, जलभराव और तेल रिसाव के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है, साथ ही तापमान परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। हमारे दक्ष अभियंताओं द्वारा सावधानी पूर्वक डिजाइन, मिश्रण, अनुपात और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है, जिससे सड़कों की दीर्घकालिक टिकाऊपन और उत्कृष्ट प्रदर्शन की गारंटी मिलती है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा अपनाई गई ये तकनीक पर्यावरण संवेदनशील विकास, नवाचार और सुदृढ़ अधोसंरचना निर्माण का जीवंत उदाहरण है। ये केवल एक सड़क नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को तकनीकी सशक्तता, स्थायित्व और सतत प्रगति की ओर ले जाने वाला रास्ता है। आधुनिक भारत की विकास गाथा अब केवल भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसमें हरित नवाचार, पर्यावरणीय दायित्व और समावेशी अधोसंरचना का भी समावेश अनिवार्य रूप से देखा जा रहा है। इसी बोध के साथ उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हरित दृष्टि, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणादायक नेतृत्व तथा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सशक्त मार्गदर्शन में प्रदेश की ग्रामीण सड़कों को नवीन ऊर्जा, तकनीकी सक्षमता और पर्यावरणीय संतुलन से समृद्ध कर रहा है। इसी क्रम में कोल्ड बिट्यूमिन के साथ 30 mm मोटी MSS प्लस तकनीक का प्रयोग प्रदेश के 6 जनपदों में 202 किलोमीटर लंबाई के मार्गों पर सफलतापूर्वक संपन्न किया जा रहा है। इस नवोन्मेषी विधि में कोल्ड बिट्यूमिन इमल्शन का प्रयोग कर बिना किसी ऊष्मा स्रोत के सड़कीय सतह का निर्माण किया जाता है, जिससे ईंधन की खपत शून्य और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी सुनिश्चित होती है। ये तकनीक लागत प्रभावशील, वातावरणीय अनुकूल और जल प्रतिरोधी होने के साथ साथ हॉट मिक्स एवं पारंपरिक MSS प्लस तकनीकों की तुलना में अधिक यांत्रिक दृढ़ता व दीर्घजीवता प्रदान करती है। निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया में संरचनात्मक डिजाइन, मिश्रण संतुलन एवं गुणवत्ता नियंत्रण पर हमारे प्रशिक्षित अभियंताओं द्वारा विशेष सतर्कता बरती जाती है, जिससे कार्य न केवल शीघ्र पूर्ण होता है, बल्कि श्रमिकों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर वायुमंडलीय शुद्धता भी सुनिश्चित होती है। ये तकनीक न केवल सड़क निर्माण की नवीन भाषा प्रस्तुत करती है, बल्कि ग्रामीण अंचलों में आवागमन,
व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाकर स्थानीय जीवन गुणवत्ता और आर्थिक उन्नयन में भी योगदान दे रही है। ये पहल मात्र अधोसंरचना विस्तार नहीं, बल्कि पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, सतत विकास और हरित भविष्य की संकल्पना को मूर्त रूप देने का सशक्त प्रयास है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश हरित, टिकाऊ और समृद्ध भारत की ओर दृढ़ कदमों से अग्रसर हो रहा है। पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण सशक्तिकरण के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नवाचार की नई मिसाल कायम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी दृष्टि और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सशक्त नेतृत्व ने इस योजना को ग्रामीण भारत के उत्थान का आधार बनाया है, जिसे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के कुशल नेतृत्व में साकार किया जा रहा है। 30 mm मोटाई का बिट्यूमिनस कंक्रीट बीसी गोल्ड मिक्स तकनीक के माध्यम से प्रदेश के 9 जनपदों में 3 ग्रामीण भारत की सड़कें केवल दूरी नहीं घटाती, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का आधार बनती हैं। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पर्यावरणीय दूरदृष्टि, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ
नाथ जी के सक्षम नेतृत्व
2 सेकंड तो लेंगे एक बार मैं कंफर्मेशन चेयरमैन क्वेश्चन We're about to start with the next technical session for the day. आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर हमारे अगले सेशन के प्रेजेंटर्स की कोई प्रेजेंटेशन है जो अभी भी अपलोड नहीं हुई है, you can come and you can take this time and you can upload it. जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे अगले सेशन के लिए which is the third session for the day and the sixth session of the seminar, आपसे रिक्वेस्ट है you can use this time, आप अपनी प्रेजेंटेशन को अपलोड कर सकते हैं. पीपीटी कॉपी करनी है उधर लैपटॉप में. BRO करके फोल्डर है उसे BRO प्रेजेंटेशन जिसमें 27 अगस्त ये वाला जी और इसमें 27 अगस्त MSS प्लस करके होगा सर ये वाला जी इसको एक बार ओपन
Etched in the heart of India is a story of resilience, determination, and transformation. Welcome to the chronicles of our nation's oldest, strongest, and largest financial institution, the State Bank of India. With firmly established roots laid in the 1800s, we gained experience and practiced excellence. When India unfurled its independent wings, our ambition soared and set the pace for a financial revolution, one that would lead the course of national development, paving the way for banking in India. Working from the ground up, but with sights set high, Bank fostered India's economic growth, partnering towards progress, charting new territories, applying innovative modalities, growing strong on new grounds. Resilience, our strategy, multiplying our strengths. We reinvented ourselves. Bank is accessible, relevant, and ever-present, sustaining and strengthening the farmers of our nation, serving our country and nurturing the dreams of its people, opening doors to financial possibilities, carving the path of self-sufficiency. Our relentless efforts bridge the gap between ambitions and opportunities, revolutionizing the approach towards financial inclusion. SBI actively demonstrates the impact of universal financial access, leading the way for others to follow. Living our mission of providing simple, responsive, and innovative banking solutions. The institution is a financial superstore. And the bank of choice for most Indians, materializing dreams, empowering the common man with endless concrete possibilities, serving all sections of society. Envisioning the future of banking in India, we lead the digital drive, powering technological innovation, making day-to-day banking intuitive, easy, and secure, despite being digitally evolved and present in every nook and corner of India, maximizing reach to the most inaccessible. Check. And with this, we once again welcome you, ladies and gentlemen, post-lunch for the next technical session of the day, which is on the topic Implementation, Quality Control, and Machineries in FDR and Green Technology. इसी कड़ी में मैं स्वागत करती हूँ इस सत्र के चेयरमैन. Please welcome Shri L.K. Padhi ji, Engineer in Chief, come Special Secretary PWD Odisha, to please join us on stage. उन लगातार तालियों के साथ. Very warm welcome, sir. And with this, I also invite on stage the co-chairman for this technical session, Dr. Shiksha Swarupkar, Member Secretary, G3 Committee, IRC, to please join us on stage with big round of applause. और औपचारिक रूप से अभिनंदन स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री परवेज अहमद खान, IRC Council Member from Uttar Pradesh, to please join us.
I request Sir to please welcome our respected chairman and co-chairman for this technical session. A very warm welcome, ma'am. And with this, I would like to invite our speakers on stage. Please welcome Dr. Umesh Chandra Sahu from IIT Bhubaneswar. उन लगातार तालियों के साथ. We also welcome Professor Sudhir Verma from IIT Patna. Welcome, sir. And we welcome Dr. Satish Pandey, Senior Scientist, CRRI, Central Road Research Institute, New Delhi. A very warm welcome, sir. I would also like to mention that our next speaker, Shri Bhanoj Doku, Vice President from Cube Highways, will be joining us online. So I humbly request the respected chairman for this technical session to please proceed. Good afternoon, everybody. The dignitaries present on the dais, off the dais, the IRC delegates, concessionaries, consultants present in the 2 days seminar on full depth reclamation and new technology organized by IRC and UPRRDA. We all know that the rapid advancement of green and sustainable technologies has opened new avenues for reducing environmental impact, the energy efficiency, and promoting sustainable grounds. However, while adopting of such technologies is essential, it is equally important to ensure that their implementation should meet the highest quality standards as prescribed by IRC codes, MORTH guidelines, and MORTH specifications, etc. So, without adequate quality assurance, monitoring, and evaluation, the true benefits of these green technologies may not be realized. So, in our state, Odisha, the R&D department has already implemented few projects on green technologies such as geosynthetic and slope stabilization, bridge cum barriers, and plastic reuse, waste plastic reuse, and their performance is being monitored and observed that it works satisfactorily. So in this session, we will deliberate upon the challenges in adopting green technologies. New green technologies such as cold mix. The cold mix advantages are no heating of aggregates and binder in the plant. This will give pollution-free green filter, green roll technology. We'll discuss on the stabilization, etc., and the best practices in ensuring their performance and mechanism for addressing quality-related concerns. I'm confident that the insights shared by our eminent speakers will definitely and the discussions that follow will definitely enrich our understanding and guide us towards effective and reliable solution for sustainable development. We have with us now the eminent speakers, Dr. U.C. Sahu of IIT Bhubaneswar and Dr. and Professor Sudhir Verma from IIT Patna and Sri Manoj Doku, who will join online, the Vice President MS Cube Highways, and our Mr. Satish Pandey, Scientist CRRI. So first of all, I will invite Dr. Umesh Sahu to give the presentation on the green tech, on the
green technologies in road constructions, needs and challenges. For this great objective. Okay, सबको नमस्कार, जय जगन्नाथ. I first of all I would like to thank IRC and EPRRDA for giving me this opportunity to deliver a talk on this theme. That is needs and challenges on implementation of green technologies in road construction. I'd also like to thank chairman and co-chairman of the session for inviting me. So let us move forward. All of us now understand what are the different green technology and new technology that we are implementing in different road sectors. So let's go slightly away from the topic. What we are now seeing in most of these weather scenarios recently, extreme weather events, as you have seen, like cloud burst and similar kind of scenarios happening in northern part of our country. These are two pictures that were taken from Himachal Pradesh and Uttarakhand. As you can see, these were largely now related to climate change effect. So this has become a major threat to our infrastructure as well as our society. So high intensity rainfall, frequent cyclones, extreme temperatures and flooding have become very common nowadays in different parts, different type of problem. As our planet faces more frequent extreme weather events, it's evident that our current infrastructure practices need to be changed or evolved towards sustainable measures. So to mitigate and adapt to climate change, sustainable infrastructure development option is no more just an option. It has become a necessity. So that's why infrastructure development and construction practices which need to be adopted that should be eco-friendly. So just going a little deeper into that, what exactly is climate change? How do we differentiate what is climate and what is weather? Okay, climate basically refers to a long-term regional or global average of temperature or humidity or rainfall, etc. While weather is a short-term pattern which remains for a few hours. Okay, and this is a climate change picture, as you can see from the current scenario, what was there 21,000 years ago and 6,000 years ago, and what is predicted in future in the after the end of the 21st century. So you can see in the present growth of greenhouse or increase in the greenhouse gas emissions, we are actually going towards a warmer Earth. So this is some of these predictions regarding this towards the 21st century, like how these different greenhouse gas emissions going to increase. Okay, so starting from the highest, of course, the carbon dioxide, carbon monoxide, etc. So these are the different greenhouse gas emissions, and infrastructure also plays a major role, and specifically road infrastructure, where we are actually hitting the materials where a lot of greenhouse gas emissions are emitted. Anthropogenic or your man-made climate change is one of the biggest challenges in the world, which world is facing today, and global warming, which is we are all talking about nowadays, global warming and etc., ice melting and all etc. So the global average temperature in the last century has gone up by almost 1.1 degrees centigrade, and with this particular rate, if we go on increasing, the average surface air temperature over India could rise up to 4.4 degrees centigrade by the end of 21st century. This was a prediction unless we do any action. So these are some of the picture. If you see climate change, global warming things, so you can see our country is in the deep red zone. Okay, with the highest average air temperature. And this is the scenario, present scenario. Okay,
if you do nothing or if you take some actions related to green technology, related to sustainable construction practices, where do you land? Okay, if you do nothing, then at the end of 21st century, then there will be almost 4.4 degree increase in the temperature. But if you start doing, then the effect will be seen maybe around 2050, and then slowly we can remain at a constant state. Okay, though you will not rise, but you will remain at the same state. Okay, so these are some of the predictions which were taken from IPCC. These are some of the climate change impacts, as you've seen. Like after 2020, California experienced the highest temperature of around 54.4 degrees centigrade in 2021, and just months after, record low temperature is also noted in different parts of Asia as well as in US. Also, if many of these urban areas, you must be seeing the precipitation, short-term and heavy intensity rainfalls, okay, which can be directly linked to the temperature also. So you can see the global average precipitation increases by around 7% per 1 degree temperature rise. Okay, and this short-term high intensity rainfalls is basically a reason for that. And that's why these are becoming very common these days. And you must have seen such kind of urban flooding in many of the cities now. Though these are linked to this high intensity rainfall and higher runoff, at the same time, there are drainage issues in the cities also, of course. So if you see the climate change impacts, extreme flood events, river flooding, sea level rise, higher pavement temperature, okay, these are some of these things that we are normally seeing nowadays, very common. These have become very common. And coming to the infrastructure contributes significantly to this climate change because of its operational emissions, and second is its embodied emissions in terms of materials that we are using. Almost 80% of the greenhouse gas emissions are linked to the infrastructure according to the UN Environmental Program. And another study by GI Hub Research, they found that infrastructure consumes around 60% of the world's materials in terms of its extraction, processing, and use of this material during construction and maintenance process, out of which 18% of the infrastructure is coming from this road sector. So around 14% of the GHG emissions come from the transport sector, from this road buildings, rehabilitation, maintenance, etc. Okay, and there is a growing concern of using this hot mix asphalt. Okay, so that's why a lot of strategies are being taken, like production of warm mix asphalt, cold mix asphalt, etc., so that the greenhouse gas emissions can be reduced significantly. So if we are thinking of sustainable infrastructure development, there are some ways where we can actually do this practice. Like we need to save our limited natural resources. That means you have to maximize the use of marginal and local materials. We have to go for use of waste materials, explore alternative materials for road construction, reuse of the construction materials. At the same time, we also bring economy in construction in terms of constructing payments with lower life cycle costs, like your perpetual payments or long life payments, adopt economical technology in road construction, and timely maintenance of the roads. We need to also conserve energy in terms of recycling of the materials, in terms of practicing eco-friendly constructions like your warm mix asphalt, cold mix asphalts, etc. We also need to adopt climate resilient constructions, like constructing cooler payments, pervious payments, self-healing payments, flood resilient payments, energy harvesting payment, and so on. There are so many technologies which we need to adopt to account for these different climate change effects. So this green technology, different green technology, what we are using nowadays, some of them are like low energy asphalt, as I told, warm mix asphalt, cold mix asphalt, etc. We are going with pavement recycling, like hot recycling, cold recycling, full depth recycling, which we have been discussing since yesterday. Use of local and waste material like fly ash, slag, waste plastic, waste rubber, red mud, phosphogypsum, construction demolition waste, municipal solid waste, and there are so many different types of waste materials that can be used in construction. Soil stabilization, we have also been discussing since yesterday on different type of soil stabilizers: cement, lime pozzolana, bitumen, bioenzyme, lignin, geosynthetic, and also different cement based commercial additives which are also being used. And there are other technologies like different nanotechnologies,
geopolymer technologies, porous payment, energy harvesting payment. So many type of green technologies are now available, being adopted across the globe as well as in India. So they need to be adopted. This is low energy asphalt mixes, which we are working on now. As you can see, hot mix asphalt, warm mix asphalt, and cold mix asphalt. So cold mix asphalt is almost like we produce this at ambient temperature, whereas warm mix asphalt we manufacture at a temperature 10 to 40 degrees centigrade, lesser than the hot mix asphalt. So around 110 to 140 degrees centigrade normal range. Okay, and then hot mix asphalt, as you all know, 150, 160 degrees centigrade is the common temperature. So why we are actually shifting to warm mix asphalt, etc.? Because of these harmful gases, which normally evaporate from this hot mix asphalt at a temperature higher than 130 degrees centigrade. Those are normally just polycyclic aromatic hydrocarbons. Okay, so and also this you can also go with half warm mix asphalt, which can be produced at a temperature of 70 to 100 degrees centigrade. Okay, but both of them, warm mix or half warm mix, we need to heat the aggregates. However, if you go with cold mix asphalt, of course, research is going on, and there is some success, we can say. So cold mix asphalt can be produced without heating the aggregates and the bitumen as well. Okay, using some emulsions. Okay, tailor-made emulsions can be used. Okay, and as you know, this can save energy almost up to 95% in terms of production of the mixes. Okay, and some of the advantages you can say it's economical. I think more things will be discussed by Professor Sudhir Verma on this cold mix asphalt. So I can skip some of the things. Okay, this is environment friendly, etc. These are some of the emulsion based mixes which we can try. So if commonly we can go with cold mix asphalt, okay, where we can use cold mix premix carpet, cold mix MSS, or even slightly going higher to cold mix BC, and as well as cold mix DBM, which successfully in the lab scale we have designed, and some field trials have also been made. Okay, we can go with bitumen stabilized material BSM as a base course. We can go with cement bitumen treated material CBTM also as a sustainable base course material using recycled materials. So there are so many studies on life cycle assessment of warm mix asphalt compared to hot mix asphalt. I've just taken one example from one of the technical reports. So as you can see, compare the warm mix asphalt and hot mix asphalt. Of course, there is a lot of saving in terms of the carbon emissions. So as you can see, the global warming potential per kg of carbon dioxide being emitted. So warm mix is lesser compared to the hot mix. So if you go with cold mix, please conclude in 5 minutes. Yeah, sure. So as you can see, cold mix asphalt also there is a lot of saving in terms of energy as well as in terms of your carbon emissions. Okay, so this is some cold mix asphalt work also we are doing on dense graded asphalt using one of the industry sponsored projects. So we have also been successful in developing DBM and BC mixes using emulsions, okay, which can stand at par similar to that of hot mix asphalt. Okay, so of course this will take time to bring to be implemented in to the field and bring confidence among the engineers. Of course, there are other recycling methods, as you all know, hot recycling, cold recycling. I can skip all those things. These are also sustainable things that we can adopt as a green technology measures. These are some of the benefits. As you can see, there is a beautiful comparison. One is this one is basically reconstruction. Then your full depth recycling with this is with stabilization, and that is without stabilization. So if you see, with stabilization and FDR is actually resulting in lesser carbon emissions. So that's a good thing. We should go with full depth reclamation with stabilization method. That will help us in reducing the carbon emissions. Similarly, this is the energy in terms of fossil energy. Even if you go with FDR with stabilization, with stabilization, of course, there is use of cement and other things. So there will be some fossil energy consumed in this. This is another human toxicity in terms of carbon, in terms of cancer effects, etc. So as you can see,
because of indirect effect, of course, the harmful gas emissions, how it is affecting in terms of cancer diseases, etc. This is another one where the comparison has been done using CRR, removal and reconstruction, cold central plant recycling, and FDR with cement. So you can see that like in FDR with cement, there is actually a lot of saving in terms of your transportation as well as in terms of energy issues. This is also from the same study, the comparison in terms of its energy, okay, energy consumption. So FDR PC, as you can see, the energy consumption in terms of transportation is very, very low. So coming to the final one, where we are actually meeting the challenges. This is the final concluding remarks in terms of my presentation. One of these higher initial cost. Sometimes while adopting green technologies and materials, this requires significant upfront investment, R&D, etc. So that may sometimes making it less appealing. Certification and design cost, the cost associated with the designing and certifying the green technology also adds to the overall project cost. Lack of cost benefit analysis. So there is a perceived lack of clear proven long-term benefits and return on the investment, especially concerning future climate condition, which makes the decision makers hesitant to invest. There is lack of expertise also in adopting new technology. There is general deficiency in technical knowledge, experience within the industry. Limited design standards, shortage of established design standards available. Material availability, sometimes whatever we are doing research, the sufficient material is not available for implementation. Non-availability of standard of rates. Legal and regulatory issues. Existing regulation may not be conducive to adopting green technologies. So that creates legal and bureaucratic hurdles. Lack of consistent policies, lack of consistent and long-term government policies and commitment can also undermine the effort to integrate sustainability in infrastructure projects. Physical and environmental concerns also, sometimes the environmental issues also may make a concern in adopting their technologies. And lastly, resistance, the cultural and social barriers. Sometimes people, the beneficiaries, they resist to the change. So fundamental resistance to adopting new and unconventional practices from various stakeholders is a significant obstacle. And lack of awareness, so limited awareness among the public, developers, and even governmental bodies about the benefits and methods of green construction that contributes to its slow adoption. So concluding to my presentation, 3 important points to be noted. First is your sustainability, second, cost effectiveness, and third is more use of local and waste materials. So these, of course, they are all interrelated, but these are the 3 major things that you should focus for a safer world. Then introducing carbon credits into the highway construction is also a strategic mechanism where many of the developed countries, they have adopted this carbon credits while constructing different highways. Those also need to be like your green rating, etc. We use in buildings. Similar things should come into the highways also. It is essential for the decision makers also to have access to reliable data that are representative of the Indian context rather than foreign knowledge. So we should use this technology more and more to get more performance report, and then we get confidence in implementing these technologies in our road sector. And lastly, promote community participation to foster a sense of belonging and ensure the relative relevance and long-term success of these green initiatives. So thank you. That's all. Thank you, Dr. Sahu, for making a good presentation on the implementation of and challenge on green technologies. Now, our next eminent speaker is Sudhir Verma from IIT Patna. He will give deliberations on field study of low volume road construction using dense cold mix. Yes. Okay. So first of all, I would like to thank IRC and UPRRDA for inviting me to this very important event. And
A very good afternoon to all of you. So I'm saying that this event is very important because our country is a large country. Okay. And in this country, we have to feed a large population. Okay. So we understand that a delta X change creates a large difference in our country. Okay. And a delta X error can create a large issue in our country. We also understand the importance of environment. As the previous speaker said, the effect to environment can create a large damage to our agricultural output, okay, and also to our economy. Okay. So for us, looking at options which are green is very important. Okay. I am going to talk about a green technology that UP-RRDA has adopted in UP, which is cold bituminous mix technology. Okay. So what has motivated us to take this technology? The motivation is that in this technology, we don't have to heat aggregate. There is no need to heat bitumen in plant, which means that this fuel consumption is reduced. And in addition to this fuel consumption, the population is also corresponding population pollution, smoke is also reduced. Okay. We understand that our country is huge and most of our asphalt plants are running on fuel. Okay. So that means it is actually generating a lot of smoke. So to reduce this, it's a good opportunity to introduce cold mix so that the fuel consumption and the smoke is reduced. Okay. Another advantage of using cold mix technology is that it provides ample time to the contractor and the service provider for construction. Okay. Because cold mix takes some time to settle, so it also gives opportunity to the contractor to make adjustments. Now, like in any technology, you first design in lab and then try to see a pilot project or a stretch, which is a test stretch, and then you go forward with the construction. Right? So similarly, in cold bituminous mix technology also, you first go and design. There are few guidelines which are available, like IRCSP 100. You have MOD 2013, which is giving you some guidelines. You have Asphalt Institute US manuals, MS14, MS19. Okay. Now, in fact, if you look at MOD 2013 for cold mix designs, it refers to MS14. Okay. In fact, MS14 was actually came out in 1989, and subsequently it was further updated to MS19, which came out in 2008. Okay. Now, as Dr. Sahu sir was saying that whenever a new thing is coming, there is hesitance among the engineers, among the implementation bodies to adopt it. One of the reasons why this is because sometimes we get very comfortable with the existing thing. Okay. The reason is not that we are lazy. The reason is that we have a large experience that we have developed with certain guideline or certain technology. Okay. Now, with this experience, we feel the comfort of taking it forward. So MS19 is there, but still MS14 is still very popular and widely used. And in fact, MOD 2013 still refers to MS14 for the design. So cold bituminous mix has been there for quite a time. But what I am referring here is creating dense mixes using the cold mix technology. Okay. So how does it make a difference? Okay. Now we are talking about dense mixes, the mixes like bituminous concrete, the mixes like DBM. Okay. So if you recollect from your field, these dense mixes have certain gradations. Okay. And these gradations are leading to certain voids in the mineral aggregate. If I look at the gradation, this is skeleton of the aggregate. There is some voids in it,
in which I'm trying to fill bitumen. Okay. And this is a dense mix, so I have limited voids in this aggregate skeleton. Okay. And in the cold mix technology, with the blessing that I don't have to heat it, I had to introduce water, right? So that means this void that I'm talking about is going to be taken by not just bitumen, it will be also going to be taken by water. At the end of the application, I don't want this water, and naturally it will evaporate. But in this process, it will lead the voids where it was there. Okay. And being an application where I'm looking the dense mix applications, I don't want these extra voids. Okay. So I'll talk about it in detail little bit as I'll go forward. But then if you look at these guidelines, all these guidelines will boil down to certain flowchart. Okay. In a broad perspective, it will first try to tell you how to select an optimum water content, okay, which will be mostly referred to as in terms of coatability and getting to certain density in a cold mix. Okay. Then these guidelines will take you to decide an optimum binder content, which in all the guidelines are based on Marshall stability. Okay. I'm sure everybody is very familiar with Marshall stability, working with hot mix, as we are very experienced with it. Okay. And like hot mix, we are also worried about the durability aspect, okay, because once I have constructed the road, it is going to be open to environment. Okay. So I want to ensure that whatever mix I am producing should be durable. And one of the durable aspect is with respect to moisture. So in these guidelines, you will see to capture the durability aspect, there will be some sort of moisture damage which will be introduced or moisture conditioning that will be introduced. So some guidelines will take care by this by looking at retained Marshall stability. Some guidelines look at retained ITS value. Okay. Now, naturally, some questions will arise as this is a new technology with respect to the dense mixes. Okay. As I stress upon these voids which the waters are creating, I will be naturally interested to know what should be my approach with respect to this water content. Okay. So if you look at the literature and guideline, you'll see that in the design perspective, there are two approaches. One approach is you try to see what is the initial addition of optimum water with respect to getting the aggregates properly coated. Okay. So, and then if I take this, find out this water content requirement, and if I don't reduce it as I am adding emulsions in my mix design trials, I keep on adding more water in my mix, because emulsion is what? Emulsion is now water and bitumen, right? Another approach is with respect to when I'm adding or changing the content of emulsion, I look what is the further addition of water with respect to the initial water that I had found. Okay. Now, with the simple logic, you would have understood that if I take the first approach, I'm going to end up adding more water. So I'm going to end up having more voids. Okay. So second approach will lead to less voids. And if you look at, we did both the trials in lab, you'll see that they will be quite similar when the binder content is less. But as you are increasing the emulsion content, the effect of the water in the emulsion will start to kick in. Okay. So right from the beginning of the mix design, if I'm not careful in what approach I am taking, then I might end up not getting the desired result, which I would be expecting in field. Okay. The next question that will naturally come in mind is that what should be my compactive effort? Okay. Now, as we understand for hot mix, we do Marshall hammers using Marshall compactors. We do Marshall blows. And in this, what we are trying to do, in fact, what we are trying to do is we are trying to simulate what will be the compactive effort that is going to go in field. Okay. So accordingly, we all know that we change the number of Marshall blows
and try to simulate what will be the compactive effort going in field. Okay. So what should be my compactive effort for this dense cold mix asphalt? Okay. So if you will try to see different guidelines, if you look at MOTH, it suggests you to go with 50 number of blows. If you look at IRC SP 100, it tells you to go with 50 number of blows. If you look at AIMS 14, it tells you to go with 50 number of blows. Okay. But 50 number of blows, if you look at any literature, you try it in lab, you'll not be able to achieve air voids, which will be less than 10%. And as we understand, higher is the air void, lower will be the strength. Okay. So I want to have less air void in field, and I want to simulate that in lab also. So if you look at the new guideline, which is MS 19, it does 50 number of blows, and then in addition to that, it applies a 178 kilonewton of static load, which is applied after 48 hours at 60 degrees. Okay. So I'm going to talk about a field trial in which a similar kind of approach was also taken. Professor Verma, please finish within 4 minutes. Now, the next question that naturally arises is that once I construct this cold mix road, it is going to be open to environment. So it is going to cure over time. Okay. Again, I want to simulate this in lab. Now, if you look at literature standard, again, there are different numbers given. When I'm curing, there are two things that are important to me. One is for how many hours I should cure, so that I do an accelerated curing, which will represent at least 1 month to 6 months of curing in field. Okay. The second important parameter then will become what is the temperature at which I should cure. Okay. So typically you'll see that in literature like MOTH, it suggests 24 hours, 38 degree curing. IRC SP 100, you'll see 40 degrees, 72 hours curing. MS 14, it says 38 hours, 24 hour curing. MS 19 says 60 degree, 48 hours curing. Okay. So all this is trying to simulate what is the curing that is going to happen over time in field in 1 month to 6 months, understanding that the extra water that was there in the cold mix will evaporate over time. So once I have decided my mix design in lab, it is going to go to field for construction. And once it is constructed, I'm interested in knowing what I have achieved, right? So like hot mix, we are interested in knowing what is the volumetrics and what are the mechanical properties. Okay. So naturally the question will arise for this new technology, why should I look for mechanical properties if I'm looking at volumetrics? Or why should I look at volumetrics if I'm looking at mechanical properties? We understand that volumetrics is a big picture of what will be the mechanical response. So I want to understand what is the volumetrics. It's quick, it's fast. So for this technology also, we should go with understanding the volumetrics, which is there in the specification as well. So in volumetrics, I need to know what is the density, air void. In mechanical properties, as I have already used stability and indirect tensile strength, I would like to measure stability and indirect tensile strength. In addition to that, since it's a dense mix, I might be targeting to have a structural layer. Okay. And in that case, I'll be interested in knowing what is the resilient modulus I have achieved. Okay. Now, the benefit of getting a field sample is that now I'm getting a sample which is coming from field, which has been cured in field. Okay. I know what is the result of field air void, and then corresponding to that, I am trying to find out what is going to be my mechanical property in field now. Okay. But the challenge is that most of these mixes will have low thickness. If it is a BC mix, probably 30 mm. So there will be a challenge of getting a proper thickness of core to conduct these tests, as these tests also have limitations of thickness. If you talk about Marshall stability or indirect tensile strength test or resilient modulus test, they all have limitations to thickness. In lab, I have the liberty to make any thickness of sample, but in field, I don't have that liberty. So I have to deal with that. So that becomes a challenge in field. So let me quickly go to the field case study that was conducted. This was a road in UP Amroha district, which was a 2-month-old road. The bitumen was a tailor-made bitumen.
and we started looking at its mechanical properties. So this was the flow that we had taken. We randomly started taking cores. So we selected randomly 4 different chainages. We obtained core. From the core, we looked at what is the density and air void. Then we went ahead and measured resilient modulus first, because resilient modulus is not going to damage my sample. Okay, so if I have taken n number of samples, I can find out its volumetrics, do the resilient modulus, and then take it to the destructive test. So that was the first approach, that resilient modulus was actually measured. And then it was taken to conduct ITS test and Marshall stability, because once I have done the ITS and Marshall stability, the samples are gone. Okay. So these are some interesting results we found. Okay. So the chainages were as in this table, and you can see the air voids. Okay. So when it was getting designed in lab, there was a limitation to Marshall blows, and there was no secondary compaction. So the maximum or the range of air void that could be achieved was actually 14.5 to 15%. But in field, the air void was dropped to up to even 7.7%. Okay, these are average in that chainage. So some values are even lower than that. Okay, so how that happened? That happened because an approach which was similar to MS19 was taken. There was a cycle of compaction. So that means the 1 day compaction was completed, and the next day again, some compactive effort was provided to the layer. Also, if you will notice, there is a sort of relationship that was obtained with respect to height and air void, which is telling me that I was actually providing a same compactive effort. But where there was more height, I was providing compactive effort per volume to the material less, which means I was ending up with a higher air void, which is very clear from the relationship we got. Okay. Then with respect to Marshall stability also, it makes sense. Please conclude. As the air void, Please conclude. just 2 more minutes, 1 more minute. So as the air void was increasing, the Marshall stability was actually reducing. Okay. And with respect to resilient modulus, we found that the resilient modulus, where the air voids were actually less than 9%, we were able to achieve the requirement for structural layering. So if you go to IRC 37, you see that there is a requirement of resilient modulus, which is more than 3000 at 25 degree, which we were able to achieve if the air void was less than 9% very comfortably. In the range of 9% to 10%, there was a little bit of gray area. And if you go beyond 10%, definitely the sample were not able to achieve the structural layer capacity. Okay. Similarly, at 25 degree, the requirement was more than 3000 MPa. At 35 degree, the requirement was more than 2000 MPa. Okay, which was also comfortably achieved if the air void were controlled. Okay. So in conclusion, the technology works well, provided you take care of the technology in terms of its requirement for densification, its requirements to simulate the curing in field. Okay. So there is an increase in densification, there is a reduction in air void. Because of evaporation of water and secondary compaction, there was reduction in air void. The Marshall stability increased, the indirect tensile strength increased, and the resilient modulus was achieved in field. Okay. This brings me to a good picture of the technology, but then there are still future challenges. Okay. I would definitely like to take this forward to a DBM layer, because DBM layer is also my structural layer where I would like to have a greener application. But then in this technology, so far in the literature and guidelines we have limitations of 4-inch mold. And if I go with grade 1 DBM, I will have aggregates more than 25 mm. If I use that mix with a 4-inch mold, I might end up compacting aggregate on aggregate and actually not getting compaction in a Marshall setup. Okay. But then I can go ahead with the current form for DBM mixes, where I will have grade 2 with less than 25 mm maximum aggregate size. Okay. Next will come the compaction specification,
with the existing compaction specification, it is difficult to simulate field. We can increase the number of blows to 75 mm. But then if you want to have a secondary compactive effort, you either go to MS-19 kind of a setup, or you actually develop for the Indian scenario, taking the guidelines of MS-19. Okay. But one thing important is that as you are increasing the number of blows, these are cold mixes, or as you are going for a secondary compaction, these are cold mixes. So there might be chances of aggregate breakage. So that means this makes us bring also the aggregate strength into picture. Okay. So these are few challenges with respect to the cold mix, which are very much achievable, and the technology can be fully grown in par with the hot mix, I believe. Okay. Now, what I feel is that any green technology should be sustainable. And when we talk about sustainability, there are actually three pillars. It's not just economic aspect. It's not just not just the economical aspect. It's not just the performance aspect. There is another aspect of social analysis. Okay. So in the sustainability, it's not just the green aspect I'm looking at. I need to also incorporate the social effect. Okay. So one of the issue with social effect with hot mix is that it creates smokes, and a lot of our construction are in actually areas where there is agricultural, in rural roads, we are next to agricultural lands. Okay. So I think this technology can actually improve the social aspect as well. And in fact, when we talk about life cycle analysis, whether it is cost analysis or it is environmental life cycle analysis, these are tools to actually look at the sustainability. Please conclude. Already the 23 minutes. So with this, I will end my talk. Okay. Thanks, Mr. Professor Sudhir Verma, for making a good presentation on cold bituminous mixed technology. Now our next eminent speaker is Mr. Satish Pandey, who will give presentation on modified mixed sill surfacing. Okay. So good afternoon to all of you. At the outset, first of all, I would like to extend my sincere gratitude to UPRRDA and Indian Road Congress for providing me the opportunity to share the modified mixed sill surfacing technology in this seminar. So as my previous speaker has already spoken about the importance of carbon emission reduction in infrastructure development, India, being a signatory of United Nations Sustainable Development Goal, is committed to develop the green infrastructure, and we have to, our endeavor should be in this direction. So after working for 12 long years on cold mix technology across India and constructing the 7,000 kilometer roads out of it, what we realize, like the cold mix technology is a fantastic technology, but it works well when there is a open graded structure. So easily the water can be evaporated out of it, and then this strength gain can happen. So in the case of open graded premix carpet, you have to put the seal coat on top of it, and if the seal coat is proper, then your surfacing will last long. So one of the most common tests which is carried out on the field, like if you pour a glass of water on the surface, then it should follow the camber. It should not go down. So whether it is hot mix, cold mix, or MSS plus, it's a very common test. Any of the surfacing, if you are doing, the one of the prerequisite is that the water should not go in the underneath layer. So with this particular challenge in mind, like whenever we were doing the seal coat in different states of India, we realized that using cationic based bitumen emulsion in the seal coat is causing the lumps formation. So whenever there is high amount of fine content, there is clay content inside it, then there is a lump formation, and we cannot achieve the dense graded surface as required. So
extensively tried in the northeastern region, Bihar, Jharkhand, UP and all. So based upon that, in 2017, we embarked on this research project. And after 5-year long study, we developed this modified mixed seal surfacing technology to address the challenge to achieve the fast curing in the surface layer. So whenever you are carrying out, like in case of low volume road, medium volume road and rural road, there is always a thin surfacing on top of it, which is provided on the WMM surface. The thickness of this surfacing is normally between the 25 mm to 30 mm, and nowadays the 40 mm thickness is also commonly utilized for the as a surfacing on the bituminous wearing course. So in this case, the one of the most important aspect is that whatever surfacing you are utilizing, it should cure quickly and you can open the traffic, open the road for the traffic movement. So with this particular things in mind, we developed this modified mixed seal surfacing, which is based on the modified bitumen emulsion. So in all cold mix technology, the cationic bitumen emulsion is utilized. The IS 8887-2004 is just for the cationic based bitumen emulsion, but this emulsion is not a cationic bitumen emulsion at all. So in terms of its properties, like it can handle the high amount of fines in the mix. So whenever we are increasing the amount of fines finer than 4.75 mm, let us say 40, 50 and 60%, in order to achieve the dense graded mix, there will not be any sort of breaking will happen when you are mixing the mix and laying through a paver. So major ingredient of the modified mixed seal surfacing technology is once again a MSS plus based bitumen emulsion, crushed natural aggregate, mineral admixture, and then we have a well-designed methodology in order to find out the optimum bitumen emulsion content, which can give you a maximum stability and resilient modulus. So as Dr. Verma in the previous presentation has shown some of the fantastic results, like after 2 months, there is an increase in the resilient modulus value in the dense graded asphalt. But what is about like after the 3 days curing in the lab, when we are developing the mix, what should be the resilient modulus? What should be the target Marshall stability? What should be the density, and how this optimization can be carried out? This is the part of the modified mixed seal surfacing technology. So we compared this particular surfacing with the conventional mixed seal surfacing type A and type B, which is commonly utilized for the construction of roads in rural roads as well as in PWDs and state municipal corporation. The mixed seal surfacing is a common gradation. So while developing this particular technology, we extensively worked on different types of aggregate available in UP state. So development was primarily emphasized on the different types of aggregates. So from the Dala area, Haldwani area, we extensively did the mechanical characterization of the aggregate, and based upon it, we formalized the gradation and all. So in terms of the bitumen emulsion, like as I was discussed, so if there is a amount of bitumen emulsion is always a two-phase system. It contains bitumen binder and another one is the water. So when there is a 35 to 40% water, then it is going inside the mix, and until unless that water is evaporated, you cannot achieve the density as required in the field. So you have to develop a system where this bitumen emulsion quickly break and evaporate. This water should be quickly evaporate while you are carrying out the compaction through a tandem roller, and you can open the surface for the traffic movement between 4 to 5 hours time. So with this particular things in mind, we developed this customized MSS plus bitumen emulsion, which is basically the amphoteric bitumen emulsion. It's not a cationic bitumen emulsion, and we carried out the entire characterization using it. And in terms of gradation, like in order to achieve a dense graded surfacing, we have carried out this redesign of entire gradation of MSS. So if you will see the last column of the MSS plus gradation, it is very dense in nature. So in comparison to the conventional mixed seal surfacing type A and type B, it is very dense in nature, and it is also not the continuously graded mix as you can see in the BC2. So therefore, there is an ample space to get it evaporated, this moisture inside the mix in the field quickly. So with this particular objective in mind, we carried out the comparative study in the CRRI by comparing with the MSS based mix using SS2 bitumen emulsion as recommended in IRC SP 100/2014, and then with the comparative evaluation is carried out with the MSS plus gradation and mix prepared
prepared using MSS Plus modified emulsion. So if you will see in terms of the stability after 3 days, the stability was around 7.5 kilonewtons. So there is almost 2.5 times increase in terms of the Marshall stability. This is the glimpse of a dense graded bituminous mix prepared using gyratory compactor. But if you will use the Marshall specimen, Marshall compaction method also, then after 2 hours, curing, like if you can keep the idle the mix in the lab for the 3 hours, you will be able to achieve the shot of dense graded surfacing using Marshall compaction method also. So in terms of the water resistance characteristic, like this is one of the important parameter. So one of the novel feature of this particular mix is that the surfacing will always remain water repellent in nature. So if you will pour any sort of water on the surface, it will follow the camber, it will not go inside it. And this particular study we carried out with the help of laboratory evaluation using indirect tensile strength test. So where the ITS value is determined after water conditioning for 24 hours, and there is significant increase in the ITS value, as you can see in the mix. Mr. Pandey, So- please finish within 2 Yes, minutes. sir. 2 minutes only, not more than that. So if you will see the MR value at 35 degrees centigrade, and I already have, sir, 2 minutes. I'm just having a look on the watch also. So if you will see the resilient modulus values, so there are also a just 2 to 2.5 times increase in the resilient modulus value after 3 days curing. So this is the one of the important parameters while be carrying out the mix design in the lab. Now, this is the glimpse of the resilient modulus testing, and we also evaluated with the wheel tracking test in order to find out the rut resistance of the mix. And once again, this particular surfacing and technology performed very well with its comparative parameters. So these are the typical mix design parameter which we follow in order to carry out the mix design of MSS Plus. So we incorporated the wet ITS and dry ITS value in order to ensure its water resistance characteristic. Now, this is the glimpse of the road, like which is constructed using surfacing, like this particular surfacing was laid using paver. Now, the another advantage aspect is that, like if there is a small patch, then you can even utilize the concrete fury to prepare the mix and lay the surfacing. So the thickness is around 25 to 30 mm. So this is the glimpse of the work which we carried out with concrete fury. This is the surface which we constructed at 2022 as per the direction of Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh. And till now, there is not even a single pothole happened on the surface. So UPRRDA team under the leadership of CEO UPRRDA and the Chief Engineer UPRRDA, Mr. Dubey, has already evaluated the surfacing. This is the glimpse of the surfacing after 3 years. So not even a single pothole can be seen on the surface. So once again, like we worked in this direction, and the Uttar Pradesh Rural Road Development Authority is constructing around 202-kilometer road length using this technology. And we recently completed one 12-kilometer stretch near Ayodhya, which is duly inspected by the Secretary, Department of Scientific and Industrial Research, Dr. N. Kalai Selvi, with the President IRC and Director CRRI, Dr. Manoranjan Parida. And I'm delighted to inform you that, like yesterday on the call of Honorable Chief Minister UP, we have presented this technology to his good office, and Honorable Chief Minister appreciated it and requested to get it constructed, this particular technology on in PWD roads as well. So that's all from my side. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Mr. Satish Pandey ji, for giving a beautiful presentation on the modified mixed seal surfacing. Now our next speaker is joining from online. He is Mr. Manoj Daku, Vice President, MSQ Highways. He will give presentation on adoption of green technology in highway pavements. We welcome Thank you, sir. Mr. Manoj Daku, Vice President, MS Club Highways. Yes, sir. So, thank you so much. So just let me know if my screen is visible so that I can. Yes, it is visible. Please continue. Thank you so much, sir. First of all, thank you so much to IRC as well as UPRRDA for giving the opportunity to talk about various green technologies that we have done, as well as our experience of using coal center plant recycling at Ghaziabad Delegate. So majorly in my presentation, like I might
I would request chair to provide me some like additional time, because there are some key things which are unanswered till now. Maybe through this presentation, I would like to kind of clarify. So majorly what I would be covering is like various green initiatives that we have carried out, and then a case study of Ghaziabad Aligarh in terms of coal center plant recycling, majorly from the point of view of what kind of mixed design that we have carried out, because just now some of our speakers have mentioned the challenges or like various types of mixed designs that one can follow, and then what challenges we have faced while executing, and how did we address those challenges, and also a few research projects that we have carried out just to identify what should be the curing time, as well as what sieves we need to kind of consider very critical for getting a good performance. And then since this is a 2-year-old project, so I will be ending my presentation by showing the performance results from network survey vehicle as well as falling weight deflectometer, how it is performing in last 2 years. So moving ahead, so this is a little bit about Cube Highways. So currently we own about 33 assets across the country, which cumulatively about 12,000 lane kilometers that we operate and maintain. So I think the context is already set why we need green technologies, especially in highway sector, because we kind of contribute about 10% of GHG emissions, that the total GHG emissions that India has. So we contribute about 10%. And if you look at the consumption of raw materials, it is humongous every year. So there is a high need where we need to work out sustainable as well as durable technologies, so that this consumption or need for these resources may go down. So with this background, so within Cube, we always kind of try to do various technologies that can kind of ideal to meet this reduce our GHG emissions. So some of those technologies that we have implemented, I think in last 2 days, many of these would have been discussed, especially related to recycling. Like the new ones, which I would like to kind of touch upon, is microsurfacing. I'm not sure whether it has been kind of discussed in the last 2 days, as well as microfine milling that we are currently using as part of our preventive maintenance, where the existing distressed surface can be micro milled, due to which we will not be requiring any raw materials or new materials that we need that are required. Hence, automatically this will help in terms of reducing the need for the resources. And recently we came up with this mini paving equipment with the help of Wittgen, which is going to help us to treat isolated locations where we face various challenges. So finally, in this presentation, majorly I would be touching upon our experience of CCPR and what challenges we have faced. So a little bit brief about what exactly this Ghaziabad Aligarh, since the session is happening in Lucknow, so this is closer to Lucknow. So this is a road connects Ghaziabad to Aligarh, which is about 126 kilometers. So when we are looking at this asset, within 3 years, the road has kind of completely gone in terms of remaining life. There is no remaining life, as well as too many distresses. So some of the distresses can be seen here. So to identify what should be the ideal technology, we have carried out all possible investigations. And finally, what we have seen is, like, if you look at the remaining life that we have got from the FWD, so there is no remaining life that is left. I'm talking about this is 3-year-old newly constructed pavement. I think many of you would have traveled on this highway as well. So same kind of results we have seen in the network survey vehicle as well. So finally, if we compare in terms of like the percentage of section which has life less than 5 MSA, which is about 1 year of life. So about 60 to 70% sections has less than 1 year life. So what can be done? So there are two options that are kind of where we can look at. One is going with a conventional method, where we go with conventional DBM and BC, which most of us we follow. And then the alternative method is like, can we use some kind of a recycling technique where we kind of consume as much RAP as possible. So based on various payment design, as well as in terms of like looking at how much RAP that we can consume, because we are talking about production of about more than 6 lakh metric ton of RAP, because we are reconstructing the complete road. So like we also need to see where are we going to dump this, or can we reuse it? So from that aspect, what we have seen is like, if we go with this cold recycling, we will be able to consume it like almost 90 to 95% of the material.
Whereas if we go for a conventional mix, we are able to only consume about, let's say, 40 to 50%. So by looking at these numbers, we felt there is a, like, I think we should go with coal center plant recycling. However, again, coal recycling has again two different variation, kind of ways we can execute. Like one is cold in place recycling, which is nothing but almost similar to FDR. And the other one is CCPR, where we'll be kind of taking the material from the project to a central plant and produce the cold mix and then bring it onto the site and lay it. So based on our experience of executing in-place recycling earlier in one of the project, this is in Rajasthan, which connects Agra and Jaipur. So we felt there are some challenges that are associated with respect to executing this cold in-place recycling, majorly from the point of view of controlling aggregate gradation, because when it is traveling on the existing road, we do not know what kind of gradation that the road has earlier, or else we need to invest too much on the investigations. So based on these challenges, we went ahead with coal center plant recycling, even though like I would say it's the first attempt in the country at this scale, where we are talking about using like coal center plant recycling for 90 kilometers, 6-lane road. So so if we move on to the challenges that we are having is like, what should be the mix design that we need to follow? We have IRC 120, we have IRC SP 100, as well as MORTH. So along with that, can we also add any other things like by which we can ensure the mix is foolproof? So based on the experience from various various communities across the world, as well as from IIT Madras, so we're able to kind of develop a mix design where, if you look at along with the tensile strength ratio, we have also added a term, added a property called dynamic stability. That also we are kind of want to check, because most of these mixes are rut prone, so we want to check under rut wheel how this mix is going to perform. So that's why we want to do this dynamic stability. So in terms of gradation, we have fine-tuned little bit gradation that is given in our IRC by making it a little bit stringent, and also identifying what are the critical sieves where we need to be kind of an extra cautious, like 9.5, 4.75, 75 micron. I will also give you the justification why those sieves have been picked. Maybe this can be a helpful for having a quality control mechanism for cold recycling going forward. So that research we have done, that I will present in my next slides. So similarly, in terms of emulsion, we have made it a tailor-made, where we have used VG30 binder. And then if you look at this table, so the one peculiar or the additional thing that we have added is checking performance grading of the residue of the emulsion. So which is currently not there, but we wanted to ensure whatever binder that we are getting from the refinery, is it meeting this standards, because we are talking about laying this just about like 50 to 100 mm below the surface, and we all know the temperatures how it will be in the Delhi NCR region, or especially in the Ghaziabad Aligarh region. So that is why we have kind of added this additional parameter. The process that we have followed is conventional. Only one thing that we have added is like, after curing, we have given additional blows just to simulate the DBM laying process on top of the CCPR. Other than that, majorly like first the gradation of RAP has been verified, and then identified whether requirement of virgin aggregate, and then accordingly we have followed the process that everyone does. So like when we kind of looked at, so this is where I was talking about. So if you look at, this is the rutting graph of this cold mixes, where it can clearly see that the amount of rutting is in comparison or lower than what we have in DBM or something. So this substantiates that the strength of cold recycling, which I think the earlier speakers are also mentioning about. And then in terms of like when we looked at these proportions, finally by looking at the dynamic stability value as well as TSR, we went ahead with 90-10 thing, 90 RAP and 10% of virgin aggregate. So moving forward, but however, when we are talking about executing this at this large scale, we need to have kind of an utmost carefulness. So we have drafted a like SOP at like each process or each step, starting from RAP processing till the curing, how one should follow. So everything has been clearly drafted, and accordingly it is implemented. So the RAP processing, why I was emphasizing a little bit on RAP processing is majorly because we started without RAP processing. So whatever milling we have done, we have straight away used that material. But however, when we try to use it,
there is a lot more non-uniformity that we have observed, especially in ITS values, as well as gradation is not uniform. That's when we realized that we should have a separate screening plant where we should kind of process the RAP. So accordingly, this you can see in this third picture. So where we have mobilized all the screening plants through which the RAP has been processed. So maybe if I'll just so this is how the screening plant is going to work. So the 3 screening plants have been established across the project site, and accordingly to kind of made the RAP into multiple fractions, which you can see in these pictures. So finally, in terms of additional quality control mechanism or the additional things that we have taken care as part of quality control, because the session is predominantly on the quality control. So it's like we have added, let's say for RAP, what should the variability that needs to be taken care? Or for cement, what should the variability that is acceptable? Same goes with water, same goes with emulsion. So every day this testing has to happen, and then it has to ensure that we are within the tolerable or like allowed limits. Then only the like execution will proceed. And the other major thing one has to kind of ensure is like what should the flow of the material. So this is the flow of the material that we have followed. RAP plus virgin aggregate comes first, then cement, water, and then the emulsion. And we have not used any specific plant. I mean the specific plant that are developed for cold recycling. We have modified the existing wet mix macadam plant to get this kind of an quality control or to produce this mix. So this is again an indigenous, so we do not have to kind of bring very costly equipment from elsewhere. And then when it comes to laying, so we ensured laying happened using pavers. We ensured the speed of the paver, as well as in terms of loose thickness. Based on our studies, what we have found is like whatever end thickness that we want, we targeted about 1.2 to 1.4 times that thickness, so that we can achieve whatever design thickness that we want. And then the interesting thing is like in terms of compaction, along with static, we followed vibratory, and then we also used PTR. So now this is a little bit different to what we do currently. So that is why we also did one more research to identify is PTR required. So that also I will present in my next slides. Very interesting studies. These are accepted for presentation at TRB this year. So now it comes to like how did we measure density? So this is neither a bituminous layer nor a granular layer. So, but however, we kind of mixed both and then tried to kind of use non-nuclear density gauge to measure density. And then MDD has been kind of determined in the laboratory, and accordingly we found the compaction results. So, and then we ensured 3 days curing. Now, if someone asks in the audience, why 3 days? It's just a gut feel, but the results eventually what we have kind of come out from the research has showed whatever we have followed is correct. Maybe we'll see in the next slides. So this is a pictorial just to give a flavor. This is the old payment. This is how it used to be, gas of the ligand. Then it has been milled, and then CCPR has been laid. And then once CCPR has been laid, we laid it with a DBM. So this picture, I think, signifies all the 3 different steps that we have followed. And I would also like to mention to the forum, like we have also directly laid bituminous concrete on top of cold recycling or CCPR just to understand whether this can act like a structural layer. The results have been amazing. So that also can be seen in the next slides. So now, like all this are fine. What are the challenges that we have faced? I think this is what is very much important for learning purpose. So first of all, since we are using WMM plant, how are we controlling? Let's say if there are any chunks in the RAP and the amount of material RAP that is supposed to come into the feeder bin, if there is any reduction or any changes happens, how are we going to control entry of cement, entry of water? Emulsion is always very tricky. Initially, we faced a lot more challenges. Then we have kind of automated this process where we have installed this weigh sensors, and then based on that, accordingly, the input has been kind of started giving. And the other thing is like when I'm talking about consuming more than 6 lakh metric ton of RAP. So, and you also know when we mill, there will be a wastage of RAP that will be there because of chunks or various other reasons. So we were running short of RAP. So we had to kind of take RAP from other projects. So quality control in this also has to be kind of very proper. But having said that, as I told, the critical C's that we have followed has ensured the mix quality to be same or uniform. The other thing is water content.
We all know how, like during winter, how the climate is. So when we are storing the RAP, there is amount of moisture very high. So all those have been kind of ensured every day, like by checking what is the moisture content, and accordingly, the water has been added to the mix. The final one, I think majorly many people do not have, I mean, I feel, at least when I started this project, I do not have much of an idea in terms of like what should the curing period. That's why we went on a gut feeling of 3 days. So we used a lightweight deflectometer to determine what should be the, how the strength gain with respect to time, and then accordingly identify the curing period. So in terms of, as I was telling, in those 4 challenges, I have taken 2 challenges which are very critical. One is identifying how gradation is going to impact ITS and what should be the critical sieves that one has to follow. And then the second point is about curing, like and whether PTR is required or not, because the session is also talks about machinery that is required. So these 2 challenges I will be kind of throwing some light. So let's say this is the kind of variation in ITS that we have seen in all 3. I mean, the whole 126 kilometers has been divided into 3 different sections. So for each section, this is the variability that we have seen. So why is this variable? I mean, why are we getting this variability? How can we kind of control it? So like for that, we have collected about 350 samples, both dry mix as well as wet mix, and then try to identify what is the correlation between both. So dry mix is used for gradation and wet mix is used for determining mechanical properties like ITS. So if you look at this is the gradation band for all the 3 sections, the larger the band, so which means the more variation, it is straightforwardly understandable. And then we have used a concept of maximum density line. So where like this dotted line is the maximum density line the literature tells. So what we have identified is like from this maximum density line, what is the deviation that our gradation has, which we call it as personalized normalized deviation. Now this percentage normalized deviation has been plotted with ITS to identify what is its correlation. So the interesting results, if you look at, this is for 9.5 mmC. So this is x-axis talks about normalized deviation and y-axis talks about dry ITS. So if you look at, there is a kind of an, sorry, I thought someone else. So if you look at, there is a kind of a variation that is happening with in ITS when the normalized deviation is kind of changing. Same we observed in 4.75, whereas when we go to the lower sieves, I mean, the trend is almost similar, but for the time thing, I have plotted only for 75 micron. If you look at, the variation in the normalized deviation is not showing any impact on dry ITS. So which clearly shows that if we can control, at least I'm talking about the project that we have executed, Gaza with the ligand, if we control 9.5 and 4.75 mmC, we will be having more uniform mix in terms of mechanical properties. This is the kind of a conclusion that we have got from this research. So which is very much required. And then the other thing is the milling depth. Sir, just please. Yeah, yes, sir. Just Mr. Taku, conclude your presentation. Sure, sir. Sure. So the other thing is impact of PTR and curing time study, which I was talking about. So what we did is like we kind of used dynamic cone penetrometer to identify what is the impact of PTR. So if you look at the blue line shows before PTR how the kind of an depth is varying, whereas this dotted one is after PTR. If you look at, this has thickness of 160 mm, there is a variation. Whereas this is about 100 mm, there is not much variation. So to verify this, we did a t-test. And then what conclusion that we have identified is like, if the thickness is more than 120 mm, the cold recycling, PTR shows its impact in terms of densifying the material. If it is lower than 120 mm, PTR may not be required. So this is one key thing the field people can take away from this. Similarly for LWD, this is the LWD. So maybe I'll just go ahead. So let's say if you look at, this is the kind of a model that we have kind of taken from Michaelis-Menten. So this is medical field model, and try to fit this LWD surface modulus variation. What we have seen is like, if you look at this blue curve, so after 60 hours of laying, there is not much strength gain that is happening. It is in fact getting asymptotically constant. So, and the major strength gain is happening between 0 to 20 hours. So, which means the kind of a trend that we have followed for 3 days, I think it is. Mr. Manoj Shaku, please conclude your speech because it is already, you have taken 20 minutes time. Sorry, sir.
So just 2 minutes I'm completing, sir. So this is the GHG emission. I mean, the major takeaway from this is like at least 24 hours of curing is required. That's what the our conclusion is. And then when we look at GHG emissions, so I mean, we also estimated in terms of how much carbon we have saved. About 80,000 tons of like CO2 has been saved in this project because of the consuming all this RAP. Now, just want to kind of end my presentation with this performance results. So if you look at, this is my I mean, carrying out this, what is my roughness, and then you can see the clear trend. Even after 2 years, my average roughness currently is about 1400 to 1500 mm per kilometer, whereas earlier my average roughness is way about 2500 mm per kilometer. So, and same performance can be observed in rutting, where currently my average rutting is about 5 mm, whereas earlier it is more than 10 mm. Same goes with structural strength, where the reduction in peak deflection can be observed. So what we want to kind of try to say is like, cold recycling is an amazing technology, and if it can be implemented with highest quality control, the road is going to be extremely good. It is going to kind of in line with the hot mixes. That's what we have seen. So these are some of the pictures. Thank you so much. Thank you, Mr. Bhajan Manoj Daku, for your good presentation on reclaimed asphalt pavements. Thank you very much. Thank you, sir. Now, we have had some presentations by our eminent speakers, Mr. U.C. Sahu, Dr. U.C. Sahu, Professor Sudhir Verma, and Mr. Satish Pandey, and from Manoj Daku. And the presentations made by them were excellent and will be useful for adoption of the green technologies in pavement constructions, and as well as we have also had a lot of deliberations on the FTR. Now I request from the delegates and the spectators present in this to have some question answer session. If any question, you can raise here and put your queries here. My name is Dr. Tirumala. I'm currently working in OMS India as a R&D associate. My question is to Sudhir sir. Please speak aloud. Your voice is not clear. Please speak aloud. Are you able to hear me now? Yes. My first question is, are there any comparisons of these mixtures, cold recycled mixtures, with regular hot mix asphalt in terms of rutting? That is the first question. And the second question is, what are your views on higher air void contents of these mixtures versus distribution of those air voids and also rutting performance? I request Mr. Burma. So there are comparisons between cold mix and hot mix, lab comparisons. Field data is very limited on dense cold mixes. Okay, so right now I don't see any direct comparison between hot mix and cold mix for field in a way where there is same traffic and same date of similar date of construction. Okay. Now, but then you have we have a vast understanding of hot mixes, and we have very established guidelines for hot mixes. So we have very specific values that our standards are required. Standards are asking for hot mixes. So that becomes our datum for cold mixes to reach. Okay. Okay. At least at laboratory scale. So have you quantified the rutting of these mixtures? At lab scale, there are many studies that have been done.
We have done it at IIT Patna exhaustively, and also at IIT Bhubaneswar, IIT Madras, IIT Kanpur. People have done it. Is it there are better in rutting resistance, or since the air voids are more, or it is having lesser rutting resistance? So your second question, that's what you are asking also, right? Yes. Second With question respect is to air void. with respect to air voids. So, what are your views on higher air voids of these mixtures versus distribution of these air voids in the mix and rutting performance? Okay. So when you talk about distribution of air void, you will see that the air void is not same throughout. But then it depends on what is there in the layer below the layer you are compacting also. For example, the particular case that I presented, there was an existing premix carpet. Okay, so that became a good base for the cold mix to come. Okay, so in that case, and that too, we are talking about right now 30 mm. Okay, but if you look at larger samples which have larger thicknesses, the air void distribution will be different. You will see that as you are going towards the mid of the layer, the air void will reduce. Okay, similar kind of thing you also see in lab when you are compacting. You'll see that on the top and the bottom, the air voids will be less. There will be boundary effect, and as you go towards the mid, the air void will reduce. With respect to the effect on rutting, there will be effect. So if you think about rutting phenomena, the rutting phenomena is more predominant on the initial top part of the bituminous layers. Okay, specifically the top 20 mm, because when the road is open to weather, the heating starts from the top. Okay, so the top layer is and also will reach the temperature fast, and also it will be under much more stress, under the stress when you look at the wheel loads. Okay, so if you think about from hot mix perspective, having higher air voids in the initial depth is more detrimental. Okay, and then if you think about air void with respect to rutting, you will typically see that the standards are telling you that you do design at 4% air void. But with respect to the in situ air void, just after construction, you see around 6 to 8%. Okay, with an average of 7% that we see. But as you start increasing the air void beyond that, the deterioration starts to increase. And as you go beyond, let's say 10%, the deterioration will exponentially increase. Okay. Okay, thank you. Yeah. Hello. Good afternoon, everyone. This is Deepak Singh from Bitcam, and we are providing cold mix solutions from last 18 to 20 years now, with good results at field level. But still, this technology is termed as a new technology. I think that is the biggest hurdle to get mass allocations at STL level, as STL looks this technology as a new technology and adoption looks a little bit lower side. So I will also request and ask that whether there is any norms when new technology and how and when it comes as a conventional one, because I think that will support technologies to get more allocations from the STS. We'll address it. We'll address it. So your question is very pertinent, but once there is an IRC specification, IRC SP 100 is available, and that too was developed in 2014. So it's a quite mature technology, and it is need not to be considered as a new technology. But besides that, it is a green technology. So green technology tag is always good, and which should always remain intact with it, which will help you to penetrate in different parts of India.
So now we have heard the discussions, deliberations since last yesterday about the new technologies, adoption of new technology and FDR in the road pavement constructions. And these deliberations will definitely enrich our understanding and guide us towards effective and reliable solution for sustainable development. And with this, I hand over to my co-chairperson to conclude her remarks. Okay, I thank IRC and UPRRDA for organizing this seminar workshop. So in this session, we had 4 presentations. Like first, Umesh Sahu sir delivered what is green technology, why we are needing green technology, and what are the challenges for road construction, why we are not adopting. And then Professor Verma told about dense cold mixes, which is a new, because as per IRC SP 100, we are not having the dense cold mixes, but he compared with MS 14 and MS 19 Asphalt Institute. And then we had a presentation from Sri Satish Pandey. He talked about CRRI developed MSS Plus technology, where he has done customization of emulsion and also aggregate gradation, which is going to give us a better performance in terms of moisture. So then virtually, Mr. Banos talked about CCPR and using emulsion. So he showed a field case study where how much emission we are saving, and about 90% RAP we can use for construction of road. So these all are like green, and 2 are from field. So now people are adopting, but we need to work hard to get these new technologies, green technologies, for wider implementation. So I request all the stakeholders and executioner who are there, who can adopt these things, because we do research at lab, IITs does, but it should go to the field. That is the final requirement. So thanks again, IRC and UPRRDA. And with this, we'll take a moment to express our gratitude to the wonderful speakers of the session. मैं अनुरोध करती हूँ हमारे इस टेक्निकल सत्र के चेयरमैन श्री LK पादी जी, उन लगातार तालियों के साथ हम आभार व्यक्त करेंगे. First up, Dr. Umesh Chandra Sahu. With a big hand of applause, can you please present a humble gesture of gratitude to Dr. Umesh Chandra Sahu. I also request the chairman of this technical session to please present a humble gesture of gratitude to Dr. Satish Pandey. I now request the co-chairman of this technical session, Dr. Shiksha Swaroopkar, to please present a humble gesture of gratitude to Professor Sudhir Verma. And to thank the chairman and the co-chairman of this technical session, I would like to invite on stage Dr. Sunny Deol, Associate Professor, NIT Raipur, to please join us. आभार व्यक्त करते हैं हमारे इस सत्र के चेयरमैन श्री LK पादी जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को दिया. And we would also like to thank the co-chairman of this technical session, Dr. Shiksha Swaroopkar, with a big hand of applause. Thank you, ma'am, for giving us your time. We would like to conclude by having a group photograph with all the dignitaries on stage and our respected speakers as well. एक group photograph के साथ इस moment को capture करेंगे.
इसी के साथ आप सभी को बताना चाहेंगे कि हमारा अगला पैनल डिस्कशन अगले 5 मिनटों में आरंभ होने वाला है. So it will be the shortest tea break that we've had, and I request you all to please join us another 5 to 10 minutes and we will quickly start. Thank you. Etched in the heart of India is a story of resilience, determination, and transformation. Welcome to the chronicles of our nation's oldest, strongest, and largest financial institution, the State Bank of India. With firmly established roots laid in the 1800s, we gained experience and practiced excellence. When India unfurled its independent wings, our ambition soared and set the pace for a financial revolution, one that would lead the course of national development, paving the way for banking in India. Working from the ground up, but with sights set high, Bank fostered India's economic growth, partnering towards progress, charting new territories, applying innovative modalities, growing strong on new grounds. Resilience, our strategy, multiplying our strengths. We reinvented ourselves. Bank is accessible, relevant, and ever-present, sustaining and strengthening the farmers of our nation, serving our country and nurturing the dreams of its people, opening doors to financial possibilities, carving the path of self-sufficiency. Our relentless efforts bridge the gap between ambitions and opportunities, revolutionizing the approach towards financial inclusion. SBI actively demonstrates the impact of universal financial access, leading the way for others to follow. Living our mission of providing simple, responsive, and innovative banking solutions. The institution is a financial superstore. And the bank of choice for most Indians, materializing dreams, empowering the common man with endless concrete possibilities, serving all sections of society. Envisioning the future of banking in India, we lead the digital drive, powering technological innovation, making day-to-day banking intuitive, easy, and secure, despite being digitally evolved and present in every nook and corner of India, maximizing reach to the most inaccessible and remote parts of the country, marking our presence where others fear to tread, making India proud globally. Our culture is shaped by our employees, serving customers with a unified purpose, pacing ahead with technology, personalizing and enhancing the customer journey, guided by the core values.
we are compassionate banker to ग्रामीण भारत की सड़कें केवल दूरी नहीं घटाती बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का आधार बनती हैं। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पर्यावरणीय दूरदृष्टि, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सक्षम नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में क्रियान्वित हो और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सशक्त मार्गदर्शन में इस दिशा में पर्यावरण संवेदनशील और तकनीकी रूप से उन्नत विधियों को अपनाते हुए सड़क निर्माण की दिशा में अभिनव कदम उठा रहा है। 30 mm मोटी सीमेंट ग्राउटेड बिट्यूमिनस मिक्स CGBM एक ऐसी नवीनतम पद्धति है जिसमें बिट्यूमिन को सीमित मात्रा में लगभग 2.5% उपयोग कर उसकी कुटाई के पश्चात एक विशेष प्रकार के सीमेंटेशियस ग्राउट के साथ समाहित किया जाता है। ये संयोजन न केवल सतह को मजबूत बनाता है बल्कि इसे जलभराव, ईंधन रिसाव और तापमान अस्थिरताओं के विरुद्ध भी अत्यंत सहनशील एवं मजबूत बनाता है। वर्तमान में ये उन्नत तकनीक प्रदेश के 12 जनपदों में लगभग 282 किलोमीटर लंबाई की सड़कों पर सफलतापूर्वक लागू की जा रही है। जलभराव जैसी समस्याओं से बचाते हुए इस तकनीक से निर्मित सड़कें वर्षों तक अपनी मूल संरचना और प्रदर्शन बनाए रखती हैं। बार बार की मरम्मत की आवश्यकता न होने से गिट्टी, बिटुमिन व अन्य संसाधनों की बचत होती है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक सार्थक प्रयास है। ये सतह भारी यातायात से उत्पन्न गड्ढों, जलभराव और तेल रिसाव के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है, साथ ही तापमान परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। हमारे दक्ष अभियंताओं द्वारा सावधानी पूर्वक डिजाइन, मिश्रण, अनुपात और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है, जिससे सड़कों की दीर्घकालिक टिकाऊपन और उत्कृष्ट प्रदर्शन की गारंटी मिलती है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा अपनाई गई ये तकनीक पर्यावरण संवेदनशील विकास, नवाचार और सुदृढ़ अधोसंरचना निर्माण का जीवंत उदाहरण है। ये केवल एक सड़क नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को तकनीकी सशक्तता, स्थायित्व और सतत प्रगति की ओर ले जाने वाला रास्ता है। आधुनिक भारत की विकास गाथा अब केवल भौतिक संसाधनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसमें हरित नवाचार, पर्यावरणीय दायित्व और समावेशी अधोसंरचना का भी समावेश अनिवार्य रूप से देखा जा रहा है। इसी बोध के साथ उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हरित दृष्टि, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रेरणादायक नेतृत्व तथा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सशक्त मार्गदर्शन में प्रदेश की ग्रामीण सड़कों को नवीन ऊर्जा, तकनीकी सक्षमता और पर्यावरणीय संतुलन से समृद्ध कर रहा है। इसी क्रम में कोल्ड बिट्यूमिन के साथ 30 mm मोटी MSS प्लस तकनीक का प्रयोग प्रदेश के 6 जनपदों में 202 किलोमीटर लंबाई के मार्गों पर सफलतापूर्वक संपन्न किया जा रहा है। इस नवोन्मेषी विधि में कोल्ड बिट्यूमिन इमल्शन का प्रयोग कर बिना किसी ऊष्मा स्रोत के सड़कीय सतह का निर्माण किया जाता है, जिससे ईंधन की खपत शून्य और कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी सुनिश्चित होती है। ये तकनीक लागत प्रभावशील,
वातावरणीय अनुकूल और जल प्रतिरोधी होने के साथ साथ हॉट मिक्स एवं पारंपरिक MSS प्लस तकनीकों की तुलना में अधिक यांत्रिक दृढ़ता व दीर्घजीविता प्रदान करती है। निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया में संरचनात्मक डिजाइन, मिश्रण संतुलन एवं गुणवत्ता नियंत्रण पर हमारे प्रशिक्षित अभियंताओं द्वारा विशेष सतर्कता बरती जाती है, जिससे कार्य न केवल शीघ्र पूर्ण होता है बल्कि श्रमिकों की सुरक्षा और कार्यस्थल पर वायुमंडलीय शुद्धता भी सुनिश्चित होती है। ये तकनीक न केवल सड़क निर्माण की नवीन परिभाषा प्रस्तुत करती है बल्कि ग्रामीण अंचलों में आवागमन, व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाकर स्थानीय जीवन गुणवत्ता और आर्थिक उन्नयन में भी योगदान दे रही है। ये पहल मात्र अधोसंरचना विस्तार नहीं बल्कि पर्यावरणीय उत्तरदायित्व, सतत विकास और हरित भविष्य की संकल्पना को मूर्त रूप देने का सशक्त प्रयास है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश हरित, टिकाऊ और समृद्ध भारत की ओर दृढ़ कदमों से नहीं वही से होगा।
Ladies and gentlemen, can I please request you all to please be seated? We are now proceeding with the next panel discussion of the day. So on the topic, adoption of new technology, challenges and the way forward. In this league, for this panel discussion, I humbly invite on stage the moderator, Shri Arvind Kumar Jain, Engineer-in-Chief and HOD, UPPWD, to please join us. So welcoming on stage the moderator, ladies and gentlemen, please welcome Shri Arvind Kumar Jain. A very warm welcome, sir. In order to welcome sir, I humbly invite on stage Shri Surendra Kumar Garg, Director ANF IRC, to please join us. उन लगातार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं श्री अरविंद कुमार जैन जी का। और उन्हीं लगातार तालियों के बीच मैं स्वागत करती हूं मंच पर हमारे पैनलिस्ट का। इन दिस लीग फर्स्ट अप आई वेलकम डॉक्टर सुधीर माथुर, चेयरमैन ड्राफ्टिंग ग्रुप IRC 142 and member H9 committee, to please join us. A very warm welcome, sir. ये तालियों की रफ्तार और बढ़ेगी अभी, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। In this league, I also welcome Shri Manoj Kumar Shukla, Chief Scientist, CRRI, to please join us. Shri Manoj Kumar Shukla. उन्हीं लगातार तालियों के बीच स्वागत करते हैं मंच पर। I also invite on stage Professor Dr. Ankit Gupta, Professor IIT BHU and Ministry of Road Transport and Highways, Chair Professor and Co-Convener H9, to please join us. A very warm welcome, sir. And we also humbly welcome on stage Shri D.D. Pathak, State Technical Officer, UPRRDA, to please join us with a big hand of applause. Welcome, gentlemen. And with this, I humbly hand over to the moderator of this panel discussion to please proceed. It's okay. Good evening, all. So finally, we come to the last session of this 2-day seminar on FDR and green technologies. Since last 2 days, we have been deliberating and discussing on various topics related to the new and green technology. And all the discussions have been very lively. The inputs have come from all the corners of the field, from the academia, from the researchers, from the industry, from the departments, and from the PMGSI system who have implemented this FDR technology countrywide, but the UP has taken lead in it. They have constructed more than 5,000 kilometers of road with FDR, with CCS. So to conclude this seminar, this panel discussion is very, very important. That's why we have very distinguished panel with us. To my right, we have Dr. Ankit Gupta, who is professor at IIT BHU. He has been very actively involved with the departments
the field departments, PWD, RED, MORTH, NHAI, and he has been practicing all the new and green technologies in the field under his supervision. So we welcome him to this panel. And to my extreme right, we have Mr. Pathak, who is State Technical Officer in UPRRDA. He has very vast experience in the implementation of FDR technology with CCS in the field. So give a big round of applause to these two panelists. And to my left, we have Dr. Sudhir Mathur. He has been a scientist with the CRRI, and presently he is the chairman drafting group of IRC 142, which was presented yesterday, and he has been member of H9 committee, who is looking after the drafting of this 142 IRC code, which deals with the FDR technology. And to my extreme right, we have Manoj Kumar Shukla. He is chief scientist with CRRI and very actively involved with the departments in implementing the FDR technology as well as other green technologies such as CGBM and other technologies. So with this distinguished panel, we start this final and concluding session. And I hope that whatever deliberations have taken place for last 2 days, they will culminate and they will be summarized in this panel discussion. And to start with, I invite Dr. Sudhir Mathur, chairman of drafting group IRC 142 and member H9 committee, to please come and give his presentation. Dr. Mathur. For each presentation, we have kept 10 minutes time, so please restrict to your time limit. And then finally, we will have question answers from the audience. So very good afternoon to all the distinguished delegates who are here in this seminar on full depth recycling and green technologies in road construction. Actually, yesterday, Mr. Rahul Patel said that you have to give a presentation on the adoption of new technologies, challenges, and what is the way forward. So I just thought that what are the new technologies and what are the challenges in adopting it and what are the way forward. So when I looked at the presentation of the ADG, Mr. Sudeep Chaudhary, and then Sarangi Saab and many others, they were saying that many technologies are there, but somehow large scale adoption is not there, unfortunately. For example, I'll just start with the machineries, Sometimes we look at the videos which we get that, okay, China is doing this much work, so beautiful roads they have constructed. And, in some European countries, beautiful roads have been constructed and they are adopting very latest state-of-art machineries and which can do wonder. And you need very little manpower to do, to check the quality. Everything is done in a very, very automotive manner. So when I looked at his presentation of Mr. Sudeep Chaudhary, he has mentioned that there are many new machineries which are coming up in our countries, like adoption of automated and intelligent machine-aided construction of national highway projects, which can do a continuous monitoring of the, the density and everything, they can do it. And then there is also a mobile quality control vans which are there in our country. Similarly, network survey vehicle is there, which can do the survey of thousands of kilometers of road in a very, very short span of time. And then FWD equipments are there, which can do a complete analysis of the entire pavement structure. But what I found that these are still very limited in use. They are not being adopted in a very
extensive manner in our country, though they are very useful equipment. So the reason which I found that, first of all, is there is very high upfront cost for procuring these equipment. Of course, I'm not talking right now about the FDR only, but I'm talking from the perspective of the entire road construction in our country. And then they are very capital intensive. So contracting industry is of the view that implementing new technologies can be expensive, as they are not sure that it would ultimately result in deployment in terms of less manpower and other infrastructure, which would result in the saving towards the total project cost. Because they say nowadays, if you maybe, some of you may be knowing that now in EPC projects, the projects are bidded at almost 35 to 40% lower than the estimated cost. So under such circumstances, going for very high-end machinery, which is very, very useful and can really do a wonderful job, but the contractors are not in a position to adopt it. And then second thing is that high-end machinery knowledge and skill of contractor, consultant, departmental person involved in construction is at very low level to handle such type of high-end machineries. So these are the constraints, in the implementation of, though we talk about it, and it has been, the ministry has given the project on a pilot basis to adopt these type of machineries in highway construction, so that we can do at a much faster pace the construction with a better quality, with less manpower deployment. But the knowledge is very limited. It is still on a pilot basis. So if we really want to adopt these technologies, the knowledge should be disseminated to the ground level people, for the implementation. Now, second thing which is very pertinent, we all have been talking about the use of marginal materials, locally available materials, and waste materials, so that we are all talking about the green technology, and we must use it so that we can reduce the cost, and at the same time, whatever is locally available, that can be used. So if I list the materials which can be used, there are many, like fly ash for embankment and subgrade stabilization, plastic waste. We have been talking about the plastic waste. Then construction and demolition waste, reclaimed asphalt, steel slag, granulated slag. Then white topping to rehabilitate deteriorated bituminous pavement, red mud, phosphogypsum. But the problem actually is this, that all these things are still not being done in a very, very large scale. They are being done on experimental basis in different parts of the country at a very, very lesser kilometer. So unfortunately, the performance data of the finished experimental or pilot road projects and difficulties in execution such roads and precautions to be taken up on a wide scale is still not known to the agencies. So now when I'm dealing with, for example, national highway projects, and if I ask the DPR consultant कि अरे आप एक रोड का मुझे DPR बना के दो जिसमें कि मैक्सिमम लोकली अवेलेबल मटेरियल्स का यूज हो, जो कि चीप हो, तो वो कहते हैं कि सर हमारे को बहुत ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में, तो वो अपने इनएबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं कि भाई इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा पता नहीं है, एंड दैट इज व्हाई दे आर जनरली not very keen to take these materials in the project evaluation. That is a big problem. Similarly, जो contractors है, they have limited interest as they are not sure of the long-term performance of these materials. For example, जैसे fly ash है. Fly ash has been very widely used in embankment construction. क्योंकि initially, I still remember 96-97 में जब निजामुद्दीन का project चल रहा था, तो उस समय फर्स्ट अप्रोच एम्बैंकमेंट बन रहा था जिसमें फ्लाई ऐश प्रपोज किया गया था, एंड मिनिस्ट्री हैज टेकन इनिशिएटिव. दे सेड ओके, वी विल टेक ए रिस्क
and do it. And that was a success story. So unless ये हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, जैसे आज हम अभी प्रीवियस सेक्शन में कोल्ड मिक्स की बात कर रहे थे, कोल्ड मिक्स और हॉट मिक्स को लेकर के भी बड़ा डिबेट है कि कौन सी टेक्नोलॉजी बेटर है, क्योंकि जब आप कॉन्ट्रैक्टर जिसको कि परफॉर्मेंस भी सेटिस्फैक्ट्री देनी है, वो रिस्क नहीं लेने चाहते। वो कहते हैं कि हमें तो आप फुल प्रूफ चीज बताओ कि हमको क्या करना है। सो अनलेस इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो मिनिस्ट्री है या पीडब्ल्यूडी है, जैसे आपने यूपी पीडब्ल्यूडी में बहुत अच्छा काम किया कि यू हैव टेकन एफडीआर ऑन ए वेरी लार्ज स्केल। अगर यही आप छोटे लेवल पे कहीं 2-4 किलोमीटर बना के खत्म कर देते तो ये एक पेपर छप जाता और उसके बाद लोग कहते हैं कि हाँ भाई एफडीआर टेक्नोलॉजी है। लेकिन उसको अगर वाइड स्केल में यूज करना है, जैसे आज मॉर्निंग सेशन में एक मैडम बता रही थी हिमाचल प्रदेश से कि भाई कहते हैं इनिशियली देयर वाज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर अडॉप्टिंग द एफडीआर टेक्नोलॉजी, बट व्हेन दे सॉ द प्रोग्रेस ऑफ उत्तर प्रदेश they immediately went for it. And similarly now many other states are coming forward. So the thing is that अगर हमको ये न्यू टेक्नोलॉजीज को इंडक्ट करना है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को इंडक्ट करना है, तो मिनिस्ट्री को इनिशिएटिव या पीडब्ल्यूडीज को इनिशिएटिव लेकर के लार्ज स्केल पर इनको लेके आना पड़ेगा। जब तक हम इसको लार्ज स्केल पर लेकर के नहीं आएंगे तब तक ये हमारी टेक्नोलॉजीज केवल किताबों में रहेंगी। आईआरसी की गाइडलाइंस बन गई, आईआरसी ने हमको स्पेसिफिकेशन दे दी, दैट इज ए वेरी गुड थिंग, क्योंकि अगर आईआरसी का डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो nobody will adopt those technologies. It is very essential to have some documentation and then that if it is coming from IRC in the form of guidelines. But uska wide scale implementation ke liye it is very necessary that the गवर्नमेंट, पर्टिकुलर गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट पीडब्ल्यूडीज हो या मिनिस्ट्री हो या कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, उसको लार्ज स्केल पर लेकर के जाए। क्योंकि जब हम लार्ज स्केल पे लेके जाएंगे तभी हमको पता लगेगा कि एक्चुअल में वहां क्या जैसे अब आप लोगों ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बनाया कि भाई अब ये सब चीजें हैं, एफडीआर यूज करने में मुझे ये प्रॉब्लम्स आई, इसको मैं कैसे हैंडल करूं। तो इसी तरह से और जितनी भी टेक्नोलॉजीज है, चाहे वो इतने सारे मटेरियल्स हैं, अब हम लोग उनकी सबकी बात करते हैं कि भाई स्टील स्लैग है, ग्रेनुलेटेड स्लैग है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, म्युनिसिपल वेस्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे म्युनिसिपल वेस्ट है, म्युनिसिपल वेस्ट पेपर हैव बीन पब्लिश्ड कि ओके इट कैन बी यूज्ड, बट उसको सेग्रीगेट कैसे करें। अगर हमको प्लास्टिक वेस्ट यूज करना है तो कौन सा प्लास्टिक ठीक है, कौन सा प्लास्टिक ठीक नहीं है, उसको मैं प्लास्टिक में कहाँ से लेके आऊंगा, इतना लार्ज स्केल पे प्लास्टिक मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, विच कैन बी यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन। सो अनलेस ऑल दीज थिंग्स इज डन इन ए लार्ज मैनर, हमारे को कभी एक्सपीरियंस ही आएगा एंड वी ओनली विल टॉकिंग कि भी ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली में यूज नहीं हो पाएगी। सो दीज आर सम ऑफ माई points which I just wanted to say. So the way forward is collaboration and knowledge sharing among its industry, stakeholders, researchers and policy makers to share knowledge, best practices and what are the lessons learned. Provide education and training program to develop skills to effectively use new materials and technologies. Few site visits should also be arranged. जैसे suppose कहीं पे कोई अच्छी टेक्नोलॉजी तो और स्टेट्स के लोगों को लेके जाओ, वहां पे दिखाओ कि भाई ये टेक्नोलॉजी हमने यूज करी, इट इज वेरी गुड, व्हाई डोंट यू आल्सो अडॉप्ट। सो इस तरह का, इसी तरह से मिनिस्ट्री और स्टेट पीडब्ल्यूडीज को हैव टू टेक ए कैलकुलेटेड रिस्क in the implementation of large scale construction on some selected road projects with the different marginal and waste materials to see and assess the problems associated with these non-conventional materials and examine their long-term performance. जैसे अभी मॉर्निंग में ही बात होती है कि कोल्ड मिक्स और हॉट मिक्स में बड़ा अभी भी somebody was saying कि अभी भी वो कहते हैं कि यार ये न्यू टेक्नोलॉजी, जबकि बहुत सारी जगह यूज हो चुकी है। तो वो इस तरह की जो माइंड में लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी कंसल्टेंट है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो फील्ड में बैठे हैं, जो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो अभी भी कन्वेंशनल दिमाग के हैं। उनका वो ये सब चीजें हटाने के लिए इन सबको लाना बहुत जरूरी है। एंड जो नई टेक्नोलॉजी अगर ला रहे हैं तो उसमें
जो कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस है वो भी कुछ इस तरह से होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए वहां कोई फेलियर हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स मत करो. लेट द गवर्नमेंट और द डिपार्टमेंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ओके वी हैव डन इट, वी जस्ट वांटेड टू सी द परफॉर्मेंस. और अगर थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर को रिस्पॉन्स, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर विल नेवर कम फॉरवर्ड टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजीज. सो विद दिस आई जस्ट conclude. So by addressing these concerns and challenges, working together, we can facilitate the adoption of new technologies and unlock their potential to drive innovation, growth, and improvement on the ground. Thank you very much. Thank you, Mathur Sahab. You have flagged very pertinent issues regarding the adoption of technology, regarding the issues in the new technology. And of course, until we take the risk, we cannot move forward. But that risk should be calculated, and somebody should be there to shield the risk. Until otherwise, the risk takers, they are always at risk. So risk also has its own limitations, and yeah, risk should be shared and it should be shielded also. Now, we come to the next presentation, and our next speaker is Mr. Manoj Kumar Shukla. He is the Chief Scientist at CRRI, is very actively engaged with the field practices of new technologies. Thank you very much, sir, for the introduction. Distinguished delegates on the dais, distinguished officers of NRIDA, UPRRDA, Border Roads, and fellow colleagues and other officers from the other state departments. It is indeed an honor for me to share my experience of the technologies which are being used in UP state. So I have tried to focus on the technologies which are being used in the UP. And in fact, we may call it as a new technology, but they are slowly getting into the mainstream. And we must appreciate that UPRRDA is very receptive to use the new technologies which are being developed either by the CRRI or by the IITs. So they have taken to use the technology for hundreds of kilometers. So we cannot say that it is purely on the trial basis, but it is, we can say it is being implemented on the large scale. And as we can say, in the previous discussion, it was pointed out that we should go for the economic viability of the project. We should go for the lower cost of the work. But if we are going for the new technology, which should be environmentally sustainable, so we should not much bother about the cost. That is my submission. We should also try the technologies which are higher in cost, but that can give the durable roads. At the same time, they are environmentally friendly, because nowadays we see in hill areas so much of new construction has taken place, and we see so much of devastation is there. So we should be very cautious to use the technology. We should not much bother about the cost implications. Of course, we should try to optimize the cost, but cost cannot be the one parameter, because generally we engineers, civil engineers especially, submit the proposal to the higher authority. So higher authority, they said you reduce the cost many times. But we should take our stand that yes, this should be the cost of the project. Like in the previous discussion yesterday, I came to know that in FDR work, especially because now almost more than 5,000 kilometers of FDR has been executed in UP at certain rates. But now it is thought that the rates of the FDR per cubic meter is going to be reduced. So we have to really think over it, why we are going to reduce the cost.
because we should not compromise with the quality of the work. Whatever quality of the work which we have executed so far in the FDR, that should not be compromised at any stage, because we have seen in the after 3-4 monsoon season, there is no such major complaint about the FDR work. Maybe in isolated sections, some issues may be there, but no major deficiency or major distress or major failure has been reported in FDR. At the same time, we should also think about that whatever the tender cost nowadays, we are getting 35 to 40% lower. That is also a major concern. So we have also to think about it, whether we are going to compromise with the quality or not. In FDR, we must appreciate that the good amount of machinery has been used so that we could do a good quality work. So that is why the quality is consistent. In FDR, I would like to share my experience also in FDR works. CRI has been associated and IIT has also been associated. So variability of material mix is there on the road. When we take the core, at some place we cannot extract the core. But if we take the core 1 meter above, we can get the core. So that we can say the variability of the mix is there. But of course, good quality is there. So we have to think about it also. Then CRI and IIT has taken some performance study also of the FDR work. So with the non-destructive test, now the evaluation is being done. And we would like to see what is the performance. Now it is the high time, sir, so that we can get a performance data. A new technology which has been implemented on a large scale, that is FDR, MSS plus CGBM in UP. So we should also award some project work to IITs or CRI to take the performance study, so that whatever failure mechanism is there, that can be established. Whenever a new technology is there, of course, after certain time, some failure mechanism will be there. Like in CTB layer, it is envisaged that after certain period, the cracks will appear on the surface. So a crack relief layer is proposed inevitably during construction only. So now we have to see whatever we have thought of for the CTB layer, we have envisaged same crack relief layer for the FDR layer, but whether it is going to happen or not. So we have to do a performance study for that purpose also. Sir, these 5 technologies like FDR, MSS plus cold mix, including BC with cold mix technology, is being implemented in UP, and then thin white topping and short panel concrete is also being used. Then another technology is cement grouted bituminous mix. So in the last 2 days, we have discussed a lot about the FDR. Then my colleague Satish Pandey. Yeah, please, sir. Okay, sir. So these are the 5 technologies: FDR, MSS plus, then cold mix, including BC with cold mix technology, then thin white topping and short panel concrete. This has discussed a lot. So I would like to give a brief introduction about the cement grouted bituminous mix. What is the necessity of using this technology, and what is the technical issues? What are the challenges that are being faced in implementations, and other factors also? Like for FDR, many issues are there. Some issues have been discussed and some has not been discussed. Like in rainy season, some issues are there. Rainy season means pre-monsoon season, or sometimes this year we see the extended rainy season. So this season we have to avoid the execution of FDR. Otherwise, the excessive moisture, we may not be able to achieve the desired strength. Then the machinery maintenance issues, because so much of machinery cannot be deployed on the site. It is limitations is there. So sometimes due to breakdowns and maintenance requirements, the work is delayed. Then shifting of machinery, because huge amount of machinery and heavy machinery is required. So this is also an issue
challenges which is being faced in the FDR technology. Then additive related issues. This of course is a very important issue, and in the one session where my panelist, one of my panelists, Sri D.D. Pathak ji has thoroughly discussed. In fact, he has given a genesis about the understanding of the FDR technology, the implementation of the FDR technology, and the problems which are being faced in the execution of the FDR technology, followed by the remedial measures taken during the executions. So he has already thoroughly discussed about it, and we have been enriched with this discussion. Then, since these technologies are in the developing stage, so of course the training is must for all the technologies. So skilled labor is required. For that purpose, sometimes it is very difficult to arrange it also. Then in PMGSY roads, most of the roads is 3.75 meter or 5.5 meter. So it is very difficult to divert the traffic. So that is also a big challenge to carry out the new technology in PMGSY roads. So we also have to take care of provision of making some alternate arrangements during the executions of this technology, especially the wearing course. Like in some of the roads we have visited, the semi-layer was being laid, and it was very difficult to stop the traffic. So that is where unintentionally we have to compromise with the quality. So that can be taken care of to divert the traffic. And sir, one issue is there in PMGSY roads also, because some of the PMGSY roads are near to the mining areas, river mining areas, where the mining is done of the sand. So there very heavy traffic movement is there. So there we should not go for the design of 30 mm BC. We have to do the proper designing. Even though if we do the design as per the IIT PEP software, we can get the lower thickness, 40 mm or 50 mm. But as per the provision of the IRC code, if the traffic is more than 40 MSA or 30 MSA, then we have to provide minimum thickness of bituminous layer 100 mm. Even if it is not warranted, though it is written for the national highway should be there, if it is not warranted, even in that case, even in PMGSY roads, if it is near the mining areas, we have to provide at least minimum 100 mm BT thickness. Two roads we have encountered, just for example, one is near Kosambi and another is near the Gorakhpur. Just for example, so when we design the PMGSY road with the FDR technology or the wearing or for the maintenance purpose, we have to look into this aspect also, sir. And then of course, the compressive strength parameters, Dr. Sudhir Mathur sir has also given some ranges. What should be the range after 7 days and all. And requirement of homogeneous mix, proper mixing of reclaimed material with stabilizer is essential. So that has to be proper ensured. So quality control is must in case of all the technologies, and especially when I'm talking about the FDR. Then sir, regarding the cold mix with BC, because this is also being adopted, a new technology we can say, because as per the ISP SP 100, whatever IRC codes are there, the provision is not there to use the BC with the emulsion. But it is being adopted as a new technology, and it is being successfully laid also. But challenges are of course there, because one thing is the gradation. When we are going for the 30 mm BC, then of course the finer gradation we are going to adopt. So then we have to see the quality control issues, especially when we are using the emulsions. And we can go for the wearing thickness up to 40 mm also, as I have discussed. Then, sir, one of the important thing is that after laying the FDR layer, we should not wait for the different approvals. That is one issue which I have discussed with the various engineers, various stakeholders which are implementing the FDR technology, that various procedures are there, like for first we go for 100 meter of trial stress, then laying the full length,
then different approvals are required before laying the BC layer. So we have to make a shortcut because now we have gained a sufficient experience of using the FDR technology. So we have to cut short this time period so that we can effectively cover the FDR with the BC layers. Because in one of the case in case of this FDR process that it was followed in NHIDCL road, there also wherever it was laid within time, so distresses was less on the sections. So we should try to cover as early as possible. So now I am coming to this new technology, cement grouted bituminous mix. Because we generally see three major distresses are there in the flexible pavement. One is the rutting, another is the cracking, and another is the moisture-induced damage in the pavement due to the water logging on the surface. So each kind of distresses has found a different solutions. But if you think of one solution, that is a cement grouted bituminous mix. It is a composition of two processes. First is the laying of porous bituminous mix layer, 25 to 30% air whites, depending upon the gradation. Because it has got 2-3 gradations, so depending upon the gradation, the size and shape of the aggregates at different quarries. This varies. So generally, this is the range of the air whites. Then filling these air whites with the cementitious material. Sir, 2 minutes, sir. Because sir, it is a new technology which is being implemented in UP state, and we are getting a lot of calls from the different stakeholders that they are facing these challenges. So just I would like to highlight 2 or 3 issues, sir. So this is just an overview of this thing, that first we have to maintain the roads in a good profile. If any distresses are there on the road, like pothole are there, patches are there, so that you have to fill first. Then laying tack coat on the surface, then putting a porous bituminous layer of high air whites. Then pouring the cementitious material mixed with the water, and then squeezing so that there should not be any extra deposit of the cementitious material on the surface, and then curing for 2 to 3 days. So the surface will be ready for the movement of the traffic, sir. So this is all about the CGBM technology, and it is being used in UP state in a big way, sir. So this is one of the few photos of the CGBM surface in rural roads, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Professor Shukla. You have given a very valuable insight into the various green technologies and the challenges being faced in their implementation. But with all due respect to you, I want to express my one disagreement with you. As a researcher, it's okay when you say that costs should not matter. But as a government, the cost matters a lot. Because each rupee we have to save for the other projects. You see, as a study, our Honorable Deputy Chief Minister exhorted us that we should focus on not only on the last mile connectivity, but to the connectivity to each home. And that is very true, because when we are talking of the developed Bharat by 2047, then definitely we have to work a lot. And we are the people with very limited resources, with very limited money. So each rupee matters to us. So it's my humble request to all the researchers who are doing research in the field, they should keep the economy also in the mind, because we are not a very rich country where we can spend left and right. So we have to save each and every rupee for the unfinished projects of our nation. Thank you. Our next speaker is Dr. Ankit Gupta. So he needs no introduction. I have already told that he is professor at IIT BHU and very actively engaged. It's very good that he's not only an academician, he's a very much practicing engineer with the NHAI, MORTH, PWD. So, Dr. Gupta. So, good evening, everyone. All the distinguished on the dais and off the dais. I have not prepared any presentation for this discussion part because this is a discussion. So probably I'll give more time for the discussion, and just initiating the discussion,
I'll be giving some of my points which I have discussed yesterday, and then after that some counter discussion or some counter presentations which I have seen, I have learned, and I had discussed with many of you also. So for the some time, let us pause the FDR topic. There are some other technologies also which we have discussed. Okay. So one thing, I think UP has started working with the cold mixes. Okay. And cold mixes in the BC and the DBM. So that's a very great initiative. Okay. But when again we are looking as a cold mixes for the BC DBM, again there is some kind of anomalies in the codes also. Okay. Because the gradations which has been given in the IRC SP 100 and the MORTH specification of 2013 are two different gradations. And if we are doing with a BC 13 mm as per the MORTH one, again that's a third different gradation. So again, if we have to work with a BC with the cold mixes in the low volume roads, because the BC we are right now doing with the HMA, we can do it with the cold mixes or the emulsions also. So which gradation has to be finalized or which gradation will give us a best performance is probably one more topic which we need to ponder upon. Similarly, I have heard with Professor Umesh Sahu, I think he visited in Bihar, and then there were some stretches where they have done the DBM also with the cold mixes. So again, it's a very good idea to start at least looking back to if some kind of a BM or DBM also can be made with the cold mixes. But with a caution that this is only good technologies, probably for a limited amount of a loading, means probably for the low volume roads. Okay, so because cold mixes have certain disadvantages when you are talking about a high loading. Okay, so that is one part where I think UPRRD has already started. Okay, I just had only one point that the gradations needs to be looked upon. Plastic blended with the bitumen is, I think, the NRID has also sponsored a project related with the plastic blending in the bitumen. And we are also doing a project sponsored by the Ministry of Road Transport and Highways, blending the plastic into the bitumen. So let me clear out that how we are blending the plastic. We are not directly getting the plastic from the municipal waste and blending into the bitumen. So what we are emphasizing is that there should be one MSME or a medium scale industries who will be doing a processing, segregation, all the different type of a plastics. And right now, the kind of the results which we are having is only the LDP or the HDP only can be blended well. LDP is probably some to a higher percentage of 2 to 3%. If I'm not using any kind of a compatibilizers or the chemical stabilizers, okay, to because the specific gravity of the plastic is less, so normally it comes on the surface. So we need some kind of a compatibilizers to have a better kind of a blending of the plastics into the bitumen. So that kind of a project has already been we have done with the MORTH, and I think Dr. Nikhil has done with the NRID also. So again, that could also be tried, means using a blended kind of a using a blending kind of a bitumen for the making a mixes. So again, this plastic modified bitumen can be a game-changing kind of a thing, specifically for the high volume roads also, because we are facing a lot of rutting issues nowadays in new projects. And because plastic is giving a lot of stiffness to the bitumen, it is acting as a very good stiffening agent for the bitumen and the mixes. Although the plastic comes with a challenge of a fatigue performance. So again, that we need to work out. We have done some kind of studies to maintain some kind of minimum required fatigue performance, because plastic will not improve the fatigue performance. So, okay, but that's a separate part about a high volume roads. There are some kind of materials which are locally available. Like when I come from Varanasi, the nearby, some of the waste products and which are already being used and worked a lot, probably CRI has worked a lot, the red mud. So I think some of the projects in the UP can also be tried with the red muds, maybe in the sub-base layers. There are so many studies available. So again, that can also be tried. With the cold mixes emulsion, I think in the PWD, ET has been tried a lot with the PWD roads. One thing is recycling is probably the whole future. There's no doubt on that. In the urban roads, recycling has not been adopted, specifically in UP. Again, means any of us who can thought of in this direction, again, that can be a good idea. Coming to the FDR. Okay, so
in the 2 days discussion, I am at least very clear that the definition of an FDR should be clarified. Okay, because either we are getting a lot of confusion with the FDR definition, because what the literature which we adopted majorly from the US says something about different about an FDR, what we are doing as an FDR. It is also a good. So there is nothing about a good or bad, but there should be a discussion that what is an FDR. Because FDR, what we read from the US based literature is something that no additional material. Additional means only the granule materials having the aggregates should be added. Okay. And then there should be some granule layers which will be there. But again, that FDR technology or this FDR idea basically came from the high volume roads. Okay, because they are creating this FDR basis for the high volume roads. For that, the 100 mm thickness of the granule layer for the drainage purpose, and these things are required. Probably what we are doing is could be a good stabilization techniques, maybe granular stabilization techniques with additives. It could be a good name, but let us not confuse the FDR. Otherwise, we'll be whole having this problem of naming the thing as an FDR, and then everyone want to jump to the FDR. So again, this definition of FDR should be very much clear to us. At least the agencies or the IRCs should clarify. And if this is an FDR which is coming out of the IRC 142, which is the actual what I understand, then what we have done is something different. And again, it is giving us a good result. So there is no harm in saying that we are not getting the good result out of it. What to move forward, there are some issues with the additives. Okay. So when I look at from a very different perspective, can we think of a performance-based values? Okay, because what is expected out of my FDR based layers is just a performance values. Okay, if I have the performance based values, can I leave it up to the contractor to decide whether to add the additives or not? Okay, because then it is his road, it is his DLP, let him decide. This is my just as an opinion from an engineer perspective to my limited understanding. So probably performance, and why I'm telling this is a performance based kind of a thing, because I know that this organization, it has the best quality monitoring mechanism. I have worked a lot with the MORTH also, NHI also, but let me be very frank, and this organization in the PMGSY has a very good quality monitoring mechanism. So again, when we are dealing with the performance-based values, probably our monitors can have a very good control over these values. Okay, so then again, if the performance is something which is mattered to us, then obviously there is nothing bad either editing the additive or nothing bad even if you are discarding the additive. Okay. And after this, there are a lot of things that everyone is making the road and then telling that my road is performing best, okay, or good. So performance evaluation, where I see it is a very serious business. Performance evaluation studies should start from the construction of the project. It cannot be done after the project has been done, because there are so many variabilities in during the construction time which can affect the performance. So let us not certify any kind of a technology with this performance evaluation after the projects. Okay, so it is a serious business when it is talking about its technical performance evaluation. It should start from the construction phase because it has a lot of construction variability. Let us talk about the variables which we want to control. So because there are some variables, for example, additive without additive. So this is also one variable. Okay, so if some non-additive road is performing good, probably it has been constructed good. And if additive with additive and not performing good, or not performing bad, or performing bad with the additive, it may be because the construction quality is bad. So construction quality should also be taken into the account into the performance evaluation studies. So this is only just of my few thoughts to initiate the discussion. I'll be happy to take up any questions. Thank you, everyone. Thank you very much, Professor Gupta. You have given very good insight into the cold mix technology and its limitations. And simultaneously, when you raise the issue of FDR definition again, it's very pertinent because people are really confused whether to call FDR what is written in the books, or what or to call the FDR what is being practiced by the PMGSY in different states. So definitely the authorities need to have a relook on the definition of FDR. Now, moving to the last speaker of this session,
I invite Mr. D.D. Pathak, who is State Technical Officer, UPRRDA, and he is the person who has experienced and practiced the technology in the field. So he will share his experiences with us. Welcome, Mr. Pathak. नमस्कार सर। कल से डिस्कशन में हम लोग कई बार इसको बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश द्वारा यूपीआरआरडीए द्वारा उत्तर प्रदेश में मार्ग निर्माण अपग्रेडेशन वाले मार्ग के निर्माण में बेस कंस्ट्रक्शन में एफडीआर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है बड़े पैमाने पर। इसके साथ सरफेसिंग कोर्स में भी 4 नई टेक्नोलॉजी का हम लोग अडॉप्ट किए हैं। उसमें एक तो वेस्ट प्लास्टिक के साथ 30 mm BC का कार्य है, जिसमें आज तक हम लोगों ने करीब 710 मेट्रिक टन वेस्ट प्लास्टिक को यूज कर चुके हैं हम लोग। दूसरा टेक्नोलॉजी है हमारा MSS प्लस 30 mm थिक में, जो हमारे डॉक्टर सतीश पांडे साहब के सौजन्य से हो रहा है यहाँ पर। उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसका भी आ रहा है। तीसरी टेक्नोलॉजी कोल्ड मिक्स 30 mm BC विद कोल्ड मिक्स। इसमें शुरुआत में चूंकि BC पर अभी कोल्ड मिक्स का काम नहीं हुआ था कहीं पर भी, हम लोग पहली बार ये IIT चेन्नई से इसका डिजाइन हुआ था, JMF बना था टेलर मेड इमल्सन के साथ। उसको अडॉप्ट करके हम करीब 280 किलोमीटर का हम लोग यहाँ पर कोल्ड मिक्स में BC कर रहे हैं, 200 किलोमीटर का कर रहे हैं हम लोग। हमारी चौथी टेक्नोलॉजी जो सरफेसिंग यूज कर रहे हैं सीमेंट ग्राउटर बिटुमिनस मिक्स 30 mm थिकनेस में, उसको अडॉप्ट किए हैं। उसमें करीब 280 किलोमीटर का काम उसमें भी चल रहा है हमारा। जो काम एग्जीक्यूट हो चुके हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जो हमारे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किए हैं वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है। क्योंकि उसके अडॉप्शन के पहले हम लोगों ने काफी होमवर्क करके एक बढ़िया SOP बना करके और बिल्कुल फुल्ली साइंटिफिकली डिजाइन करके उसका मेथड हम लोगों ने अपने जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के PIOs हैं उनको ट्रांसफर किया और उसी कायदे से मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग। इसलिए बहुत फर्स्ट क्लास, कहीं पर कोई भी क्लिच नहीं आई है क्वालिटी में। FDR में हम लोग जैसे कल बताया गया था कि 728 सड़कों का हम FDR में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। FDR बेस में कोई भी रोड हमारी FDR बेस के लिए फेल नहीं हुआ है। 1-2 सड़कों में हमारी सरफेसिंग पर जो BC किया है उसमें प्रॉब्लम आई है। उसका कारण यह रहा है कि वो FDR उनका बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास इंटैक्ट रहा है। क्योंकि उसका लेवल PIO ने कुछ नेग्लिजेंस रहा PIO लेवल पर, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर सड़क बना दी और उस पर वो फ्लडिंग होता रहा और वहाँ कुछ ट्रैफिक भी वो सड़क डिजाइन हुई थी T5 कैटेगरी के लिए, मतलब 0.3 MSA के लिए, और लेकिन उस पर 5.5 MSA की ट्रैफिक अप्लाई करने लगी। तो ये इस समस्या से 1-2 सड़कों में हमारा बिटुमिनस कंक्रीट पे दिक्कत आ रही है। और करीब पूरे उत्तर प्रदेश में 60 जिलों में हम लोग ये FDR अडॉप्ट किए हैं और 60 जिलों में विभिन्न प्रकार के सॉइल कैटेगरी अवेलेबल हैं। कहीं पर ब्लैक कॉटन भी है, कहीं पर क्ले भी है, कहीं पर MLCL भी है, सिल्टी क्ले है, लेकिन सब जगह बिल्कुल हमारा सक्सेसफुल रहा। कुछ जगहों पर जहां पर हमारा ब्लैक कॉटन वगैरह था या हाई क्ले कंटेंट था, उसमें कुछ एडिशनल हम लोगों ने कुछ प्रोविजंस किया, जिसमें हमारा लाइम स्टेबलाइजेशन करके थोड़ा सा सॉइल के प्रॉपर्टी को इनहेंस किया। उसके बाद ही हमने FDR किया। उसमें जैसे महोबा की 4-5 सड़कें हैं और कुछ गाजीपुर की 2 सड़कें हैं। IIT के प्रोफेसर डॉक्टर गुप्ता साहब ने विजिट किया था, कुछ में हमारे IIT कानपुर के डॉक्टर श्याम नारायण ने विजिट कराया और उनके सलाह से हम लोगों ने कुछ उसमें अमेंडमेंट करके उसकी जो सॉइल के प्रॉपर्टीज को एनहांस करके काम किया। वो भी बहुत फर्स्ट क्लास हमारा परफॉर्म कर रहा है। एक सड़क हमारी सिर्फ ऐसी आई है अमेठी में, आपको बताना चाहता हूँ। एक सड़क अमेठी में ऐसी जो हाई क्ले है वहां पर, और दूसरा वाटर टेबल बहुत ऊपर है वहां, मतलब 1 मीटर के अंदर ही वाटर टेबल है वहां पर। तो उस रोड पर हमारा कॉम्पैक्टर जो बायोमेट्रिक रोलर है वही नहीं चल पा रहा है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी उस पर नहीं चल सकती है जिसमें रोलर को यूज करना पड़े।
मतलब इवन कन्वेंशनल भी कैसे बना दिया, क्योंकि पहले स्टैटिक रोलर चलता था, स्टैटिक रोलर में कोई कॉम्पैक्शन या कोई वाइब्रेशन होता नहीं था, इसलिए वो सड़क बन गई होगी। हम लोग चूंकि स्टैटिक रोलर यूज नहीं कर सकते हैं, हमारा वाइब्रेटरी रोलर यूज करना आवश्यक है हमारा, तो हमारा एफडीआर उसमें नहीं हो पाएगा। तो उसमें हम लोगों ने हमारे आईआईटी के प्रोफेसर से सलाह करके उसमें हम लोगों ने सेल फिल्ड कंक्रीट में, वो 7 किलोमीटर लंबी सड़क थी हमारी, 2 किलोमीटर एफडीआर बन गया था, उस पर बीसी भी हो गया, फर्स्ट क्लास चल रहा है। लेकिन 5 किलोमीटर लंबाई में ये दिक्कत आने लगी कि वाइब्रेटरी रोलर उस पर ऑपरेट ही नहीं हो सकता था। तो हम लोगों ने उस पोर्शन में हम लोगों ने सेल फिल्ड कंक्रीट, जिसमें रोलर का यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी, उसको प्रपोज किया है। हमारा प्रपोजल नेरेडा को हमने सबमिट कर रखा है, वहां से आएगा तो हम लोग तुरंत उसमें सेल फिल्ड कंक्रीट करा कंप्लीट कर लेंगे। बाकी कहीं पर हमारा कोई भी सड़क हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, फर्स्ट क्लास परफॉर्म कर रही है। हमारे यहाँ कुछ सड़कें चूंकि हम लोग नया अडॉप्ट किए थे इससे, तो धीरे धीरे अनुभव के अड्डे पे हम लोगों ने बहुत ही करीब 50 पन्ने का एसओपी बनाया हमने एफडीआर के लिए हर स्टेज का। कल जैसे दुबे साहब ने डिस्कस किया था अपने अपने प्रेजेंटेशन में, करीब 50 पन्ने और पीआईयू से बाकायदा मॉनिटरिंग की कि उनके द्वारा वो अडॉप्ट किया जा रहा है ये एसओपी कि नहीं किया जा रहा है। इवन कॉन्ट्रैक्टर्स की जो इंजीनियर्स होते हैं, कितने इंजीनियर्स उनको रखना है, ये मॉनिटर किया हम लोगों ने। कॉन्ट्रैक्टर को काम के लिए गो अहेड देने के लिए उनके इंजीनियर्स को अपने यहाँ बुला करके ट्रेनिंग भी किया बाकायदा, और उसका रिकॉर्ड है हमारे पास। जब वो ट्रेनिंग 4 दिन की ट्रेनिंग कराया, ऑन फील्ड में जाके कराया हम लोगों ने, उसके बाद उनको हमने गो अहेड दिया कि ठीक है आप इन इंजीनियर्स मदद से आप एफडीआर का एग्जीक्यूशन कर लेंगे। तब जाकर के हमारा एफडीआर इतना सक्सेसफुल हुआ है। हमारा एफडीआर के एग्जीक्यूशन में जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है, पहले तो उसका जॉब मिक्स फार्मूला जो प्रिपेयर कराते हैं, उसके लिए हम लोगों ने एनएबीएल लेबोरेटरी में आईआईटी, सीआरआरआई, एनआईटी को हम लोग दे रखे थे। चूंकि जेएमएफ बनाने के लिए हम लोग कंपल्सन नहीं किया था कि आईआईटी और सीआरआरआई से बनाया जाए या एनआईटी से बनाया जाए, इसलिए बहुत सारी ऐसे हैं जो हमारे एनएबीएल लेबोरेटरी से, चूंकि हमारे एडिटिव सप्लायर्स हैं उनके पास अपने लेबोरेटरीज हैं, उस लेबोरेटरीज बना करके उन्होंने दिया था। क्योंकि हमारे पास एक ऑप्शन था कि जेएमएफ बन के आएगा तो उसका ट्रायल स्टेज कराएंगे, तो उसके जेएमएफ के पैरामीटर्स की रियल टाइम टेस्टिंग हो जाएगी हमारी जो ट्रायल स्टेज के एग्जीक्यूशन में। ठीक है, इसीलिए उसको ऑप्शन दिया था, हमने दिया है, अभी भी वही चल रहा है। तो चूंकि अब जेएमएफ बनाने के लिए इम्पोर्टेंट यह है कि जेएमएफ के लिए कुछ मटेरियल जो हमारा एग्रीगेट यूज होना है रियल टाइम साइट पे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, आप क्या एग्रीगेट यूज करेंगे, किस क्वालिटी का रहेगा और क्या परसेंटेज उसका रहेगा, कितनी क्वांटिटी यूज करेंगे और कौन सी सॉइल यूज करेंगे, वही सैंपल जेएमएफ में जाए, तब वो जेएमएफ रियल टाइम जेएमएफ बन के आएगा, तब उससे सड़क हमारी सक्सेसफुल एफडीआर एग्जीक्यूशन होगा हमारा। अगर पता लगा कि जेएमएफ बनाने में मटेरियल दूसरा चला गया या ज्यादा चला गया या कम चला गया, तो फिर वो रियल टाइम उस पर वो एफडीआर की जो है हमारी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी, उस क्वालिटी नहीं बन पाएगा। तो जेएमएफ के लिए हल्का सा मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं, इतना लंबा समय नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं करता हूं कि जेएमएफ के लिए क्या करेंगे। देखिए, हम लोगों ने जो उसकी एफडीआर की थिकनेस डिसाइड कर लेते हैं पहले, वो हमारा जब डीपीआर प्रिपरेशन करते हैं उस समय उसकी थिकनेस डिसाइड हो जाती है। थिकनेस के लिए एनआरआईडी से डिस्कशन के बाद हम लोगों ने जो आईआरसी एसपी 72 2015 दिया हुआ है, उसमें जो सीटीबी का कैटलॉग दिया हुआ है, उस कैटलॉग में मोरल सीटीबी समझा गया उस समय। अब आगे और ये बात रिसर्च की है कि आगे क्या किया जाएगा, लेकिन उसमें T3 कैटेगरी के ट्रैफिक के लिए 200 mm थिकनेस में, और T4 के लिए 210 mm थिकनेस में, और T5 में 225 के लिए, और T6 ऑनवर्ड के लिए 250 mm थिकनेस में एफडीआर हम लोग बना रहे हैं। ठीक है ना। अब मान लिया हमको 250 mm थिकनेस में एफडीआर किस रोड पे बनाना है, ये हमने कल भी डिस्कस ये बताया था कि करीब 40% तो मिनिमम हमको सॉइल चाहिए ही। मतलब एग्रीगेट अगर 60% के ऊपर हो गया
तो उस अच्छी क्वालिटी का एफडीआर बेस नहीं बन पाएगा, कोर्स नहीं निकल पाती हैं, क्योंकि जो गिट्टी है, गिट्टियों के जो वायर्स हैं, उसको भरने के लिए इतना हमको सॉइल चाहिए ही चाहिए। अगर वो सॉइल कम है, जैसे ही अमूमन होता है ना कि आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती है, हमारी कई पीआईओ में, कई सड़कों में देखा गया है, बाद में वो ठीक कराया गया, जिसमें पहले से एग्रीगेट्स ज्यादा अवेलेबल हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया वो सड़क जो कि अपग्रेड हमारा पीएमजीएसवाई 2001 से शुरू हो गया था, और जो सड़कें पीएमजीएसवाई की हम टेकअप कर रहे हैं, दोबारा हम बना रहे हैं एफडीआर में, उसमें एग्रीगेट की थिकनेस बहुत ज्यादा मिल रही है, बहुत अच्छी मिल रही है। तो ज्यादा अगर 30 सेंटीमीटर एग्रीगेट की थिकनेस है, और मान लिया उसको 375 की रोड पहले बनी थी, और उसको 550 बनाना है, तो 565 एफडीआर की चौड़ाई रखते हैं हम लोग। उसको अगर हम उसको अगर उखाड़ करके और 565 में उसको स्प्रेडिंग भी करेंगे, तभी हमारी 20-22 सेंटीमीटर से यही आएगी थिकनेस, जो हम आफ्टर स्प्रेडिंग, ठीक है ना। तो उस समय अगर मान लिया 250 है, और उसी के ऊपर अगर आप कराएंगे या अगर वो रिक्लेमर चलाएंगे, तो रिक्लेमर चलाने में आपका 250 ठीक आप लेंगे तो पूरा का पूरा एग्रीगेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग ये अपने पीआई को बताया हम लोगों ने कि आप उसमें तब सॉयल का परसेंटेज कम हो जाएगा, ऑब्वियसली जो गिट्टी का परसेंटेज ज्यादा है वहां पर, खुद ही ज्यादा है ऑटोमेटिक। तो उसमें मिट्टी का लेयर ऊपर डालें, 10 सेंटीमीटर मिट्टी का ऊपर डालें, 10 उसको ले लें, 15 नीचे एग्रीगेट ले लें, बाकी जो एग्रीगेट नीचे बच जाए वो छोड़ दें, जिससे वो अंदर नीचे पड़ा रहेगा, तो वो हमारा एफडीआर बेस को मजबूती ही देगा। तो इस तरह से कराएंगे। लेकिन बहुत सारे पीआईओ वाले अगर करने में उनको डर लगता था कि गिट्टी ज्यादा पड़ी है तो और अच्छा होगा, तो वो अच्छा नहीं होता है। तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, अपने पीआईओ को एजुकेट कर रहे हैं कि अगर गिट्टी इस तरह ज्यादा है तो ऊपर से मिट्टी डालिए। दूसरी बात हम लोग ये भी कराए हैं कि अगर नीचे अगर मान लिया हमारा सबग्रेड का लेवल, ये निरड़ा से कभी कंसर्न रहा है कि सबग्रेड की मिट्टी यूज न किया जाए, हम लोग अभी एग्जीक्यूशन करा रहे हैं, सबग्रेड की मिट्टी हम लोग मना कर दी हैं। सबग्रेड का लेवल अगर जहां ऊंचा है, क्योंकि जब एफडीआर बनाते हैं सबग्रेड की मिट्टी लेते हैं, तो जो हमारा प्रिपेयर जो हमारा रेडी होगा, हमारी रोड रेडी होगी बीसी के बाद, तो 4-5 सेंटीमीटर एग्जिस्टिंग आरटीएल से हमारा नीचे हो जाएगा, मतलब नीचे डाउन हो जाएगा। अगर डाउन करने में कोई दिक्कत नहीं है, एचएफएल से रोड हमारी सबग्रेड बहुत पहले से हाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन अगर वो एचएफएल के से थोड़ा सा 30 या 60 सेंटीमीटर का हमारा है, जो जो हमारा कोड कहता है, अगर उसके नीचे है तो हम मिट्टी ऊपर से डालें एग्रीगेट लेने के लिए। तो इस तरह से हम लोग करवा रहे हैं, इसको भी इम्प्लीमेंट करा रहे हैं। तो जैसे मान लिया अगर हमारा 20 सेंटीमीटर अगर या मान लिया अगर 25 सेंटीमीटर आपको एफडीआर बेस बनाना है, तो आपको इस तरह से आप जो सैंपलिंग भी जो करेंगे, वो सैंपलिंग में 50 से 50 गड्ढे खोदेंगे मान लिया, और अगर मान लिया एग्जिस्टिंग वहां एग्रीगेट थिकनेस 25 सेंटीमीटर है, तो वो गड्ढा खोद करके 25 सेंटीमीटर का निकाल के बाहर रखेंगे हम गिट्टी को। लेकिन चूंकि हमको गिट्टी की थिकनेस 15 सेंटीमीटर यूज करनी है सैंपल में अपने, तो उस जो हमारा सैंपल निकल के बाहर आया है सर, बस सैंपल निकल के बाहर आया है, उसको 15 इंटू 10 15/10 में उसको डिवाइड कर लेंगे। जो 15 सेंटीमीटर का जो पोर्शन रहेगा, चाहे बाय वेट चाहे बाय वॉल्यूम, वो प्रोपोर्शनल कर लेंगे हम। वही हम सैंपल हम ले जाएंगे बोरे में भर करके, वही हम वहां देंगे इसका जेएमएफ बनाने के लिए। और साथ में मिट्टी 10 सेंटीमीटर थिकनेस मिट्टी या फिर बाहर से ले आए उसको यूज करें। अगर सबग्रेड लेना है तो सबग्रेड की मिट्टी नीचे लेंगे। तो सैंपलिंग करेंगे उसको ठीक से, जो हमारा यूज होगा एग्जीक्यूशन में, जहां हम जो मटेरियल यूज करेंगे वही हमारा सैंपल जाना चाहिए। ये हमारी गलतियां कहीं कहीं हो जाती हैं, तो उसमें दिक्कतें होती हैं, फिर एफडीआर की वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। दूसरा एडिटिव का भी एक केस था। जैसे एडिटिव का एक्सेप्टेंस है, तो बहुत सारे क्राइटेरिया वो डिफाइन करता है, IRCSP 89 से डिसाइड है। तो उससे भी हम लोग उसको देखते हैं कि कौन सा एडिटिव हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि हर एडिटिव से हमारे यहाँ कई सड़कों में एक से अधिक एडिटिव का यूज किया गया, उससे जेएमएफ बना हम लोगों ने, जो जिससे जेएमएफ बन के ठीक निकल के आया है, वही हम उसको एक्सेप्ट किए हैं, उससे एग्जीक्यूट कराए हैं हम लोग, ठीक है। ये जरूर ये इशू आ रहा है कि हमारे एडिटिव की क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि एडिटिव के सप्लायर्स हैं, उसके बारे में कोई क्लू देते नहीं हैं कि उसमें क्या है, उसकी कैसी टेस्टिंग कराएंगे। लेकिन फिर हम लोगों ने उसके लिए ये किया है, ये हम लोगों ने डायरेक्शन इशू किया
कि एक तो एडिटिव का कस्टोडियन पीआईयू रहेगा, कितना एडिटिव आया है, कितना यूज हो रहा है, पूरा लेखा जोखा, प्रतिदिन लेखा जोखा रखा जाएगा उसके द्वारा। दूसरा, एडिटिव आवे तो उसका इनवॉइस वगैरह पूरा देख लिया जाए, डिब्बा सील पैक रहे, क्यूआर कोड के साथ रहे, उसका देख लें। अगर कोई बाहर का एडिटिव है, मतलब अगर अब्रॉड है, मतलब बाहर का विदेशों का बना हुआ है, तो उसका शिपिंग का डिटेल भी, वो भी डॉक्यूमेंट यूज किया जाए, क्योंकि उसका अंदर उसकी क्वालिटी टेस्टिंग कर नहीं सकते हम, तो कम से कम इतना प्रूफ हम रखें कि वो रियल और जेन्युइन मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं। इस तरह से सब चीजें हैं, 2-3 चीजें कि जो हमारी एफडीआर एग्जीक्यूशन में बहुत कायदे से देखना रहेगा। जेएमएफ बता दिया मैंने, एडिटिव का भी इसको देखना रहेगा, सीमेंट का भी, स्प्रेडिंग का भी, जो भी जेएमएफ बन के आता है उसकी स्प्रेडिंग भी हम कायदे से उसको, उसका डेटा मेंटेन करेंगे। ये हमारा क्यूसीआर का भी पार्ट है, यहाँ से ऑर्डर हो गया था कि सब चीजें क्यूसीआर का पार्ट बनाया जाए, कि पर स्क्वायर मीटर कितना सीमेंट आ रहा है, मान लिया 18 से 20 केजी आ रहा है एक स्क्वायर मीटर में। तो इस तरह से उसका पूरा मेंटेन कर, यद्यपि जो हमारा सीमेंट स्प्रेडर होता है वो भी हमारा सेंसर कंट्रोल्ड है, पीएलसी कंट्रोल्ड है हमारा, लेकिन फिर भी जब वेरिएशन कुछ होते हैं तो वेरिएशन को देखते हुए उसको पूरा कायदे से, जो भी जो हमारा रिक्वायर्ड है पर किलोमीटर उसका स्प्रेडिंग, वो उसको मेंटेन किया जाए। थोड़ा वेरिएशन 100-150 ग्राम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ज्यादा आ रहा है तो फिर दिक्कत होगी। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया कि ये पूरा एफडीआर की जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से फील्ड में प्रैक्टिस की जा रही है। और इसके साथ ही जो है ये सेशन यहाँ पर प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। नाउ द फ्लोर इज ओपन टू द क्वेश्चन आंसर्स। तो जो भी क्वेश्चंस हों आपके, प्लीज यू कैन रेज योर क्वेश्चंस, अदरवाइज आई विल सम अप द सेशन एंड प्लीज। Sir, I just missed one point in my presentation or discussion. Can we think, means I am basically looking to the NRIDA, can we think of a lower UCS like 3.5 and 4 for some trial stretches? Because there's a lot of literature which says that the requirement of these UCS values should be lower. In that, because in the long term, we'll be saving some of economy, maybe cement or additive or anything. And in the low volume roads, this requirement is really less. So because this 4.5 is an adoption from the IRC 37. So can we think of at least with some trial stretches of having a lower values? It has a long-term implication. सर आपने बोला कि 4.5 जो हम लोग लेते हैं 7 डेज का जो स्ट्रेंथ, और 4.5 to 7 बेसिकली रहता है 20 डेज तक। बट जो SP 72 कह रहा है, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है सर, वो तो कुछ और कह रहा है, वो तो आपका 3.3 के आसपास से काम चल जाएगा। तो हम लोग क्यों ना ट्रायल पैचेस कर लें से सर, आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है सर, कि इसमें सेविंग भी हमारा होगा और रिजिडिटी भी थोड़ी कम होगी, तो हो सकता है क्रैक्स वगैरह भी डेफिनेटली कम आएंगे। तो इसको सर किया जा सकता है, बिल्कुल वी डू एग्री ऑन दैट, कि सीमेंट भी बचेगा, कुछ हो सकता है केमिकल भी कम लगेगा, सीसीएस वगैरह भी, तो ये किया जा सकता है सर। So just as a pilot scale, we can yes, take it. Yes, we can go ahead with सर। अच्छा सर, एक जस्ट सवाल था उससे CRRI से, आप अभी CGVM की बात कर रहे थे। CGVM में सपोज अगर अभी जैसे हमारी PMGSY 4 की नई रोड्स आएंगी जो हम सैंक्शन कर रहे हैं, न्यू कनेक्टिव वाली बात, इसमें हम कैसे यूज कर सकते हैं CGVM को? जैसे हमारा जैसे T4 कैटेगरी के लिए जनरली हम लोग इसको डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें GSB 150 का होगा, G2 G3 75 और MSS हो गया, या OGPC जो भी है वो 20 mm का हो गया। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं और कॉस्ट का क्या, कैसे इसमें इम्प्लीकेशंस होंगे, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ उसमें। जैसे CGVM तो एज ए मेंटेनेंस, एज ए रिन्यूअल कोड आप यूज कर सकते हैं। जहां जहां पर आप प्रपोज कर रहे हैं कि BC लेयर आपको ले करना है या MSS ले करना है या कुछ भी, मतलब कोई ऐसी लेयर जो प्रपोज कर रहे हैं 30 mm के लिए, तो वहां पर आप CGVM कर सकते हैं। और CGVM स्पेशली उस एरियाज में करना ज्यादा इफेक्टिव है जहां पर कि रेनफॉल है, वाटर लॉगिंग का इश्यूज है,
फ्रीक्वेंट डैमेज हो रहे हैं पेमेंट्स में, क्योंकि CGBM जो है ऑलमोस्ट इम्परवियस लेयर, दो इट इज ए बिटुमिनस लेयर और सेमी फ्लेक्सिबल लेयर, बट इट इज ऑलमोस्ट इम्परवियस. तो CGBM कैन बी इफेक्टिव फॉर दोज एरियाज, हाई रेनफॉल एरियाज, वाटर लगिंग एरियाज, क्योंकि बहुत जगह पर आपने देखा होगा PMGSY में एम्बैगमेंट्स नहीं है, क्योंकि एम्बैगमेंट नहीं, वहां पर केवल ग्राउंड लेवल पे ही सबग्रेड बना दिया गया, बाद में G2 G3 एंड वो है. और आजकल रेनफॉल वगैरह बहुत जगह जाता है, इवन राजस्थान में आप देखो हैवी रेनफॉल है, तो वहां पर रोड्स जो है मतलब वाटर लॉगिंग हो रही है, तो सैचुरेशन कंडीशंस आ रही है. तो उस तरह के एरियाज में आप CGBM कर सकते हैं. हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली जरूर है, जैसे मैंने बोला ना कि इसकी पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी होगी? कास्ट तो मतलब डिपेंड करता है कि ये प्लेस टू प्लेस, क्योंकि इसमें जो है एग्रीगेट 20,000 रुपीज पर क्यूबिक मीटर. 20,000 या पर किलोमीटर कितना आ रहा है जी? पर किलोमीटर सर? पर क्यूबिक मीटर. पर किलोमीटर पर यूपी ने सेंक्शन पाठक जी आपने सेंक्शन किया ना. देखिए, पर क्यूबिक मीटर का तो मैं आपको बता रहा हूँ. तो पर क्यूबिक मीटर का जैसे जो रेट, जो BC का रेट निकालते हैं, उससे 30 से 40% हाइयर है. कभी 18,000 के आसपास आता है. हाँ, 17-18,000 के आसपास है. 20,000. अच्छा, तो वो मतलब डिपेंड करता है प्लेस टू थिकनेस प्लेस. भी आपको करीब करीब 40 mm देनी पड़ेगी मिनिमम. 40 रहेगी ना? हाँ, तब कर पाएंगे. एक्चुअली अर्बन रोड्स के लिए बेटर अल्टरनेटिव है. नहीं, 30 mm सर हो रहा है. 30 mm बहुत इफेक्टिव हो रहा है. 30 mm जो है सर. लेकिन मैं समझता हूँ रूरल रोड्स की बजाय अगर इसको आप जो है अर्बन रोड्स के लिए प्रमोट करें तो दैट इज बेटर. नहीं, अर्बन अच्छा, रूरल रोड्स में भी कुछ एरिया सर ऐसे हैं जो कि मतलब ये तराई रीजन्स के एरियाज हैं, जहां पर की हाई रेनफॉल एरियाज है और सबमर्जेंस बहुत रहता है सर. तो उस एरियाज में अगर CGBM यूज करेंगे तो ड्यूरेबिलिटी कैन बी. नहीं, इसमें मेरा एक जस्ट और पॉइंट था, जैसे माइनिंग एरियाज में अभी हमारे यहाँ काफी समस्याएं आ रही हैं, आपने बताया तो ये, जैसे हमको सैंक्शन करना पड़ रहा है माइनिंग एरियाज में भी. तो माइनिंग एरियाज में क्या इसकी कुछ यूटिलिटी, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा होता है, रोड फेल हो जाती है, 20 mm MSS जो है या वो GPC, वो तो टिकेगा ही नहीं, इतने 8-10 चक्के वाली जो गाड़ियां चल रही है हमारी. तो इसमें क्या कुछ इसको हो सकता है कॉस्ट रिडक्शन, या कैसे कर सकते हैं? नहीं, माइनिंग एरियाज के लिए तो मैं समझता हूँ शॉर्ट पैनल कंक्रीट जो है दैट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव, क्योंकि CGBM या कोई भी फ्लेक्सिबल लेयर जो है वो बहुत काम करने वाली नहीं करेगी. मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल आपको बताऊंगा जी, कि ये CGBM को डेवलप करते करते 7-8 साल हो चुके हैं सर. तो जम्मू उधमपुर हाईवे, उधमपुर बाईपास जो है, नेशनल हाईवे 44 कश्मीर से कन्याकुमारी, जिसमें कि बहुत हैवी ट्रैफिक है, और गुवाहाटी शिलांग हाईवे, ये दोनों हाईवेज पे बहुत हैवी ट्रैफिक है. तो वहां भी इसको ट्राई किया गया है 40 mm थिकनेस के लिए, एंड लगभग 2 मानसून सीजन के बाद भी अभी तक इंटैक्ट है. और जहां पर की फ्रीक्वेंटली रटिंग हो रही थी जिस एरियाज में, है ना, क्योंकि रटिंग या क्रैकिंग, ये दो जो फैक्टर्स हैं, अगर हम मॉइस्चर इंड्यूस्ड डैमेज को भूल जाएं, अगर हम केवल फटीग और रटिंग की बात करें, तो रटिंग जहां पर एरियाज में रटिंग ज्यादा हो रही है, अगर हमारा बेस स्ट्रांग है लेकिन बियरिंग कोर्स में रटिंग ज्यादा हो रही है, सो दिस इज आल्सो एन गुड अल्टरनेटिव. वो हाईवे पर अगर सक्सेसफुल है तो इस वजह से नहीं है कि CGBM कर दिया, वो इसलिए कि उसका क्रस्ट कंपोजिशन देखिए ना. वो रूरल रोड्स में आपको कहाँ मिलेगा. माइनिंग एरिया की बात चल रही है, उसमें जो है ना बहुत ही हैवी एक्सल लोड है, और उसमें क्रस्ट कंपोजिशन आप वही दे रहे हैं जो बाकी रोड्स में दे रहे हैं, उसमें कोई एडिशनल क्रस्ट तो दे नहीं रहे हैं. हाँ, तो शॉर्ट पैनल विल बी बेटर. शॉर्ट पैनल कंक्रीट विल बी बेटर अल्टरनेटिव. राइट, आई थिंक. और आप लोग इतने जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, एक जस्ट आपसे पूछे, जैसे नई हम लोग यूज करना चाहें, जैसे कन्वेंशनल हम लोग सैंक्शन करेंगे जी, करना प्लान करें, जो PMGSY 4 का जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, राइट. तो कुछ ऐसा चीज कर सकते हैं जो जिससे कॉस्ट रिडक्शन भी रहे और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाए. कोई ऐसी, जैसे आप तो ये तो आपको SP72 के हिसाब से जो चार्ट है, वो तो 150 का GSB हो गया, G2 G3 75 और 25. ऑल्दो हमने कुछ केसेस में CTB और CTSB के लिए जा रहे हैं. CTSB 110 mm, CTB जो है 10 सेंटीमीटर का, और उसके ऊपर MSS दे रहे हैं. लेकिन जी बताएं. CTB CTSB का भी जो एक्सपीरियंस है, मैं अपना PWD का एक्सपीरियंस बता सकता हूँ सर, कि रूरल रोड्स में जब भी हम करते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सिंगल लेन रोड्स हैं सारी की सारी, और सिंगल लेन रोड में ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता है, क्योंकि क्योरिंग टाइम आपको मिलता नहीं है. जब भी आप करते हैं तो उसके लिए क्योरिंग के लिए टाइम नहीं होता, ट्रैफिक उसी पर चलता रहता है. तो जब ट्रैफिक आप चलाएंगे और क्योरिंग के लिए टाइम नहीं देंगे तो वो काम करेगी नहीं. वो डिफॉर्मेशन पहले दिन से ही आना शुरू हो जाते हैं, तो वो भी कोई बहुत काम करती नहीं है टेक्नोलॉजी. मैं समझता हूँ शॉर्ट पैनल कंक्रीट जो है वो हमें ट्राई करना चाहिए रूरल रोड्स में ज्यादा इस वक्त, और अगर ये हम करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं. तो PMGSY 4 में अगर मैं समझता हूँ कि अगर शॉर्ट पैनल कंक्रीट में हम जाएं तो आई थिंक दैट विल बी ए बेटर इनिशिएटिव. जी,
हाँ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी और ज्यादा इसका जो है यूज हम बढ़ा सकते हैं। या सेल्फ हिल कंक्रीट है, वो भी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव रहता है, वो भी एक ठीक है। मैंने देखा कि उसका भी परफॉर्मेंस ठीक आता है। अभी आपने एक क्वेश्चन पूछा सीटीबी और सीटीएसबी, तो मेरा ये एक ओपिनियन है और एक्सपीरियंस भी है अदर स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे का, कि सीटीबी और सीटीएसबी दोनों एक साथ यूज नहीं करना चाहिए। आइदर यूज सीटीएसबी और सीटी। नहीं, रीजन क्या है इसका? टेक्निकल रीजन? हाँ, टेक्निकल रीजन ये है कि क्योंकि एसपी 72 के अगेंस्ट में आप बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए, कुछ बातें एक्सपीरियंस की बेसिस पे Yes, होती है। true. अब मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ सीटीएसबी सीटीबी के बारे में। जहां जहां पर नेशनल हाईवे में सीटीबी के ऊपर क्रैक रिलीफ लेयर WMM यूज किया गया, वहां पर रटिंग होने के चांसेस बढ़ गए और रटिंग ऑब्जर्व किया गया। लेकिन सीटीएसबी के ऊपर जब WMM लेयर ले किया गया और बाद में डीबीएम की लेयर आई, BC की लेयर आई, तो वहां पर रटिंग नहीं हो रही है। ये मतलब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया। तो सीटीबी के ऊपर, सीटीबी जो है एक स्टिफ लेयर है जिसका की मॉडुलस जो है 5000 MP है, ठीक है। उसके ऊपर आपने एक जो है WMM की लेयर डाल दी, है ना, जिसका की मॉडुलस केवल 300 MP है, और उसके ऊपर फिर BC लेयर आगे 3000 MPa की। तो कल भी ये डिस्कशन हो रहा विनोद था कुमार सर बता रहे थे। हाँ, वो सैंडविच जो होता है, वो सैंडविच जो है उसको अवॉइड करनी चाहिए। तो सैंडविच लेयर जो है हमेशा, जैसे कि इसमें 3 ऑप्शन होते हैं क्रैक रिलीफ लेयर में। आइदर आपको WMM लेयर यूज कर लो, या आप सेमी यूज कर लो, या आपको जियो टेक्सटाइल वगैरह यूज कर लो। लेकिन बात हो रही है जिस रेफरेंस में कि सीटीबी सीटीएसबी, मैं समझता हूँ रूरल रोड्स के लिए ये बहुत प्रैक्टिकल चीज नहीं है, इसलिए इसको अडॉप्ट करना कोई मतलब ये कास्ट इफेक्टिव भी नहीं है दोनों ये, लेयर डालने से। ये कम से कम इसमें इसके लिए 2 लेन रोड आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसको करना चाहिए। अगर आपके पास सिंगल लेन रोड है, आप ट्रैफिक बंद नहीं कर सकते हैं, तो फिर सीटीबी सीटीएसबी पर जाने में कोई सर मतलब मेरा सवाल अभी अनआंसर्ड रह गया। मैंने आपसे पूछा था कि PMGSY 4 में हमको कन्वेंशनल हम सैंक्शन कर रहे हैं। जी। तो हम क्या नया चीज कर सकते हैं कि एक तो इकोनॉमी भी हो जाए, न्यू टेक्नोलॉजी भी आ जाए, और हमारा एग्रीगेट भी सेव हो जाए। ये मैं आपसे सवाल मेरा। हाँ, तो जैसे मैंने कहा कि तो शॉर्ट पैनल कंक्रीट है, वो आप एक जो है काफी लार्ज स्केल पे ले सकते हैं। वो तो सर एज ए सरफेसिंग कोर्स हो जाएगा, G2 G3 तो देना ही पड़ेगा। नहीं, G2 G3 की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आप डायरेक्टली जो है GSB के ऊपर और सीधा ये कर सकते हैं, PQC कर सकते हैं, आप कंक्रीट आ जाएगी। कोडल कोई प्रोविजन है क्या? हाँ, मैं समझता हूँ कि जो है ये आराम सर माथुर सर आपका कमेंट कुछ बताइए। माथुर सर। नहीं, शॉर्ट पैनल कंक्रीट बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, स्पेशली जब आपके पास इतनी हैवीली लोडेड ट्रैफिक चल रहा है। नहीं सर, ये तो जब माइनिंग एरिया आप बात कर रहे हैं सर। हाँ, माइनिंग जैसे एरिया। नॉर्मल कोर्स की बात कर रहे हैं, रूरल रोड्स की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ सर मैं। सीटीबी का अभी तक का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो अच्छा ही है, आप यूज करिए उसको। उस पर जाना है और उस पर आप नहीं तो थोड़ा बहुत क्योरिंग तो करनी है। अगर आप बिना क्योरिंग के ट्रैफिक अलाउ कर दोगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं सर। हाँ। ये तो क्योरिंग तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सीमेंट में स्ट्रेंथ ही क्योरिंग से ही आती है। यस सर, डेफिनेटली। So I think we should wrap up this session. मैं समझता हूँ कि we have already overshot the time. It's already. चलिए जल्दी से fast. Just be brief and quick. उसमें जो थोड़ी बहुत कमियां आई हैं सर, जो एज पे जो जब हम वो पर्कुलेशन कराते हैं, ग्राउटिंग कराते हैं, तो वो पर्कुलेट होकर बाहर हो जाता है, तो उसके कन्फाइनमेंट के लिए कुछ करना है सर। और जो JMF हमने बनवाया था सर, अगर ठेकेदार उससे जरा भी विचलित होता है तो उसमें पर्कुलेशन थोड़ा कम होता है, और विटामिन भी अगर उसमें थोड़ा बहुत बढ़ा देता है तब भी उसमें पर्कुलेशन कम होता है। तो ये जो है सर, ये थोड़ी प्रॉब्लम आई है सर। एक साइड कर। थैंक यू सर। एक्चुअली देखिए, 2 बातें इसमें आपने जो क्वेश्चन पूछा, एक तो कन्फाइनमेंट है, क्योंकि जहां भी हम ग्राउट यूज कर रहे हैं तो ग्राउट तो फ्लो कर रहा है, क्योंकि ग्राउट में फ्लोएबिलिटी है। उसमें 2 ही चीजें, फ्लोएबिलिटी और स्ट्रेंथ। अगर फ्लोएबल नहीं होगा तो फुल डेप्थ ग्राउटिंग नहीं हो पाएगी। तो हाँ, तो साइड में कन्फाइनमेंट तो करना ही पड़ेगा। साइड में आप
जैसे आप शोल्डर बनाते हैं ना, तो पहले से ही थोड़ा सा कन्फाइनमेंट साइड में रखिए। तो जब आपने जो पोरस लेयर ले कर रहे हैं, उस समय साइड में थोड़ा सा कन्फाइनमेंट कर दीजिए। जो आपका शोल्डर मटेरियल है उसी से कन्फाइनमेंट कर हाँ दीजिए, सर, पुस्ता तो लगा ज्यादा के हमने मटेरियल। उसका सोल्यूशन निकाला है सर। हाँ और एक बार जैसे करने के बाद फिर उसको रिपेयर के तौर पे थोड़ा थिक मटेरियल करके हमने किया है, तो थोड़ा उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है सर। और दूसरी बात है, जहां भी आप सीमेंटिशियस मटेरियल यूज कर रहे हैं, चाहे सीमेंट यूज कर रहे हैं या सीमेंटिशियस मटेरियल यूज कर रहे हैं, वहां पर एग्जीक्यूशन बहुत केयरफुली होना चाहिए, क्योंकि मतलब हैंडल विथ केयर है। वेरेवर यू आर यूजिंग सीमेंट, इट शुड बी हैंडल विथ केयर। उसमें हमने बहुत प्रॉपर अच्छा काम प्रॉपर कराया है सर, प्रॉपर सब लोग वाटर अप्रिशिएट कंटेंट, कर रहे हैं। हाँ प्रॉपर और वाटर बहुत अच्छी कंटेंट उसकी हो। परफॉर्मेंस है, वेस्टेज जीरो है। हाँ। और पूरे बरसात में थोड़े थोड़े टाइम पे हमने किया है, कोई परेशानी नहीं हुई सर, इवन रेनी सीजन में। Good. Yes. Thank you. Okay. So thank you very much. And with this, I wrap up this session. So in last 2 days, we have had around 22 presentations, and I have told you that these presentations came from different fields, different corners of the field. And what is needed is that a synergy is needed between all these four pillars: the research, the industry, the field agencies, and the IRC. So finally, the IRC has to take a call to frame the codes, specifications, and guidelines, but they need a concrete data and specifications of material to frame the codes. So all these agencies should take call on their own, what is needed of them. And if everybody works in synergy, then probably we can come out with some better results, and we can take this mission forward, which we have taken already in the field. So with this, I close this session. And at the last, I wish that the IRC and the UPRRDA, they have done a very commendable job to organize this 2-day seminar at Lucknow. So a big round of applause for them. So with this, we come to the end of the session. Thank you very much. To take a moment to express our gratitude first up to the panelists of this discussion. I request the moderator of this session, Shri Arvind Kumar Jain ji, to please do the honor and present a humble gesture of gratitude. First up to Dr. Sudhir Mathur, लगातार तालियों के साथ. Next up, we thank Shri Manoj Kumar Shukla ji, लगातार तालियों के बीच. We'll also take a moment to thank Professor Dr. Ankit Gupta. And with this, we would also like to thank Shri D.D. Pathak. लगातार तालियों के साथ, Shri D.D. Pathak. Thank you, sir, for giving us your time and your valuable thoughts. And हमारे इस विशेष सत्र में इस सत्र के मॉडरेटर का आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं मंच पर श्री S.K. वर्मा जी, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, to please join us. We would like to thank the moderator of this session, Shri Arvind Kumar Jain ji, उन लगातार तालियों के साथ. Thank you, sir, for conducting this session so beautifully. We'll take a group photograph with all of you to capture this moment. एक group photograph के साथ इस session को conclude करेंगे हम.
And once again, we would like to thank all the participants and all our respected guests who took part in this 2-day seminar, Full Depth Recycling and Green Technologies in Road Construction. This seminar would not have been successful without your cooperation and your support throughout. एक बार आप सब अपने लिए भी तालियां बजा लीजिए. Thank you so much. Your presence meant so much to us. और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है. टेक्निकल सेशन समाप्त हो गए हैं. अब आज के इस कार्यक्रम में कल्चरल प्रोग्राम भी शेष है. आप सभी से हमारा अनुरोध है अगले 15 मिनटों के बाद वो विशेष कल्चरल कार्यक्रम भी आरंभ होने वाला है. Once again, this is your host Mallika Yash Asthana. It was a privilege to host for you. Thank you.
हेलो 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 हेलो। आप सभी का
आज की शाम में एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। कल की तरह ही संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश लेकर आई है आपके लिए कुछ खास ऐसे खूबसूरत से कार्यक्रम जिसमें आपको अवध की और खास तौर से हमारे लखनऊ की एक झलक देखने को मिलेगी। कल की शाम जो सांस्कृतिक संध्या से सजी, उसमें हमने उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को एक मंच पर उतारने की कोशिश की और उस कार्यक्रम का जो अंत हुआ वो इतना खूबसूरत था जिसने कि पूरे दिन की थकान आप सबकी उतार दी। हमारे ब्रज और मथुरा के कलाकारों ने इस मंच को ही नहीं बल्कि हमारे सभी ऑडियंस को, दर्शकों को फूलों से रंग दिया, फूलों की होली के माध्यम से। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से ही आज की ये भी शाम आप सबके लिए खास सजी है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को हम इस मंच पर उतारने की कोशिश करेंगे। हमारा लखनऊ बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी खासियतें हैं जिसके लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की तहजीब, नजाकत, नफासत, यहाँ की शीरे सी जुबान, यहाँ की नक्काशीदार इमारतें, यहाँ के इमारतों के ऊपर गुंबदें, गोमती नदी के घाट और राधेलाल की लस्सी, राम आश्रय का मलाई पान या मलाई गिलौरी, टुंडे कबाबी, शर्मा जी की चाय, मेहरोत्रा का पान, उसके साथ ही साथ यहाँ का अदब, यहाँ का सलीका और यहाँ का संगीत। पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे दुनिया भर में अगर कहीं भी बात चलती है लखनऊ की और उसके संगीत की, तो सबसे पहले जो बात हमारे जहन में आती है वो है यहाँ का कथक। और जब भी कथक की कहीं बात होती है तो उस गुफ्तगू में लखनऊ का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। लखनऊ की जान है कथक और लखनऊ की शान है कथक। ऐसा कहा जाता है कि पुरातन काल से ही कथक जन्मा मंदिरों से। मंदिरों में लोगों ने कुछ कथाएं, कुछ किंवदंतियां जब कहनी शुरू की तो उस पर नर्तकियों ने नृत्य करना शुरू किया। और कथक के बारे में ये दूर दूर तक मशहूर है कि जो कथाओं पर आधारित नृत्य है वही कथक नृत्य है। हमारा लखनऊ घराना पूरे भारतवर्ष में बहुत ही मशहूर है। वैसे तो बनारस घराना भी है, ग्वालियर घराना भी है, पर हमारे लखनऊ घराने की खास बात यह है कि यहाँ के कथक में जो नजाकत है, जो खूबसूरती है, वो बहुत मुश्किल से किसी और घराने में देखने को मिलती है। तो आज खास तौर से संगीत का गढ़ कहे जाने वाले भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के कलाकार, छात्र छात्राएं आप सबके लिए लखनऊ की महक लेकर आए हैं। और जैसा कि मैंने बैक स्टेज देखा कि बहुत सारे कलाकार सुंदर परिधानों में सजे हुए, यानी कि अभी आप देखेंगे कि जो एक कथक कलाकार की पारंपरिक वेशभूषा है उसमें सजे हुए अपने पैरों में घुंघरू बांधकर आज की शाम को सजाने के लिए तैयार हैं। तो बस कुछ ही क्षणों के बाद हम कथक से शुरुआत करेंगे इस शाम की। हमारे सभी कलाकार जो कि वाद्य पे हैं यहाँ पर मंच पर एकत्रित हो गए हैं और अपने अपने वाद्य यंत्रों को बैलेंस कर रहे हैं, ट्यून कर रहे हैं। तो 1-2 मिनट का अंतराल लेंगे और उसके बाद कथक के साथ सजेगी ये खूबसूरत सी शाम खास आपके नाम। जैसा कि मैंने बताया कि कथक का जन्म मंदिरों से हुआ था और किसी एक कवि ने, किसी एक लेखक ने कथक को एक सुंदर से लय में सजाने की कोशिश की तो कुछ ये चंद पंक्तियां उपजी जो मैं आप तक पहुंचाती हूँ कथक के विषय में। कि अस्तित्व नहीं था जब मेरा, कथक अपनी जुबानी, अपनी कहानी खुद कह रहा है कि जब अस्तित्व नहीं था जब मेरा, मैं इस दुनिया में आया, जन्म हुआ मंदिरों में मेरा, कलाकारों ने मुझे सजाया, उनकी वाणी से उपजा में और घुंघरुओं तक पहुंचा में, बना पैरों की भाषा में और कलाकारों की अभिलाषा में,
मंदिर मंदिर चलकर मैं राज दरबार भी पहुंच गया। मुझे सराहा नवाबों ने, फिर पहुंचा मैं किताबों में। आप कनेक्ट कर सकते हैं कि कथल और गजल का बहुत खूबसूरत सा संगम है। राज दरबार में भी पहुंचा मैं, मुझे सराहा नवाबों ने, और फिर पहुंचा मैं किताबों में। आज आपके सामने खड़ा हूं मैं, लिए पुरातन विरासत। आज शाम यहाँ पर मैं, हाँ, कथक कहलाया मैं। तो ये कथक की एक छोटी सी परिभाषा है जो किसी लेखक ने कलमबद्ध की है। और अभी आप लखनऊ की एक सुंदर झलक, यहाँ की तहजीब की, यहाँ की जो कथक की नजाकत है, उसको आप इस मंच पर देखेंगे। बात कल शुरू हुई थी लखनऊ की, और आज भी हम लखनऊ से ही बात को शुरू करेंगे, शाम को शुरू करेंगे। बात जब कथक की होती है तो लखनऊ खुद ब खुद चलकर अपनी जुबानों तक आ जाता है। लखनऊ के बारे में ये बहुत मशहूर है कि यहाँ की जो जुबान है वो बहुत सुसंस्कृत है। और हम अगर किसी के लिए कुछ बुरा भला भी बोलते हैं तो बहुत प्यार से, बहुत खुलूस और एहतराम से बोलते हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा है, थोड़ा गौर फरमाइएगा, कि वो आबो हवा, वो सुकून, वो आबो हवा, वो सुकून कहीं और नहीं मिलता। मिलते हैं बहुत शहर मगर लखनऊ सा नहीं मिलता। तो एक बार लखनऊ के लिए दिल से पुरजोर तालियां बजा दें। और जब बात सुसंस्कृत जुबान की होती है, अच्छे शब्दों की होती है, बात मिठास की होती है आपकी बोली में, तो ही लखनऊ की बात होती है कि भुला दो कुछ गलतियां, भुला दो कुछ गलतियां उनकी, खुद भी सुधर जाऊं। भुला दो कुछ गलतियां उनकी और खुद भी सुधर जाऊं। आ जाए थोड़ा अदब मुझ में, मैं भी लखनऊ हो जाऊं। तो अदब की बात होती है तो लखनऊ का यूं नाम अपने आप आता है। आज इस शामे अवध में आपके लिए दो विशेष प्रस्तुतियां हैं। पहला के भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के जो कलाकार हैं वो कथक, खास तौर से लखनऊ घराने के कथक से आपको रूबरू कराएंगे। और उसके बाद शाम सजेगी गजलों से। गजल के क्षेत्र में बहुत ही मशहूर नाम कमाल खान, उनकी गजलों से ये शाम रंगीन होगी। और आपको बता दूं कि उनके पास एक लंबी फहरिस्त है गजलों की। जगजीत सिंह हो या मेहंदी हसन, कमाल खान जी की जुबान पर सबकी नज़में, सबकी गजलें हैं। तो आप फरमाइशों के लिए भी अपना गूगल ऑन कर सकते हैं।
तो हमारे बीच में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के कलाकार हैं, जिन्होंने कि डॉक्टर रुचि खरे जी के निर्देशन में ये प्रस्तुतियां तैयार की हैं और डांस डिपार्टमेंट से आप ताल्लुक रखते हैं। मैं बता दूं कि आप जो भी ये प्रस्तुतियां देखेंगे, इसका नृत्य निर्देशन किया है पंडित राम मोहन महाराज जी ने। पंडित राम मोहन महाराज जी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। कथक के महागुरु पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी का नाम हम सब जानते होंगे। पंडित बिरजू महाराज जी के ही भाई यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तबले पर बैठे हैं ग्रीन कुर्ते में। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सबसे पहले कहते हैं कि किसी भी काम का शुभारंभ ईश्वर की वंदना से किया जाता है। तो जो आज शाम सजी है उसकी शुरुआत हम करेंगे शिव वंदना से, आंगिकम। और हमारे कलाकार मंच पर आ चुके हैं। हेलो 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 हेलो। तो आइए प्रस्तुत है सबसे पहले शिव वंदना आंगिकम। मैं आपको बता दूं कि इस पूरी प्रस्तुति का नृत्य निर्देशन किया है पंडित राम मोहन महाराज जी ने। एक बार पुनः बताऊंगी कि आप पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के भाई हैं। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के माध्यम से आपका स्वागत करें। संगतकर्ता में सबसे पहले मैं नाम लूंगी पढ़ंत और तबले पर पंडित राम मोहन महाराज जी। आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। गायक हैं श्री आरिफ खान जी, तबले पर श्री अनिर्बान तालुकदार जी, सारंगी पर श्री राकेश मिश्र जी। और प्रस्तुतियों के लिए यहाँ पर हमारे कलाकार जो मौजूद हैं उसमें अत्रांशी, अंशिका, वल्लरी, तनिष्का, श्वेता, चान्या और शैलेंद्र। तो आइए शुरुआत करते हैं शिव वंदना आंगिकम से। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे कलाकारों का।
Tonight, you're going to witness the intricate footwork, expressive gestures, massive spins, and powerful storytelling. Now, we are going to present Teen Tal, that is 16 matras. In Teen Tal, we're going to perform some of the speciality of Lucknow Gharana, like Thaat, Amad, Upaj, Tihai. Now, firstly, we will present Thaat. Thaat refers to a standing posture, emphasizing grace, balance, and precision in movement. Then Amad, it's a Persian word that means arrival or entrance on the stage. After that, we'll present Upaj, a spontaneous improvisation in which dancer creates new footwork or body movement. Then Tihai, a pattern that is repeated 3 times and typically ends on the sum. Following the Vilambit lay, we will be presenting Drut lay, Tukra. It's a short fixed composition of rhythmic words. Then Paran, a rhythmic composition typically derived from the instruments like tabla and pakhawaj. In the end, we will be performing Ladi, that is a typical footwork of Kathak, presenting Teen Tal Vilambit lay.
这个挺的，这个这个呢，这个他这啊，这这个挺的，这个他挺的，这个这个他的这个他的这个他嘿他的这个这个挺的，这个他这个这个挺的，这个他的这个他的这个嘿他的的他挺的，这个他这个他这个他这个他这个他这个他这个他这个这个挺的，这个挺的，挺的他挺大这个大这个挺他挺大他的挺的。Hey, hey, hey, just hey, cutting the hey, cutting the hey, cutting the hey, hey, cutting the 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 Hey, take it, take it, take, take it,
आधी तकले एक दो तीन चार पाँच छह सात दो तीन चार पाँच छह सात दो तीन चार पाँच छह सात Kavit. The literal translation of the word kavit is poem. In Kathak, a rhythmic and musical composition based on a specific theme, the lyrics of which are inspired by a poem, is what we call kavit. The kavit that you are going to see us perform today is based on the Ras Leela of the divine pair of Radha and Krishna. After the kavit, we will present to you Gat. Gat is an essential component of Kathak. Gat refers to a stylized walk or gait that is used to express scenes from a daily scene or like ghungat or matki or to express a specific character. The Gat that you will see today is based on the playful dance and the graceful gait of a peacock. So firstly, we present to you Kavit.
Ta-na-na, di-di-da-ni-da-da-ni-da-no, ta-na-na-da-no, ta-na-na-da-na-di, da-no, ta-na-na-da-no, ta-di-di-na, ta-na-na-da-no, ta-na-di-di-na, ta-na-na-da-no, ta-na-di-di-na, da-da-da-da-da. Da 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 na na da 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 ni da da ni da no da na na da no da ah da na na da 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 ni da no da na na da no da na da de na na da na na da 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 ni da ma ga da ma ga ma da da ni da ma da ma ga ma da da ni da ma ga da Gagasani, Sasani, Dani, Rama, Gasagamama, Gagasani, Sasani, Dani, Rama, Gasagamama, Gagasani, Sasani, Dani, Rama, Gasagamama, Anana, Dani, 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 Anana, Dani, Anana, Dani, Anana, Dani, Anana, Dani, Anana, Ata da tunga, ta ke tinge ta, ta tinta, nista ta za ta ta tunga ta ta, ta ta tani ka ta ka diga, hey, ho, ti, ta, pan tani ka ta ka diga, hey, ho, ti, ta, pan tani ka ta ka diga, hey, ho, ti, ta, ta. Ta na na de de ta ni ta ni ta no, ta na na ta no, ta na de ta ni ta ta, do ma ke ta na ta no.
बेहद खूबसूरत मुद्राएं और उससे भी सुंदर फुटवर्क। मैं चाहूंगी कि दिल खोल के तालियां बजा दीजिए हमारे कलाकारों के लिए। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के ये कलाकार, एक एक कर मैं इनका तारुफ कराऊंगी। सबसे पहले हमारे जितने कथक के कलाकार हैं, इसमें अत्रांशी, अंशिका, वल्लरी, तनिष्का, शैलेंद्र, श्वेता और चान्या। और साज पर मैं एक बार पुनः आप सभी से उनका तारुफ कराना चाहूंगी कि कथक के महागुरु, जिनको हम सब मानते हैं, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी के भाई यहाँ पर मौजूद हैं, पंडित राम मोहन महाराज जी। मैं चाहूंगी कि दिल खोल के तालियां मंच तक पहुंचाएं, जिन्होंने पढ़ंत और तबला हम सबके समक्ष रखा। गायन पर श्री आरिफ खान जी, तबले पर श्री अनिर्बान तालुकदार जी और सारंगी पर राकेश मिश्र जी। शिव वंदना से शुरू करने के बाद आपने पारंपरिक कथक 3 ताल पे विभिन्न उसके जितने पहलू थे आपने उतारे और लास्ट में तराना के माध्यम से इस मंच को एक बहुत खूबसूरत रंग में रंगा। तो भरपूर तालियां संस्कृति विभाग के लिए भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने इस शाम को एक सुंदर रंग में रंगा और हमारे लखनऊ की तहजीब और लखनऊ की संस्कृति से हम सबको परिचित कराया। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि कथक हमारी लखनऊ की जान है, तो आज कथक के माध्यम से इस शाम अवध का शुभारंभ हुआ, इसका आगाज हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप गजलों के शौकीन हैं तो आप गूगल करना शुरू कर दीजिए कि आपको कौन सी गजल सुननी है, क्योंकि हमारे बीच में लखनऊ के मशहूर मारूफ गजल गायक कमाल खान जी अपनी सुंदर नज्मों और गजलों के साथ यहाँ कुछ ही देर में हमारे बीच में मौजूद होंगे, इससे पहले कि हमारे यहाँ कुछ मंचीय व्यवस्था हो जाए। और गजलों का भी नाम जब आता है तो लखनऊ का नाम लिया जाता है। कोई बता सकता है क्यों? कोई ऐसी मशहूर गुलकारा थी जिन्होंने गजलों को एक बहुत खूबसूरत आयाम दिया, गजलों को ऊंचाई दी, जो लखनऊ से ताल्लुक रखती थी। मैं बताती हूँ, बेगम अख्तर के नाम से हम सब वाकिफ होंगे। आपको बता दूं कि बेगम अख्तर हमारे लखनऊ की ही गुलकारा थी, गजलकार थी। बेगम अख्तर का नाम ज़हन में आते ही हम सब बहुत खूबसूरत गजलें अपने आप याद करने लगते हैं। और तब से जो गजलों का दौर शुरू हुआ, तो जगजीत सिंह और तलत अजीज जी, इन्होंने ढेरों गजलें ऐसी दी जो आज की पीढ़ियां भी बार बार सुनना और गुनगुनाना चाहती हैं। हमारे लखनऊ की तहजीब का, हमारी लखनऊ की संस्कृति का एक ये मजबूत हिस्सा है। जब लखनऊ की बात होती है तो कुछ एक ऐसी चीजें हैं, आप में से कोई ये बता सकता है कि कितने लोग लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं?
काइंडली रेज योर हैंड्स। बहुत खूब। और जो लोग लखनऊ से ताल्लुक नहीं रखते हैं उनको मैं यहाँ से बताती हूँ कि लखनऊ की कौन कौन सी चीजें मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं। लेकिन शर्त यह है कि मैं यहाँ से बोलूंगी लखनऊ की वो चीज और आपको वहां से बोलना है लखनऊ बसता है। आपके पास अगर समय है, जो बाहर से आए हैं, कल संडे है, निश्चित ही आप लखनऊ घूम कर आइए। यहाँ के जो लजीज व्यंजन हैं, डेलिकेसीज हैं, उनका आप लुत्फ उठाइए। तो आइए लखनऊ की बात करें कि लखनऊ बसता है। मेरे साथ बोले, लखनऊ बसता है। लखनऊ बसता है मीर में, मजाज में, नवाबी अंदाज में, गजलों की नजाकत में और बेगम अख्तर की आवाज में। लखनऊ, क्या बात है, थोड़ी आवाज और बुलंद होनी चाहिए। लखनऊ, लखनऊ बसता है गड़बड़ झाले की चूड़ी में। गड़बड़ झाला एक मार्केट है जहां पर ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुतायत से मिलती है। अमीनाबाद आप जाएंगे तो गड़बड़ झाला एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो लखनऊ बसता है गड़बड़ झाले की चूड़ी में और नेतराम की पूड़ी में, हजरतगंज की रौनक में, कव्वाली की ढोलक में। लखनऊ, लखनऊ बसता है अमीनाबाद की हाट में, चबूतरे में पड़ी हुई खाट में। आज भी पुराने लखनऊ में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर चबूतरे में खाट डालकर लोग सुबह सुबह पूरे मोहल्ले भर की पंचायत करते हैं। तो लखनऊ में आज भी ये परंपरा जीवित है। तो लखनऊ बसता है अमीनाबाद की हाट में, चबूतरे में पड़ी हुई खाट में, शुक्ला जी की चाट में और लखनवी ठाट बाट में। लखनऊ, आवाज थोड़ी कम हो रही, लखनऊ वाले तो थोड़ी बुलंद आवाज में बोल सकते हैं। लखनऊ, क्या बात है। लखनऊ बसता है प्रकाश की कुल्फी में, राधे लाल की लस्सी में, कलकत्ता स्वीट्स के रसगुल्लों में और जीपीओ के दही भल्लों में। लखनऊ, मैं बता दूं कि पहले जीपीओ में एक दही भल्ले की शॉप हुआ करती थी जो कि बड़े ह्यूज साइज के दही भल्ले, मीठे दही भल्ले, दही बड़े देते थे। अब कंस्ट्रक्शन की वजह से ये शॉप उठ के चाणक्य लड्डू के बगल में शिफ्ट हो गई है। तो कविता तब लिखी गई थी जब ये जीपीओ के बगल में हुआ करती थी। लखनऊ बसता है राम रहीम की दोस्ती में। ये दोस्ती मैं बताऊंगी कि गंगा जमुनी तहजीब हमारे लखनऊ की उपज है। तो लखनऊ बसता है राम रहीम की दोस्ती में, सीता गीता की मस्ती में, होली के हुल्लड़ में और शर्मा जी के चाय के कुल्हड़ में। लखनऊ, क्या बात है। लखनऊ बसता है आरती में, अजान में, लखनवी पान में, चिकन के करिश्मे में, दशहरी आम में, टुंडे कबाबी में, हर दिल नवाबी में, गोमती नगरी के घाट में और शीरे सी जुबान में। लखनऊ बसता है। लखनऊ बसता है सुनहरी सी सुबह में, चमकती सी शामों में, चाहे हो ऊंची इमारतें या हो आदमी आम में। लखनऊ, अभी तो हमने बात कर दी यहाँ की डेलिकेसीज की, यहाँ की कुजीन्स की, यहाँ की तहजीब की, लेकिन शिक्षा की बात करते हैं तो हमारा लखनऊ बहुत अग्रणी है। हमारे लखनऊ में मेडिकल कॉलेज की एक लंबी फहरिस्त है, 4 सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट से। तो लखनऊ की जब बात होती है तो लखनऊ बसता है विश्वविद्यालय की शान में, शिक्षा, संस्कृति और ज्ञान में, चिकित्सा, विद्या और मान में, संस्कृति, संस्कार, कला की आवाज में, तबले की थाप में और पहले आप में। लखनऊ, लखनऊ बसता है कथक में, ठुमरी में। अभी आपने कथक देखा। लखनऊ बसता है कथक में, ठुमरी में, सावन की कजरी में, गाने में, बजाने में, लखनवी घराने में, घुंघरुओं की थाप में, हम में और आप में। लखनऊ बसता है। तो लखनऊ की बात होती है तो मैं फिर आज उन्हीं को कोट करूंगी जो कि लखनऊ के इंसाइक्लोपीडिया कहे जाते हैं आज भी। पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण जी, उन्होंने लिखा था कि हम सब के दिल से पूछ तेरा क्या मुकाम है, हम सब के दिल से पूछ तेरा क्या मुकाम है, तेरा ही नाम दूसरा जन्नत का नाम है, ए शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है, ए शहर लखनऊ तुझे मेरा सलाम है। तो भरपूर तालियां हमारे महबूब शहर के लिए बनती हैं, जोरदार तालियां वो भी जो लखनऊ से बाहर से आए हैं। मैं ठीक हूँ।
और अभी आपका 2 से 3 मिनट और लूंगी मैं, क्योंकि अभी मंच सज रहा है साजगारों से। हमारे जितने संगत करता है वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स बैलेंस कर रहे हैं। 2 मिनट के अंतराल के बाद फिर से आपसे रूबरू होंगे। दूसरा दिखाइए। हेलो 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 लिटिल हमें थोड़ा सा पेशेंस और रखना होगा, क्योंकि जब तक सांस नहीं मजबूत होगा तब तक गायक की आवाज उसका साथ नहीं दे पाएगी। तो हमारे जितने भी साजिंदे हैं, हमारे संगत करता हैं, वो पहले अपने इंस्ट्रूमेंट्स बैलेंस करेंगे, क्योंकि संतुलन जिस तरह से हमारे जीवन में आवश्यक है, उसी तरह से वाद्य में और संगीत में हर जगह संतुलन बहुत आवश्यक है। हमारी ऑडियंस में से गजलों के शौकीन कौन कौन है? कैन यू रेज योर हैंड्स? वाह, क्या बात है! एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। गजलों को अगर 4 पंक्तियों में समेटना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे कि गजल क्या है? मैं बताती हूँ कि गजल क्या है। ये गजलों की दुनिया भी अजीब होती है। ये गजलों की दुनिया भी अजीब होती है। यहाँ आंसुओं का भी जाम बनाया जाता है। ये गजलों की दुनिया भी अजीब होती है। यहाँ आंसुओं का भी जाम बनाया जाता है। कह देते हैं अगर दर्द दास्तां, फिर भी वाह वाह ही पुकारा जाता है। गजलें सुनने के बाद कोई भी रोता नहीं रहता, चाहे दिल में कितना भी दर्द हो। और अगर दूसरी दृष्टिकोण से गजलों को देखें तो दर्द में उम्र बसर हो तो गजल होती है। दर्द में उम्र बसर हो तो गजल होती है, या तेरा साथ अगर हो तो गजल होती है। दर्द में उम्र बसर हो तो गजल होती है, या तेरा साथ अगर हो तो गजल होती है। हिंदी उर्दू में कहो या किसी और जुबा में, हिंदी उर्दू में कहो या किसी और जुबा में, बात का दिल पे असर हो तो गजल होती है। तो बस उसी दिल पे असर करने के लिए हमारे बीच में संस्कृति विभाग ये लेकर आया है एक सुंदर सा पैगाम, जिसमें सजी हैं बहुत ढेर सारी गजलें। और कमाल खान का नाम तो हम सब ने सुना है, तो आज उनकी पुरकशिश और रेशमी आवाज से हम सब लुत्फानंदोज होंगे कुछ ही देर में।
और मेरे ख्याल से ये शाम सज चुकी है। बस गायक कलाकार की आवश्यकता है। ये हमारे लखनऊ के जाने माने संगीतकर्ता हैं। ये बहुत कम में संतुष्ट नहीं होते, जब तक परफेक्शन नहीं होगा ये शुरू नहीं करेंगे। इससे पहले कि ये शाम सजे, आइए मैं तारुफ करा देती हूँ अपने संगीतकर्ताओं से। तबले पर आप देख सकते हैं राजीव जी हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं राजीव जी के लिए। सिंथेसाइजर पर श्री संजय सक्सेना जी हैं। गिटार पर हैं उंगलियों के जादूगर गोपाल गोस्वामी जी। कहते हैं कि गजलें बहुत सुकून से सुनने वाली चीजें हैं, तो सुकून का माहौल काफी पहले से बन गया है। थोड़ी तालियां बजा दीजिए आप, ताकि माहौल बना रहे यूं ही। और आइए जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करें कमाल खान जी का। भरपूर तालियां मंच तक के लिए। और साथ ही साथ उनके साथ सुर में सुर मिलाएंगी काजल। मैं चाहूंगी कि एक बार दमदार तालियां हो जाएं हमारे इस खूबसूरत मंच के लिए, खास तौर से आपके लिए, कि घटा की आंख से काजल चुरा के लाए हैं। घटा की आंख से काजल चुरा के लाए हैं, गगन की छोर से बादल चुरा के लाए हैं, चुरा के लाए हैं समंदर से हसरतों का नशा। आज हम मौसीकी की महफिल आपके लिए सजा के लाए हैं। तो ये मौसीकी की महफिल सज चुकी है। कमाल खान जी हमारे बीच में है। इस शेर के साथ मैं छोड़ूंगी कि फिर नजर में फूल महके, दिल में फिर शम्मा जली, फिर तसव्वुर ने लिया तेरी बज़्म में जाने का नाम। आइए शुरुआत करते हैं गजलों से। हेलो 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 चेक चेक। ला 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 ला। छिड़ी बात बोलो, फिर छिड़ी
पत फूलों रात है परत फूलों खिचड़ी रात आपका साथ दूं आपका साथ फूलों का आपकी बात पर खिचड़ी रात नजरें मिलती है जब मिलते हैं नजरें मिलती है जब मिल रही है हयात फूलों की खिचड़ी रात फूल खिलते रहे थे दुनिया में फूल खिलते रहे दुनिया में रोज निकले फूलों की खिलखिली रात वक्त फूलों की रात है यार फराक फूलों की खिलखिली रात थैंक यू वेरी मच। एक और खूबसूरत सी गजल आपकी नाम। रे 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 अरे ना किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है कहाँ हो तुम के ये करार आज भी हो किसी नजर को तेरा इंतजार भी है वो आदि जाए कि हम मिले जहाँ वो आदिया जाए हम मिले जहाँ मेरी वफा वहीं पर मजार हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है
यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, यकीन नहीं है मगर आज भी ये लगता है, मेरी तलाश में शायद बहार है, हो किसी नजर को तेरा इंतजार वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वो प्यार जिसके लिए हमने छोड़ दी दुनिया, वफा की राह घायल हो किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है। थैंक यू, शुक्रिया। एक और खूबसूरत सी गजल आपके लिए, और कुछ पसंद हो, आपकी कुछ फरमाइश हो, बताइएगा मुझे। हम्म चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आश का जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। खींच लेना मेरा पर्दे को ना दफातन, खींच लेना वो मेरा पर्दे का दफातन, और दुपट्टे से तेरा वो छुपाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, दोपहर की धूप में मेरे बुलाने के लिए, तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है,
हमको अब आशिकी का जमाना याद चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। बेरुखी के साथ सुन दर्द दिल की दास्तां, बेरुखी के साथ सुनना दर्द दिल की दास्तां हो, कलाई में तेरा कंगन घुमाना याद है। वो कलाई में तेरा कंगन घुमाना याद है। हमको अब तक आशिकी का ज़माना याद, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। आ, 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 बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। एक और खूबसूरत गजल आपके लिए, और किसी गजल को सुनने की आपकी इच्छा हो, ख्वाहिश हो तो जरूर बताइएगा। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मेरी रोशन फिजाएं हो गई। उनसे नजरें क्या मेरी रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। हम लबों से कह न पाए उनसे हारे दिल कभी। हम लबों से कह न पाए उनसे हारे दिल कभी।
और वो समझे नहीं खामोशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। एक और खूबसूरत सी गजल आपके लिए, एक फरमाइश भी है, वो मैं इसके बाद पेश करूंगा। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। सुबह मिली है मगर हम सुबह नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार हो। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहदी हसन साहब की गजल की फरमाइश आपके लिए पेश कर रहा हूँ। सांस्कृतिक विभाग का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके बीच इतनी खूबसूरत ऑडियंस के बीच मुझे मौका दिया कुछ अपना फन दिखाने का। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए फिर से
मुझे छोड़ के जाने के लिए ही सही। माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना मोहब्बत छुपाना है, चुपके से किसी रोज जताने के लिए आया सही। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस बताएंगे जुदाई का सबब हम। तू मुझसे खपाए तो समाने लिए आ रंजिशी सही में। जैसे 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 तुम्हें आते न आने के बहाने, जैसे आते हैं न आने के बहाने, ऐसे किसी रोज न जाने लिया रंजिशी सही। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। एक और खूबसूरत सी गजल आपकी फरमाइश में। चलो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आंखों में नमी हंसे लबों पर, आंखों में नमी हंसे लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम जिसको छुपा रहे। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो,
बन जाए जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला, जिन जख्मों को वक्त भर चला, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं, मेरे साथ काजल जी बैठी हुई, मैं चाह रहा हूँ कि एक दो चीजें आपको सुनाए, वो कुछ अपनी। उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी, हर शय जहाँ हसीन थी, हम तुम थे अजनबी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। कर चले थे हम जिन्हें जन्नत के ख्वाब थे, लेकर चले थे हम जिन्हें जन्नत के ख्वाब थे, फूलों के ख्वाब थे वो, मोहब्बत के ख्वाब थे, लेकिन कहाँ है इनमें वो पहले से दिलकशी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी। रहते थे हम हसीन ख्यालों की भीड़ में, रहते थे हम हसीन ख्यालों की भीड़ में, उलझे हुए हैं आज सवालों की भीड़ में, आने लगी है याद वो फुर्सत की हर घड़ी, उस मोड़ से शुरू करें फिर ये जिंदगी।
शायद ये वक्त हमसे कोई ख्याल चल गया, शायद ये वक्त हमसे कोई ख्याल चल गया, रिश्ता वफा का नहीं रंगों में ढल गया, शुभों की चांदनी सी थी बेहतर वो धूप है, उस मोड़ से शुरू करें ये जिंदगी, रिश्ते जहाँ हसीन थी हम तुम थे अजनबी, उस मोड़ से शुरू करें ये जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी। Thank you so much. सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं, सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं, मांगा खुदा सीधा Allah खुदा से सिवा कुछ भी नहीं, सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं। देखा तुझे सोचा तुझे चाहा तुझे पूजा तुझे, देखा तुझे सोचा तुझे चाहा तुझे पूजा तुझे, मेरी कथा मेरी वफा तेरी कथा कुछ भी नहीं। अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं, शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक, एक शाम की दहलीज पर बैठे रहे वो देर तक, आंखों से की बातें बहुत मुझसे कहा कुछ भी नहीं, मांगा खुदा से रात दिन तेरे सिवा कुछ भी नहीं, सोचा नहीं अच्छा बुरा देखा सुना कुछ भी नहीं, देखा सुना
कुछ भी नहीं देखा सपना, कुछ भी Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। एक बहुत ही खूबसूरत सी गजल की फरमाइश है। हेलो 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 हेलो। ला 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 ला। होठों से छोड़ो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार के कोई तो देखे केवल मन, नहीं रीत चला कर तुम मेरी हित अमर कर दो। होठों से छोड़ो तुम मेरा गीत अमर कर दो। आकाश अपन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आजा जीवन में, सांसें कर अपनी संगीत अमर कर दो। होठों से छोड़ो तो तुम मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए तुझसे मैं हर दम ही, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत कर दो। होठों से छोड़ो तुम मेरा गीत अमर कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कुछ फरमाइशें आपकी तरफ से मेरे पास आई हैं। एक भजन की भी फरमाइश है, वो भी मैं जरूर गाऊंगा। फिलहाल एक दो गजलें, उसके बाद एक भजन भी आपको जरूर सुनाऊंगा। जगजीत सिंह साहब की बहुत ही खूबसूरत सी गजल की फरमाइश है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा जगजीत सिंह को गा रहा हूँ, और किसी भी ख्वाहिश हो गजल को सुनने की या गीत को सुनने की, तो मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी गजल मैं आप तक वापस जरूर पहुंचाऊं, और एक खूबसूरत सी गजल आपके लिए।
ठीक है तुम नहीं, गुम नहीं, शराब नहीं, तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं, तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं। काहे काहे इसे पढ़ा कीजिए, काहे काहे इसे पढ़ा कीजिए, दिल से बेहतर कोई किताब नहीं, दिल से बेहतर कोई किताब नहीं। वो करो तो गिनते हैं, वो करो गिनते हैं, जुल्म का जिंदा के कुछ हिसाब नहीं, तुम नहीं, गुम नहीं, शराब नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। एक फरमाइश पंकज उदास साहब की गजल की। मोहे आई न जग से नाच, मोहे आई न जग से नाच, मैं इतना जोर से नाचे यार कि घुंघरू टूट गए, मोहे आई न जग से नाच, मैं इतना जोर से नाचे यार कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू, कि घुंघरू टूट गए। धरती पे ना मेरे पैर लग, पिया मुझे सब गैर लगे, मुझे अंग मिले अरमान, मुझे पंख मिले परवानों के, जब मिला पिया का, जब मिला पिया का सा मेरा पाँव, के घुंघरू टूट गए, के घुंघरू टूट गए, के
घुंघरू टूट गए। मैं बसी थी जिनके सपनों वो गिने कम है अपनों में। कहती है मैं अंगड़ाई, मैं पिया की नींद चुरा लाई। मैं बन के गई थी चोर, मैं बन के गई थी चोर के मेरी पाल थी कमजोर। के घुंघरू टूट गए, 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 के घुंघरू टूट गए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते एक दो चीजें और आपके लिए पेश करूंगा, उसके बाद आपसे इजाजत चाहूंगा। आइए। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। मगर मुझको लौट हाथ बचपन कसा, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी। वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की धुरियों में सदियों भुलाए नहीं भूल सकता है कोई। छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़ियों की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर कर संभलना, वो पीतल के छन्नों के प्यारे से तो वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी। कागज की कश्ती
वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। थैंक यू वेरी मच। एक और खूबसूरत सी गजल आपके लिए। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, तबा तबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उसे एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर तू अपने दिल की जबान किन के बता, तू अपने दिल की जबान धड़कनों किन के बता, मेरी तरह तेरा दिल बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। झुकी झुकी सी नजर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो भजन की भी फरमाइश पेश कर रहा हूँ, आपके समक्ष रख रहा हूँ। जब राम नाम गुन गाएगा, जब राम नाम गुन गाएगा, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। जब राम नाम गुन गाएगा, तेरा जन्म सफल हो जाएगा।
भजले राम 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 सीताराम, भजले राम 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 राधे श्याम। राम किरण है राम उजाला, राम ही सब कुछ देने वाला। राम किरण है राम उजाला, राम ही सब कुछ दे। राम नाम से प्रीत बढ़ा ले, काम ये नाम ही आएगा, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। भजले राम 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 सीताराम, भजले राम 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 राधे श्याम। राम नाम को मन में बसा ले, जीवन नैया ये भी संभाले। राम नाम को बसा ले, जीवन नैया ये भी संभाले। सौंप तो खुद को उसके हवाले, वही पाता है, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। भजले राम 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 सीताराम, भजले राम राम राधे श्याम। मोह जाल में क्यों भरमाया, ये है पल दो पल की छाया। मोह जाल में क्यों भरमाया, ये है पल दो पल की छाया। अंत समय कोई काम न आए, तब पाछे पछताएगा, तेरा जन्म सफल हो जाएगा। भजले राम 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 राम, भजले राम 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 राधे श्याम। सीताराम राधे श्याम। एक और भजन आपके लिए। जय गिरधरे सुंदर श्याम हरि, नटवर नागर करुणा के धाम हरे। घनश्याम हरि, घनश्याम हरि, घनश्याम हरि, घनश्याम हरि। जय गिरधरे सुंदर श्याम हरि, नटवर नागर करुणा के धाम हरे। घनश्याम हरि, घनश्याम हरि, घनश्याम हरि, घनश्याम हरि। गज को जल से बचाया तुमने, बेड़ा पार किया। गज को जल से बचाया तुमने, बेड़ा पार किया था।
विष पीते पीते मीरा तेरा नाम लिया था, बस तुम ही आए काम हरी, बस तुम ही आए काम हरी, घनश्याम 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 हरी। जय गिरधारी सुंदर श्याम हरी। और सभा में दुष्ट दुशासन खींच रहा सारी, आकुल नैनों से देख रही थी उसको द्रुपद दुलारी। और तुम ही आए काम हरी, बस तुम ही आए काम हरी, घनश्याम हरी, घनश्याम हरी, घनश्याम हरी, घनश्याम हरी, घनश्याम हरी, घनश्याम, घनश्याम हरी, घनश्याम हरी। जय गिरधारी, जय गिरधारी, जय गिरधारी सुंदर श्याम हरी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सांस्कृतिक विभाग का जो जिन्होंने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल खान जी। आपने, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमारे लखनऊ की जो जमीन है, गंगा जमुनी तहजीब इसकी खासियत है। तो कमाल खान साहब की जुबान से जय श्री राम हरि और राधे कृष्ण हमने सुना, तो मैं अनुरोध करूंगी कि एक बार जोरदार तालियां कमाल खान जी के लिए जरूर बजा दी जाएं। और इनके लिए इतना इतना कहना चाहूंगी कि सभी से जुदा जिसका अंदाज है, जमी ता फलक जिसकी परवाज है, और वही जिस पर संगीत जगत को नाज है, कमाल खान जी ही वो खूबसूरत आवाज है। तो और जिस खूबसूरती से, संजीदगी से ये गजलों को हम तक पहुंचाते हैं, बस मुझे दो लाइनें, दो अल्फाज ये याद आ रहे हैं कि हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। तो उनकी आवाज जहन में और दिल तक हमारे उतर जाती है। हम आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पूरे सब्र के साथ इस जो गजल की शाम सजी थी उसका आनंद लिया, और यहाँ पर बैठकर अपने सब्र से और अपनी पुरजोर तालियों से हमारे कलाकारों का इस्तकबाल किया। मैं तबले पर राजीव जी थे, उनका धन्यवाद करती हूँ। आपकी तालियां, क्योंकि उन्होंने जो कलाकारी दिखाई है वो गजलों के लिए बहुत जरूरी है और कम ही कलाकारों में ऐसी कलाकारी दिखाई देती है। गिटार पर गोपाल गोस्वामी जी, एक बार तालियां चाहूंगी। सिंथेसाइजर पर संजय सक्सेना जी, और कमाल खान जी के साथ अपने सुर में सुर मिलाने वाली काजल जी। आप सबके लिए बस इतना ही कहूंगी चलते चलते कि कभी दिन की धूप में झूम के, कभी शब के फूल को चूम के, यूं ही साथ साथ चले सदा, कभी खत्म अपना सफर ना हो, और हम हर हाल में मुस्कुराते रहेंगे, तुम्हारी मोहब्बत अगर साथ होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शब खैर। संस्कृति विभाग की ओर से हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच।
Thank you so much. The delicacies of Lucknow is